welcome to the class of medicine. It's a Hinglish version, okay, of medicine class. मुझे पता है medicine जो है. So a brief introduction of my own self. Myself, Dr. Parv, and I am a double gold medalist. And my passion, my hobby is to make all these subjects of medicine, of medical easy for all of you guys. And okay, so definitely I'm there for you, bache. Coming on to this beautiful introduction, this small introduction, that why us? Because see, my work is to make everything concise for you. Okay, make everything concise for you. Honestly speaking, during my time when I was preparing for NEET paper, I have seen people making a rapid revision even longer than my main note. Okay, that is like of no use. Okay, so what we'll do, we will do a concise notes. We'll make a concise notes enough that you can read, and whatever you can read, you can retain them. Why? Because my class is going to be full of mnemonics. It is going to be full of tricks. Okay, full of shortcut methods. ठीक है? Because प्लीज अंडरस्टैंड, इस चीज को याद रखो कि ये जो आपका एग्जाम है, ये एग्जाम सिर्फ नॉलेज का नहीं है, ये एग्जाम आपका नॉलेज प्लस टेस्ट का, प्लस टेस्टिंग और टाइम भी है. ठीक है? सो इट्स अ एग्जाम जहां पर नॉलेज और आपके टाइम भी टेस्टिंग होता है. सो विल गिव सम शॉर्टकट्स एज वेल. ओके, और मेरा जो ये सेशन होने वाला है बच्चे, दिस इज नॉट अ PYQ बेस्ड सेशन, बट इट इज अ PYT बेस्ड. ओके, PYT बेस्ड सेशन. ओके, फिर क्वेश्चंस ये पूछते हैं बच्चे कि सर इज इट इनफ? क्या ये इनफ है? हाँ जी, बिल्कुल. ये क्वेश्चन का आंसर ये है. देखो, वो तो आपको आना ही चाहिए जो सबको आता है. यू हैव टू नो what everyone knows. I mean, you can't be wrong at this. What everyone knows, you have to know, because this is the way to clear some exam. Okay, welcome to medicine mafia. Medicine mafia for FMGE aspirants. Here I'm standing for you. तो ये सारी जो भी चीजें आपको पीछे दिख रही हैं, all these things are the problems which are going to come to you. और स्क्रीन के उस साइड आप बैठे हो और ये बीच में मैं खड़ा हूं. ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स को मेरा काम है आपसे दूर रखने का. ठीक है, तो मैं चाहता हूं आप सब लोग एक बार बड़े ही प्यार से एक दिल, एक थम्स अप, एक पौधा, एक टॉफी, कुछ भी कमेंट सेक्शन में डाल दो. ठीक है, ताकि मुझे पता लग जाए कि जीतने में आप लोग मेरे साथ हो. We both are together and we both are fighting and we both will win. Okay, so coming on to the schedule. So I have kept 2 days for you. So in first day, that is today, we will discuss about the GIT. We will discuss about CVS. We will discuss about nephrology and rheumatology. And on day 2, we will have CNS discussion, endocrine, hematology, and some questions to be practiced. Day 3 is like optional. Although we have not planned anything on day 3, but if at all required, we'll plan another day. That is day 3. All right, bache. So let's start with the cardiovascular system. And so first is tachyarrhythmia. तो tachyarrhythmia में सबसे पहली चीज आपको देखनी है बच्चे, atrial fibrillation. ठीक है, atrial fibrillation. So what is important in atrial fibrillation? You can see that in atrial fibrillation we don't have P waves. Okay, so can you see here? Can you see here? We don't have P waves. Okay, so atrial fibrillation, first thing is absent P wave. ठीक है, तो P wave जो होगा बच्चे, that is going to be absent P waves. Okay, next important point is that it is going to have irregular rhythm also. Okay, it is going to have what? Irregular rhythm also. Okay, इसी को बोलते हैं atrial fibrillation. Atrial fibrillation. So atrial fibrillation has these words. Can you see? ये double L है. ये double L है. डबल एल के आगे यहाँ क्या है? आई. सो आई इज इरेगुलर रिदम. एंड आगे क्या है? ए. सो व्हाट इज ए? ए फॉर योर एब्सेंट पी वेव्स. ओके, एब्सेंट पी वेव्स एंड इरेगुलर rhythm. Okay, absent P waves and irregular rhythm is going to be there. Of course, narrow QRS complexes and wide QRS we'll discuss ahead, but अभी के लिए बस आपको इतना ही याद करना है. चलो बच्चे, अब मेरे को जल्दी से बताओ, what is going to be the treatment if it is a unstable atrial fibrillation? What is going to be the treatment if it is a unstable atrial fibrillation?
cardioversion. We will do cardioversion. Okay बच्चे, I am writing in a थोड़ा सा large font. So what will you do? You will do cardioversion, and in cardioversion 200 joules of synchronized shock you will give. Okay, so synchronized cardioversion. Okay, synchronized cardioversion is something which you are going to do in the unstable cases. And if it is stable, then what will you do? Hanji, if it is stable, then what will you do? Stable may we go for ibutylide. That's an antiarrhythmic agent, ibutylide. Okay, ibutylide. And also we give esmolol, and we also give what? Anticoagulant, because in cases of atrial fibrillation there are high chances ki there are high chances of formation of what? There are high chances of formation of thrombus. Okay, atrial fibrillation के अंदर में आपको याद रखना है I and B letters are coming. So I and B is coming. So fibrillation has got FIB relation. Okay, fibrillation something like that. So IB से हमें क्या याद रखना है? I से होता है बेटा ibutylide, ibutylide. ओके, और IB से आप याद कर सकते हो ibutylide, और B से क्या होता है? बीटा ब्लॉकर. ओके, B से क्या होता है? बीटा ब्लॉकर. सो दिस इज द वे यू कैन रिमेम्बर. ठीक है, और हमारी पूरी क्लास इसी तरीके से निमोनिक से जो है वो फिल्ड रहेगी, और आपको जहां पर भी निमोनिक पसंद आएगा आप लिखेंगे निमोनिक मेडिसिन माफिया, MMM. ठीक है, जहां पे भी निमोनिक पसंद आए लिख देना MMM. ठीक है, निमोनिक मेडिसिन माफिया. ठीक है, चलो ये था बेटा अबाउट द एट्रियल फिब्रिलेशन. कमिंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मल्टी एट्रियल फ्लटर. ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़ना है हम लोगों ने? एट्रियल फ्लटर के बारे में पढ़ना है. तो एट्रियल फ्लटर में ध्यान से बच्चे देखो, तो ये आपको इस तरीके की अपीयरेंस दिखती है. हाँ जी, दिख रही है ये? इसको क्या बोलते हैं? दिस अपीयरेंस इज कॉल्ड व्हाट? चलो ये तो इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताओ. अपीयरेंस, कौन सी अपीयरेंस दिखती है बताओ मुझे जरा. दिस इज कॉल्ड एज sawtooth appearance. ओके, sawtooth appearance. चलो अगेन यहाँ पर भी सेम चीज है बेटा. अगर वो अनस्टेबल होगा तो क्या दोगे आप लोग? कार्डियोवर्जन. तो जो सेम चीज है उसको हम लोग कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ताकि आपको भी याद रहेगा. सो इफ इट इज एन अनस्टेबल केस देन व्हाट यू विल डू? सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन. बट चेंज क्या है बेटा? 200 जूल का नहीं, थोड़ा कम जूल का देते हैं, जस्ट लाइक 50 जूल्स. ओके, सो 50 जूल्स का हम लोग जो है बच्चे इसमें आप लोग क्या देंगे? कार्डियोवर्जन देंगे. ठीक है, वही अगर स्टेबल होगा तो क्या करोगे? स्टेबल होगा तो भी आप सेम आइब्यूटालाइड, एस्मोलॉल, यही जो है वो आप लोग दे दोगे. ठीक है, बस ये ऊपर में और इसमें इतना ही फर्क है बच्चे, इससे ज्यादा कोई भी फर्क नहीं है. एंड ऑफ कोर्स एंटीकोएगुलेंट इज गिवन यहाँ पर भी. सो आई जस्ट राइट एंटीकोएगुलेंट इज आल्सो गिवन. ठीक है, चलो यहाँ तक सारा याद हो गया. फिब्रिलेशन और फ्लटर वाला जो है बच्चे वो सेम हो जाएगा. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज मल्टीफोकल एट्रियल टेकीकार्डिया. मल्टीफोकल एट्रियल टेकीकार्डिया. सो मल्टीफोकल एट्रियल टेकीकार्डिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बस इतना याद रखो कि यहाँ पर आपको क्या दिखेगा? इरेगुलर रिदम, देन इरेगुलर रिदम, देन इरेगुलर रिदम. ठीक है, सो बहुत सारी इरेगुलर आपको जो है ना वो रिदम्स यहाँ पे दिखती रहेंगी. ठीक है, सो इट इज अ मल्टीफोकल काइंड ऑफ एट्रियल टेकीकार्डिया. देखो एज सच तुम्हें ईसीजी पहचानने के लिए कोई नहीं बोलेगा, बस इतना याद रख लेना मल्टीफोकल एट्रियल टेकीकार्डिया यदि तुम्हें दिख गया तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? मैट. मल्टीफोकल एट्रियल टेकीकार्डिया दिख गया, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? मैट होता है. और प्लीज याद रखो एक, ठीक है, मैट होता है, और आपको याद रखना है एक मैट है जो कि एक्चुअल वी शेप में बना हुआ है. ठीक है, सो इट्स अ मैट विच इज इन वी शेप. व्हाई? बिकॉज द ड्रग ऑफ चॉइस इज गोइंग टू बी वेरापामिल. ठीक है, द ड्रग ऑफ चॉइस इज गोइंग टू बी व्हाट? वेरापामिल. So this is the only thing which they can ask you, what is the drug of choice? So drug of choice is nothing but verapamil. ठीक है, so इतना आपको चीज जो है वो याद रखनी है. That is going to be verapamil, right? Coming on to the ventricular rhythms now. So first important thing is your supraventricular tachycardia. Okay, supraventricular tachycardia. आ जाओ पहले यहाँ पढ़ते हैं. This is supraventricular tachycardia. कभी इस किसी बच्चे ने लिखा था सर वहां पर आपको क्या दिखने वाला है? Yes, supraventricular tachycardia में क्या दिखने वाला? ऊपर ही किसी ने लिखा था नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस. ओके, नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, तो ध्यान से देखो बच्चे, ये वाले क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो बहुत ज्यादा नैरो है. सो नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस, देन व्हाट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज ओके. यस, सो एब्सेंट पी वेव्स. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, एब्सेंट पी वेव्स इज गोइंग टू बी देयर. वेरी गुड. यस, पी वेव्स आर गोइंग टू बी एब्सेंट. QRS complexes are going to be
narrow, ठीक है. So what you will do in this? Yes, what you will do? You will give a carotid sinus massage, ठीक है. So first treatment is going to be what? That's going to be a carotid sinus massage. Carotid sinus massage, ठीक है. Carotid sinus massage करते हैं. Then what you will give? IV adenosine, okay. IV adenosine, IV adenosine. And of course, if it is unstable, then what you will do? Yes, supposedly if it is unstable, then what you will do? Unstable cases mein you have to remember we will give cardioversion, okay. Cardioversion. बेटा अब देखो इसको कैसे याद रखना. सुप्रा, सुप्रा, सुप्रा मतलब क्या? अपने घर में सबसे ज्यादा सुपीरियर कोई किसको समझता है? एडल्ट्स को, है ना, बूढ़े लोगों को, ठीक है, बूढ़े लोगों को. अब बूढ़े लोगों की सोच कैसी होती है? नैरो माइंडेड लोग होते हैं. हाँ जी, नैरो माइंडेड होते हैं कि नहीं होते? हाँ जी, नैरो माइंडेड होते हैं. और वो क्या होते हैं? एडल्ट्स होते हैं. सबसे बड़े कौन होते हैं? एडल्ट्स होते हैं, ठीक है. और ऐसे इन सबको क्या चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है भाई? हमेशा चाहते हैं कि हमें मसाज मिलती रहे, ठीक है. हमेशा कोई ना कोई आए और मसाज वसाज जो है मस्त करता रहे, ठीक है. समझ में आ गया? तो ये चीजें जो है आपको याद रखनी है, ठीक है, ये सारी चीजें. अब बूढ़े बुजुर्ग लोगों में पैशन जो है वो थोड़ा सा कम ही होता है, ठीक है. तो ये सारी चीजों का क्या मतलब है? नैरो माइंडेड मीन्स दे हैव गॉट नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस. नैरो माइंडेड मीन्स नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस. क्या होते हैं? एडल्ट्स होते हैं. यानी एडिनोसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस. क्या करना पड़ेगा? मसाज करनी पड़ेगी. तो मसाज करनी पड़ेगी मतलब कैरोटिड साइनस मसाज. और क्या कम होता है बेटा? पैशन थोड़ा सा कम होता है. तो पैशन कम होता है मतलब एब्सेंट पी वेव. दिस इज सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया. सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया. चलो बच्चे, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट दी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ठीक है. वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन. देखो ये दोनों में, चाहे वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, चाहे वो वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया है, दोनों में ही एक चीज जो है वो बहुत कॉमन है. और वो बहुत कॉमन चीज क्या है? वो चीज है कि इट इज अ वाइड क्यूआरएस, ठीक है. तो नैरो तो मैंने बता दिया, सुप्रा वेंट्रिकुलर होगा. जो सुपरे वाला नहीं है वो क्या होगा? वाइड क्यूआरएस होगा बेटा, ठीक है. क्या होगा बच्चे? वाइड क्यूआरएस होगा. वाइड क्यूआरएस होगा, ठीक है. हमें किस पे फोकस करना है? काम की चीजों पे फोकस करना है. इसीलिए बस देख लो कि अगर ऐसा वाइड हो, ठीक है, और बहुत ज्यादा ये टॉल दिखे, जैसे ये इसमें दिख रहा है, सो ये वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है. सिर्फ वाइड वाइड हो तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, ठीक है. बस इतना याद रखना बच्चे, कौन सा क्या है, बस इतना आप लोग याद रखोगे तो उससे भी जो है आपका काम चल जाएगा. चलो बताओ मेरे को, अब अनस्टेबल होगा अगर तो क्या करोगे दोनों केसेस में? यस, इफ इट इज अनस्टेबल देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू? क्विकली टेल मी. अनस्टेबल होगा तो क्या करोगे? अनस्टेबल होगा तो क्या करोगे? जल्दी से बताओ. कार्डियोवर्जन. बेटा यहाँ हम करते हैं डिफिब्रिलेशन, ठीक है. यहाँ हम क्या करते हैं बच्चे? डिफिब्रिलेशन, ओके. डिफिब्रिलेशन करते हैं बेटा, ठीक है. स्टेबल में क्या करते हैं? डिफिब्रिलेशन करते हैं बच्चे. यहाँ पे स्टेबल में क्या करते हैं? एमियोडेरॉन. एमियोडेरॉन, ठीक है. एमियोडेरॉन. एमियोडेरॉन कैसे ऐसे लगता है ना कि कोई बोल रहा होगा मैं हूं डॉन. हाँ, सो एमियोडेरॉन. एंड ड्रग ऑफ चॉइस इज, yes, what is the drug of choice in this case? It is lignocaine, okay. It is lignocaine, okay. It is going to be what? It is going to be lignocaine, okay. Lignocaine. So just remember very important thing, ventricular कोई भी रहेगा, ventricular fibrillation रहने दो, ventricular tachycardia रहने दो, दोनों ही केसेस में आपको एक चीज याद रखनी है कि if it is unstable we will give defibrillation, okay. We have got wide QRS complexes, we have got what? We have got amiodarone and then you have got lignocaine, ठीक है. तो देखो अब मैं कैसे याद करवाता हूँ. वेंट्रिकुलर, जहां पर भी तुमने वेंट्रिकल देख लिया ना, तो यू शुड रिमेंबर शूट आउट एट वडाला, ठीक है. शूट आउट एट वडाला. ये लो, ठीक है, ये निमोनिक बन गया. डब्ल्यू से क्या है? वाइड है, ठीक है. ए से क्या है? ए से एमियोडरॉन है. डी से डिफिब्रिलेशन है. ए से फिर से एमियोडरॉन. ए एल से लिग्नोकेन, ठीक है. ए से फिर से एमियोडरॉन, ठीक है. तो ये आपको याद रखना है, शूट आउट एट वडाला, ठीक है. शूट आउट एट वडाला, है ना, मूवी थी ना, शूट आउट एट वडाला, ठीक है. कमिंग ऑन टू हार्ट ब्लॉक्स, ठीक है. देखो हार्ट ब्लॉक्स में एक ये स्टोरी है, ये राइम है, मुझे बहुत अच्छी कहीं से मिली थी. वन ऑफ माय स्टूडेंट्स एक्चुअली दे सेंट मी. तो नॉर्मल साइनस रिदम क्या होती है बेटा? नॉर्मल साइनस रिदम होती है द पी क्यू आर एस आर डेटिंग,
and never leave each other's side. तो नॉर्मल साइनस रिदम में पी और क्यूआरएस जो है ना बच्चे, वो शादी कर रहे होते हैं और एक दूसरे को कभी भी नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं छोड़ते। ठीक है, जैसे मैं राज को, प्रेम किशोर को, अब्दुल को, फैजल को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो पी है ना, वो क्यूआरएस को कभी नहीं छोड़ते इफ इट इज अ नॉर्मल साइनस रिदम। ठीक है, नॉर्मल साइनस रिदम होती है तो हम उसको कभी नहीं छोड़ते इफ इट इज अ, समझ में आ गया आप लोगों को, नॉर्मल साइनस रिदम। बट वही फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक में क्या होता है, पी और क्यूआरएस की लड़ाई हो जाती है। पी एंड क्यूआरएस गॉट इनटू सम एग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट, एंड दे आर एट अ डिस्टेंस नाउ। ठीक है, दे आर एट अ डिस्टेंस नाउ। ठीक है, सो अब आपको यहाँ पे क्या याद रखना है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में, दैट इफ द आर इज फार फ्रॉम पी, then you have got a first degree. If the R is far from P, you have first degree. R is far from P, degree, first degree. Okay, right? तो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया P और QRS में, और ये दूर हो गए। ठीक है, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, P और QRS, अब एक बार लड़ाई हुई थी, वो बात दिमाग से जा नहीं रही, तो P और QRS की क्या हो गई है, एक साइकिल हो गई है, ब्रेकिंग अप एंड गेटिंग बैक टुगेदर। ब्रेकिंग अप एंड गेटिंग बैक टुगेदर होता है ना ऐसे, कि एक बार लड़ाई हो गई, अब क्या होगा, वैसे तो दूर दूर ही रहेंगे, पी एंड क्यू दूर, पी एंड क्यू दूर, पी एंड क्यू दूर, और उसके बाद में पता लगेगा क्यूआरएस आया ही नहीं। ओके, सो दे आर, अब आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, कि वी हैव गॉट अ लॉन्ग 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 एंड देन ड्रॉप, लॉन्ग 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 एंड देन ड्रॉप, दिस इज कॉल्ड एज वेंके बैक। Okay, Venke back. Okay, so just remember Venke back with the mnemonic, that Venke back मतलब QRS went back. Okay, QRS went back मतलब long distance long distance long distance, और फिर एक बार QS आया ही नहीं, और एक बार फिर क्या हुआ, QRS आया ही नहीं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चे, इसको मॉबिट्स टाइप 1 भी बोलते हैं। ठीक है, इसको मॉबिट्स टाइप 1 भी बोलते हैं, और 1 से यू कैन रिमेंबर ONE1 WEN also something similar. So Venke back, when is 1. And what is Mobitz type 2? Mobitz type 2 means, see, now type and the P and the QRS work it out, but P is upset at QRS and decides to go out. Okay, so if some P's don't get through, then you have Mobitz type 2. Okay, if some P's don't get through, then you have Mobitz type 2. So अब P जो है वो, P ने बोला अब मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, P बोलता है अब मैं नहीं आऊंगा। So if some P's don't get through, then you have Mobitz type 2. Okay, then you have what, then you have got Mobitz type 2. Okay, then you have got what, Mobitz type 2. Okay, so see here, this is each P is followed by QRS, P followed by QRS, P followed by QRS, but see the distance is going to be same. Okay, distance is going to be same. Here it was longer, then it was even more longer, then it was even more longer. Okay, बट यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो सेम होने वाला है। पी के ड्रॉप आउट्स रहते हैं। ठीक है, पी के जो है वो ड्रॉप आउट्स रहते हैं। ओके, सो जस्ट लाइक दैट। सो सी, लॉन्गर लॉन्गर, यहाँ पर भी लॉन्गर हो रहा था, पी आया बट क्यूआरएस नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ आपको बस इतनी चीज याद रखनी है, एक चीज याद रखनी है कि यहाँ लॉन्ग नहीं होता, यहाँ पर सेम डिस्टेंस रहता है, प्लस उसके बाद में क्यूआरएस जो है हमारा ड्रॉप आउट शो करता है। दिस इज गोइंग टू बी योर Mobitz type 2. And what about third degree? Third degree is QRS catches P cheating, so they separate and live single lives. Oh my God, समझ गए? अब तो बहुत बुरा हो गया है। क्या कि P और QRS अपना इंडिपेंडेंटली आते हैं, they don't have anything to do with each other. Okay, this ECT is not showing that, but P and, ठीक है, तो मान लो ये P आ गया, फिर थोड़ी देर में P आ गया, ठीक है, फिर QRS आ गया, देन अगेन P आ गया, फिर P आ गया, फिर से P आ गया। So you're getting it? So they are just living, yes, none three, everybody free. Okay, so Mobitz type 3 and everybody is free. ठीक है, Mobitz type 3 and everybody is free. हाँ जी, चलो बच्चे ये समझ में आ गया। So if you are, हाँ, अगर ये समझ में आ गया तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, अबाउट योर बंडल ब्रांच ब्लॉक। ठीक है जी, बंडल ब्रांच ब्लॉक। ठीक है, ओके, यस, इट इज कंप्लीट डिसोसिएशन इन 3। क्विकली टेल मी व्हिच इज योर फेवरेट टीम इन आईपीएल। ये बताओ जल्दी से। यस, व्हिच इज योर फेवरेट टीम इन आईपीएल? So RCB is just like a bundle branch block. Okay, RCB is just like a bundle branch block. Okay,
तो उसमें जो पल्स रेट है ना वो बहुत लेट पहुंच पाता है। KKR, oh KKR fan, so melody fun says KKR, okay, so bundle branch block RCB is just like a bundle branch block क्योंकि उसमें जो पल्स है ना वो बहुत लेट पहुंच पाता है, ठीक है। चलिए, so anyways, let's understand two important things, marrow and william. Marrow and william. So what is marrow? Here it is M, here it is W, okay, and this is W and this is M, william. So just remember one important thing, that marrow has got double R, so double R is right side. So if you have got right bundle branch block, the mnemonic is marrow. If you have william, double L. So if you have got what, left bundle branch block, then you have got mnemonic william. So what do you mean by this? So if it is a right bundle branch block, in V1 lead you will have a pattern of M. Okay, you will have a pattern of what? You will have a pattern of M. Okay, just give me 1 second. So what is this pattern? Now please understand, this is a M pattern. Can you see here, then here, then here, then here, then here? So this is a M pattern which is going to be there. Okay, in V1. And what will be the pattern in V6? In V6 you will have a W pattern. Okay, in V6 you will have a W pattern. Okay, so what is a W pattern then? Yes, what is the W pattern? So see here, I'm sorry, वो बहुत perfect image तो नहीं है, but yes, you can understand like this. Okay, so this is a more or less a W pattern which I have drawn. So this is M pattern, this is W pattern, marrow, this is a right bundle branch block. Okay, right bundle branch block. And similarly, if you see about the left bundle branch block, what you're going to have? So in left bundle branch block, please understand, we will have W pattern and then we will have a M pattern. Okay, W pattern and M pattern like this. Okay, W pattern and M pattern like this. Okay, chal, coming on to some pericardial disease now. Okay, coming on to some pericardial disease. Okay, what is Beck's triad? Jaldi batao. Tell me about the Beck's triad. JVP, hypertension, and muffled heart sound. JVP shows absent, very good. Absent Y waves, very good, bache. Absent Y waves. Yes. What else? Muffled heart sound is not a. Okay, you can say okay. Muffled heart sound. Yes, muffled heart sounds. Yes, correct. Yes, one more. Yes, one more. Quickly tell me. Hypertension can be there, but hypertension is not a part of this. Not a part of Beck's triad. Backside has got dyspnea. Okay, it has got what? It has got a dyspnea. Okay, so this is how you have to remember. Okay, dyspnea is going to be there, muffled heart sound is going to be there, and absent Y wave is going to be there. Okay, so I'm just drawing it for you. This is the heart, this is your lungs. Okay, and from heart to lungs some blood supply is going to be there. So this is how you can easily remember that heart is going to show muffled heart sound. Yes, vessel is going to show absent Y wave. Okay, JVP, and third thing is going to be dyspnea. That is because of your, yes, this is because of your what? This is because of your, that is because of your lung problem. And they say cardiac tamponade. Very good. This is Beck's triad is seen in what? It is seen in cardiac tamponade, or I think rather than generalization, we should say it is a pericardial disease, which is responsible for showing what? Which is responsible for showing the pericardial disease. Of course, two important things, two more things which you have to add on here is, one is going to be your, Hanji, one is going to be your electrical alternance. Okay, electrical alternance. Okay, electrical alternance. And yes, what else? Hanji, electrical alternance, and what else? Yes, hypertension can also be seen. Hypertension is also seen. So what is happening? This is a pericardial disease. So for example, this is your heart and this is the pericardium. So what is going to happen? This pericardium is going to insert pressure on this heart, and since it is inserting pressure on this heart, the heart is not able to expand properly. And if the heart is not able to expand properly, what is going to be there? There will be decrease in the force of contraction, and if the force of contraction is decreased, of course your systolic blood pressure is going to decrease, बच्चे. Okay, and क्या होगा? एक बार में तो हार्ट प्रॉपरली एक्सपैंड नहीं किया, एक बार में तो जो इसकी स्ट्रोक वॉल्यूम थी वो कम हो ही गई. ठीक है, एक बार में तो इसकी जो स्ट्रोक वॉल्यूम थी वो कम हो गई, बट नेक्स्ट टाइम व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दैट अ लॉट ऑफ ब्लड वाज फिल्ड, है ना, एक बहुत सारा ब्लड जो है वो इसी के अंदर रह गया, वो बाहर नहीं निकला, जिसकी वजह से जब नेक्स्ट टाइम हार्ट बीट करेगा, तब जो हमारी पल्स है, याद रखना, जो हमारी पल्स है
वो क्या हो जाएगी, वो ये हो जाएगी, जो पल्स है हमारी उसकी एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज अ लॉट ऑफ ब्लड दिस टाइम इज गोइंग टू come out of the heart, and similarly you will have some ECG changes also. Okay, so alternatively you will have what, you will have a large amplitude, small amplitude, large amplitude, small amplitude, large amplitude, small amplitude. So this thing you have to understand that why it is happening. This is called as electrical alternance, electrical alternance. Okay, चलिए, so I hope you got it right. और ये बहुत इजीली मैंने आपको बता दिया हाउ टू सी फॉर द पेरिकार्डियल डिजीज. सो ये पूरा का पूरा बेक्स्ट्रायड एंड एवरीथिंग, दिस इज बिकॉज दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर योर कार्डियक टेम्पोनेट. ओके, सो दिस इज फॉर योर व्हाट, दिस इज फॉर योर कार्डियक टेम्पोनेट. चलो क्विकली टेल मी व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक टेम्पोनेट. हाँ जी, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक टेम्पोनेट? दिस इज पेरिकार्डियोसेंटेसिस, पेरिकार्डियोसेंटेसिस. ओके, पेरिकार्डियोसेंटेसिस. ठीक है, चलो बच्चे, coming on to hypertension. Now quickly tell me, in hypertension, yes, in hypertension, what is grade 1 hypertension? These are your FMGE PYTs बच्चे, I'm not discussing anything new. Hypertension has got, yes, grade 1 hypertension and grade 2 hypertension. हाँ जी, what is grade 1 hypertension? If you have like 140 to 159 and then we have got 90 to 99, so this is going to be what, grade 1 hypertension, whereas grade 2 hypertension is going to be 160, more than 160 upon 100 is going to be grade 2. So remember this, 160 is the 160 and 90, इनको आपको याद रख लो, बाकी याद करना आसान हो जाएगा. दैट 20 कम कर दोगे तो ये आ जाएगा, 10 कम कर दोगे तो ये आ जाएगा. ठीक है, so 160 more than 160 100 is going to be what, it is going to be your grade 2, whereas grade 1 is going to be 140 to 159 and 90 to 99. Okay, so coming on to grade 1 hypertension. So in grade 1 hypertension you have to check for comorbidities. Suppose comorbidity is present, yes, suppose comorbidity is present, what is going to be the drug of choice? Anji, if comorbidities are present, what is going to be the drug of choice? If comorbidity is present, what is going to be the drug of choice? If of course if comorbidities are absent, we just give lifestyle modifications. Okay, we just tell कि भाई थोड़ा नमक कम खाओ and everything. Okay, yes, lifestyle modifications will prefer, and some drugs also. And in that list, thiazides for that, or rather I should say loop diuretics are something which we give as the first line drugs. Okay, loop diuretics is something which we give as the first line drugs. Whereas if it is grade 2, then of course you have to give LSM, that is lifestyle modification plus drugs. Okay, so coming on to some question times now. Yes, question time. Chalo फटाफट बताओ, if you have got hypertension plus diabetes or CKD, or the patient is post MI, or the patient is having unilateral renal stenosis, renal artery stenosis, unilateral, but yes, what is going to be the drug of choice? हाँ जी, drug of choice क्या होगा, जल्दी बताओ. What is going to be the drug of choice? If the patient is having angina, if the patient is having hyperthyroidism, then what is going to be the drug of choice? ARBs is in this case. And yes, what about hypothyroidism? And you will give beta blockers. Very good, you will give beta blockers in this case. And yes, what about your pheochromocytoma and BPH? Yes, pheochromocytoma, or if the patient is having BPH, then what is the drug? Then you will give alpha blockers, tamsulosin and everything, alpha blockers, right? So just remember, as I have told you, मैं अपने नाम के mnemonics जो हैं वो जरूर बनाता हूँ. So my name is Parv, P and A coming together. So P for pheochromocytoma, BPH is also having P and A for alpha blockers. Okay, and I think this is something which everybody knows, that अगर angina है या फिर अगर thyroid issues है तो हम लोग beta blockers देते ही हैं. Rest you have to remember, you will give ARBs. Okay, rest you have to remember that what you are going to give, you are going to give ARBs. Coming on to acute coronary syndrome. Acute coronary syndrome, ठीक है, इसको जरूर याद करना. ये this is very important for your last minute revision. Very 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 important. Okay, चलो acute coronary syndrome में, acute coronary syndrome के अंदर में, like for example, अच्छा, I'll give you the condition, you'll name it. So condition is, for example, this is ST depression. For example, if there is ST depression plus
troponin is normal, then what is the diagnosis? Yes, what is the diagnosis? हाँ बेटा, what is the diagnosis? Quickly tell me. If tropa is normal, this is unstable angina. It is unstable angina. Okay. But if it is elevated, then you can say it is NSTEMI. Okay. If it is tropa is elevated, then you will say it is NSTEMI. Chalo, I'm writing something. You have to tell me what is wrong. Like if the treatment of this acute coronary syndrome, where we are suspecting that the patient is having what the unstable angina or NSTEMI, then we will give dual antiplatelet therapy. We will give low molecular weight heparin. We will also give beta blockers. We will give nitrates. Yes. Quickly tell me. And we will also give streptokinase. So quickly tell me what is wrong in this. हाँ जी, जल्दी से बताओ इस पूरे में से क्या गलत है कार्तिक? This is wrong. Streptokinase is something which is not given. It is actually a thrombolytic agent, and we don't do thrombolysis if there is a, yes, we don't do thrombolysis in this case. Why? Because if we dislodge the thrombus, believe me, the patient is going to worsen. ठीक है? The patient is going to worsen, and in fact there is no point in giving thrombolysis to these patients. Why? Because it is either it is an unstable angina or it is a NSTEMI. So in dono cases mein hi there is a very small thrombus, okay, very small thrombus, and the cause is not because of the thrombus, so there's no point in giving the thrombus over here, right? समझ में आ गया? चलो, so do we do PCI in this case? Yes, percutaneous intervention. Do we do? हाँ जी, do we do percutaneous interventions? Raj Patel says yes. Good beta. So percutaneous interventions also we do. So we have got three types of percutaneous interventions. One is called as immediate PCI, other is called as early PCI. Then there is something which is called as late PCI. What is immediate PCI? Immediate PCI is something which we do in less than 2 hours. Early PCI we'll do in less than 24 hours, and late PCI, that means we have to do in more than 24 hours, right? So percutaneous interventions we have to do. But when we are supposed to give percutaneous intervention, if the patient is becoming unstable, okay, if the patient is becoming unstable hemodynamically, and if the patient is showing you some features of VTAC, okay, ventricular tachycardia, and if signs and symptoms are suggestive of heart failure, then we have to do it, okay. And please understand, early we do, so remember this is 24, so this is T, so you have to remember troponin, okay. If troponin are increasing, if ST, new ST changes are suspected, okay, so this T is important, tropi, this is ST, so T has to be taken care of, okay, new ST changes. So in this case में हम early PCI करते हैं. And what about delayed? So it is not late, actually it is delayed, okay. If it is a delayed PCI, so you have to remember D for delayed, and D for what? D for diabetes, okay. D for delayed, D for diabetes, okay. D for diabetes. और C and D जो होते हैं वो साथ में आते हैं अल्फाबेट्स में. तो C क्या है? C is CABG. So prior history of CABG, prior history of CABG, okay, right? So ये आप लोगों को याद रखना है. This is something which you have to remember, okay. And immediate हम लोग कब करते हैं? So UV, ठीक है, U and V come together. So if it is unstable, if it is ventricular tachycardia, okay. So just one important thing is suggestive of heart failure, so you have to do it immediately, okay, right? So this is about the acute coronary syndrome. Acute coronary syndrome. So this is not the end of the acute coronary syndrome. This was about the, just one second, I will just, तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया वो वाले पार्ट को जहां पर हमारा सारा का सारा फोकस था किसके ऊपर में? अनस्टेबल एंजाइना, NSTEMI, दैट पार्ट. नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट. चलो बच्चे जल्दी जल्दी से बताओ. इफ ECG शोज ST एलिवेशन, आ रहा हूँ बेटा, बलून बलून डोर टू डोर उस सब पे आ रहा हूँ, डोंट वरी, आई विल टीच यू दैट आल्सो. जस्ट इतना पता होना चाहिए कि वो होता कब है, जब हमारे पास में ST एलिवेशन हो, ST डिप्रेशन पे नहीं, ठीक है. यहाँ पर ST डिप्रेशन था ना, तो कोई डोर टू डोर और डोर टू बलून का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था.
इफ इट इज ST एलिवेशन तब जाकर के वो वाले कॉन्सेप्ट्स आते हैं. सो ST एलिवेशन होगा and tropi is for example normal, then what you will suspect, and if it is increased then what you will suspect. Elevated hai so it is STEMI, but if it is normal then what you are expecting. Treatment of this is going to be nitrate. Okay, यहाँ पर हम लोग नाइट्रेट्स देते हैं, वहां पे हम लोग बीटा ब्लॉकर्स, डुअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी वो देते हैं. ठीक है, दिस इज अ प्रिंस मेटल एंजाइना, स्टेबल एंजाइना, प्रिंस मेटल एंजाइना, ये होगा यहाँ पे. ठीक है, and why does it occur? Because of vasospasm. That's why always we have to give nitrates in both these cases. Okay, we have to give what? We have to give nitrates. That will be followed by what? That will be followed by our nitrates will be followed by our beta blockers. Okay, so nitrate followed by your beta blockers. This you have to remember if it is a case of STEMI. Okay, STEMI का केस होता है बेटा तब हम लोग देते हैं. ठीक है, अनस्टेमी नहीं, यू स्टेमी अपना, एनस्टेमी नहीं, STEMI का केस होता है, then we give this. Okay, okay, nitrates then followed by beta blocker followed by calcium channel blockers. Okay, or alpha blockers. Calcium channel blockers or alpha blockers. Okay, so STEMI में आप लोगों को याद रखना है नाइट्रेट्स दोगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दोगे, बीटा ब्लॉकर्स दोगे. ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, अरे फिर से बीटा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर्स दोगे. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये याद रखना है. ठीक है, SNCA, दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेम्बर. ओके, हाँ जी. उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं. वन थिंग विच यू डोंट हैव टू गिव इन दिस ऑल्सो इज रिमेम्बर समथिंग विच इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड. हाँ जी, something which is contraindicated. What is contraindicated? Quickly tell me. Contraindicated is aspirin is not given in this. Okay, aspirin is not given in this. Beta blockers are not preferred in this. Okay, okay, so aspirin and beta blockers is not given in this. Okay, clear? यहाँ तक सारा समझ में आ गया. तो प्लीज रिमेम्बर, दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, जब भी स्टेमी हो जाए तो आपको याद रखना है ये निमोनिक SNC ab. ठीक है, SNC ab. Okay, or you can remember scab. Okay, scab, no scab. Okay, so this is how we have to remember. No scab means S for your STEMI, N for your nitrate, C for your calcium channel blockers, then A for your, A से क्या है हमारा अल्फा ब्लॉकर्स. जो नहीं देने हैं वो क्या है? एस्पिरिन एंड बीटा ब्लॉकर्स. नो स्कैब. ओके, सो नो स्कैब इज द निमोनिक. चलो बच्चे, अब आ जाओ तुम्हारे वाले जो भी तुम्हारी चीजें थी. अच्छा ठीक है, आई विल गिव. तो ये वाला स्पेस जो है ना हम लोग ऊपर से यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लेते हैं. चलो, क्विकली टेल मी अबाउट दिस इंपॉर्टेंट थिंग्स. बताओ, डोर टू बलून टाइम क्या होता है? डोर टू बलून टाइम. हाँ जी, डोर टू बलून टाइम बताओ जल्दी. डोर टू बलून का मतलब है that from the hospital door to balloon, that means PCI. Yes, what should be the door to balloon time? नहीं नहीं, एंजियोग्राफी तो ठीक है बेटा, बट हाउ मच टाइम? दिस इज लेस देन 90. ओके, डोर टू बलून इज गोइंग टू बी 90. NINETY. So you have got 6 letters, BALL, 4 letters, then 6 letters. Okay, 6 7 letters like that. Okay, so 90 has got 6 letters and balloon has also got 6 to 7. So just remember that door to balloon time, or one a good mnemonic is 6 letters. And if अगर इसका थोड़ा सा आप इसकी जो है मिरर इमेज बनाओगे तो वो B बन जाता है. ठीक है, और B की मिरर इमेज बन जाता है D. So this is how you can remember that this is going to, and 6 की मिरर इमेज क्या बनती है? 9. ठीक है, चलो यहाँ 9 ही लिख दो फिर. ठीक है, ये एक निमोनिक बन गया. ये नया निमोनिक है, मैंने पहले कभी यूज नहीं किया, ये किसी क्लास में ही बना है. सो 9 का मिरर इमेज B, B का D. So B means balloon, D means door, and this is going to be 90. So less than 90 minutes. Okay, is going to be what? It's going to be door to balloon time. Okay, door to balloon time. Next is door to needle time. हाँ जी, next is door to needle. Now ये बताओ ये कितना होता है door to needle time? Door to needle time is less than 60 नहीं, less than 30 minutes. ठीक है, door to needle time is going to be less than how much? Door to needle time is going to be less than 30 minutes. Okay, less than 30 minutes. Okay, आधा घंटा. ठीक है, 30 minutes. So just remember, जैसे needle में NEE आता है, ऐसे 3 में भी THREE आता है. So ये EE you can remember, 3 से 30 you can easily remember. Okay, right? चलो, अच्छा अब एक चीज और है
शिफ्टिंग, हाँ ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, लाइक इफ यू वांट टू शिफ्ट द पेशेंट, शिफ्टिंग टू पीसीआई if delay is expected, like should we shift the patient for PCI or shouldn't we shift the patient from small to large hospital? That you have to understand. Like if it is like less than 120 minutes, then you can shift. If it is more than 120 minutes, you can't shift the patient. Chalo, coming on to Duke's criteria. So remember Duke's criteria. What are the Duke's criteria? चलो मैं फटाफट लिख देता हूँ. So what is the major criteria? हाँ जी, तो मैं क्या करूंगा, मेजर क्राइटेरिया में 3 मेजर क्राइटेरिया, 2 मेजर क्राइटेरिया मैं लिखूंगा, तीसरा आप मुझे बताओगे, ठीक है. सो वन इज ऑफ कोर्स माइक्रोबायोलॉजिकल एविडेंस. ओके, माइक्रोबायोलॉजिकल एविडेंस जैसे कल्चर कर लो, सीरोलॉजी कर लो, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है. नेक्स्ट इज गोइंग टू बी इमेजिंग. ओके, इमेजिंग, इमेजिंग में क्या क्या आता है, जैसे इकोकार्डियोग्राफी हो गई, जैसे सीटी स्कैन हो गया, ठीक है. थर्ड बताओ, थर्ड मेजर क्राइटेरिया क्या है, एंड द पर्सन हु इज गोइंग टू टेल मी, मैं फिर उसको चॉकलेट भिजवाऊंगा, ठीक है, फिर उसको मैं चॉकलेट भिजवाऊंगा. जल्दी जल्दी बताओ. हाँ जी बताओ, माइक्रोबायोलॉजिकल एविडेंस, इमेजिंग, एंड देन अगली चीज बताओ. एंड माइनर में क्या क्या आता है, एनी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, ठीक है, कोई भी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है. तो पहली बात तो हम लोग करते क्यों है ड्यूक्स क्राइटेरिया, टू सी द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक है. कोई भी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है, नंबर वन. यस, अदर थिंग्स, फीवर, यस, अदर, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, इम्यून फिनोमिना, ठीक है, सम इम्यून फिनोमिना. Okay, JNV lesions and all these things. Okay, you have to remember immune phenomenon. Okay, immune phenomena. Most important. This is extremely important. Immune phenomena. Yes, next is going to be what? Vascular event. Okay, vascular events. Okay. Yes, vascular events. And next is going to be investigations not fulfilling the major criteria. So there are some investigations not fulfilling the, yes, not fulfilling the major criteria. ओके, तो वो आपको याद रखना है कि कुछ कुछ होती हैं ऐसी. देर आर सम इमेजिंग, जैसे कि क्या बताऊं मैं आप लोगों को, जैसे ओनली वन कल्चर, ठीक है, ओनली वन कल्चर, सिर्फ मान लो कल्चर है, सो दैट्स गोइंग टू बी अ ओनली वन कल्चर इज नथिंग बट अ माइनर क्राइटेरिया. ओके, ओनली वन कल्चर इज अ माइनर क्राइटेरिया. नेक्स्ट इज एफडीजी पेट स्कैन. ओके, सो एफडीजी पेट स्कैन, तभी मैंने आपको दो ऊपर बताए थे. one was your echo and other is going to be CT scan. Okay, CT scan and echo. Okay, so ye both, these both are also important. And then you have got clinically new murmur. Okay, some murmur, if you are if you have heard any kind of new murmur, so this you have to understand, because the new regurgitation murmur. Okay, अभी तक भी किसी भी बच्चे ने यहाँ पे जवाब नहीं दिया है. तो आंसर इज सर्जिकल एविडेंस, लाइक ड्यूरिंग सर्जरी इफ यू सी सम ऑफ द, ठीक है, अगर ड्यूरिंग सर्जरी आपको कोई वेजिटेशंस दिख रही हैं, तो यू कैन से दिस इज अ व्हाट, दिस इज अ दिस इज योर, हाँ जी, दिस इज योर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक है. तो माइनर में आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है एक निमोनिक जो कहता है IMPVF. सो आई फॉर इम्यून फिनोमिना, ठीक है, जिसमें ऑस्लर्स नोड्स, जेनवे लीजन्स, ठीक है, वी से वैस्कुलर इवेंट्स, ठीक है, तो इन दोनों को मिला करके एक जेनवे लीजन होता है, ऑस्लर नोड्स होते हैं, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट रिमेंबर. सो दिस इज I, then V, then P for predisposing factors. Okay, F for क्या होता है, फीवर होता है, ठीक है, F for क्या है, फीवर है. एंड I for some investigations, जैसे मैंने लिख दिया ओनली वन कल्चर एंड दिस, ठीक है. एंड व्हाट इज M for new murmur. So IMPVF is the mnemonic for this. And three things, important things, this is imaging, surgical and microbiological, ठीक है. तो मिस, और मिस जो होती है लड़की होती है, और लड़की जो होती है वो हमेशा क्या होती है, मेजर रोल प्ले करती है ना लाइफ में एक लड़की की. सो मिस इज फॉर मेजर. सो बच्चे कह रहे हैं सर इज इट अ मॉडिफाइड क्राइटेरिया. हाँ बच्चे, दिस इज अ मॉडिफाइड ड्यूक्स क्राइटेरिया, मॉडिफाइड ड्यूक्स क्राइटेरिया. चलो जी, कमिंग ऑन टू वॉल्वुलर हार्ट डिजीज. वॉल्वुलर हार्ट डिजीज, बट चिंता मत करो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन द मोस्ट सिंपल वे. एंड एक बार अगर आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखो ऐसा बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं, अगर आपको एक बार में समझ में आ गया तो फिर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने माइंड में रख सकते हो. यू कैन रिकॉल इट इजीली एज वेल, ठीक है. सो कमिंग ऑन टू वॉल्वुलर हार्ट डिजीज एंड वी विल डिस्कस दी कार्डियक मर्मर्स नाउ, ठीक है, विल डिस्कस द कार्डियक मर्मर्स नाउ, ठीक है. तो कुछ एक पहले मैं बेसिक्स आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे फिर इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है.
So if we just talk about basics of it, so ठीक है, तो देखो ये बहुत ही सिंपल चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. So this is of course the left side of the heart. This is of course the right side of the heart. So right side has got which valve? हाँ चलो इतना बता दो. Right side has got which valve? Tricuspid valve और bicuspid valve? ट्राइकस्पिड, गुड. चलो बेटा, तो अब यहाँ पर आप ध्यान से सुनोगे मेरी बातों को, ठीक है. अब देखो, मैं आप लोगों को कुछ एक चीजें समझाता जाऊंगा एक एक करके, तो आप लोगों को इजीली समझ में आता जाएगा, आप चिंता मत करना. बट मेरी बात को फॉलो करना, ठीक है. जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज अंडरस्टैंड, we have got something which is called as stenosis. Stenosis means there is less distance, ठीक है. stenosis का मतलब होता है कि distance जो है वो कम हो गया, ठीक है. और एक चीज मेरी हमेशा ये निमोनिक की जैसे याद रख लो कि एमडी एमएस हम लोग क्या करते हैं लाइफ में आगे जाके एमबीबीएस के बाद, या तो हम एमडी करते हैं या फिर हम लोग एमएस करते हैं. तो एमएस मतलब क्या होता है? माइट्रल स्टेनोसिस. ओके, माइट्रल स्टेनोसिस. एमडी क्या होता है? मिड डायस्टोलिक. ओके, सो मिड डायस्टोलिक मर्मर और माइट्रल स्टेनोसिस. तो ये आप लोग याद कर लेना, ठीक है. मिड डायस्टोलिक मर्मर, माइट्रल स्टेनोसिस. इसी तरीके से बेटा ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस की भी कैसी मर्मर आएगी? मिड डायस्टोलिक मर्मर आएगी, ठीक है. ये निमोनिक समझ में आ गया. ये एक चीज जो है वो आपको याद रखनी है, एमडी इज एमएस, ठीक है, यानी मिड डायस्टोलिक माइट्रल स्टेनोसिस, ठीक है. दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि अब डायस्टोल में जो दूसरी चीज आएगी ना, वो रिगर्जिटेशन की आएगी. जैसे आपने स्टेनोसिस यहाँ लिख लिया है, तो यहाँ क्या आएगा? रिगर्जिटेशन आएगा, ठीक है. अब क्या आएगा बच्चे? यहाँ पे रिगर्जिटेशन आएगा. और रिगर्जिटेशन जब आएगा तो आप मुझे बताओ यहाँ कौन सा रिगर्जिटेशन आएगा? माइट्रल रिगर्जिटेशन आएगा या एओर्टिक रिगर्जिटेशन आएगा? हाँ जी, यू विल हैव अ माइट्रल रिगर्जिटेशन और अ एओर्टिक रिगर्जिटेशन. क्विकली टेल मी, विल इट हैव अ माइट्रल रिगर्जिटेशन और विल इट हैव अ एओर्टिक रिगर्जिटेशन? इट विल हैव अ एओर्टिक रिगर्जिटेशन, ठीक है. इसको समझ भी लेते हैं, इसको समझ भी लेते हैं. देखो, डायस्टॉल, डायस्टॉल का क्या मतलब है? डायस्टॉल का मतलब होता है बच्चे जहां पर आप लोगों का वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है. वेयर योर वेंट्रिकल्स आर रिलैक्सिंग. सो इफ योर वेंट्रिकल्स आर रिलैक्सिंग, दैट मीन्स द ब्लड इज गोइंग टू कम फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है, फ्रॉम हेयर टू हेयर. डायस्टॉल है तो ये लोग वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं, यानी ब्लड कहाँ जा रहा है? ब्लड इज गोइंग टू गो फ्रॉम योर एट्रिया टू वेंट्रिकल्स. सो यू विल हैव माइट्रल वॉल. तो एक तो हो गया माइट्रल स्टेनोसिस, एक तो हो गया माइट्रल स्टेनोसिस. दूसरी बात, ये कब रिलैक्स करते हैं? जब एओर्टा के आगे हम लोगों ने ब्लड भेज दिया होता है, एओर्टा में ब्लड चला गया. तो अगर एओर्टा में ब्लड चला गया है तो क्या होगा? तो हमारे वेंट्रिकल रिलैक्स कर गए, ठीक है, रिलैक्स कर गए, डायस्टॉल आ गया. बट हमें पता लगा कि भाई नीचे से तो थोड़ा ब्लड और ऊपर आ रहा है. तो और ऊपर क्यों आ रहा है? बिकॉज इट इज रिगर्जिटेशन. So in both the cases, in aortic regurgitation as well as in mitral stenosis, you will have a diastolic murmur. तो अगर aortic regurgitation में आ रहा है तो दूसरा हमें क्या याद रखना है? और किस में आएगा? pulmonary regurgitation also. pulmonary regurgitation also, ठीक है. तो इसके अलावा जो, मान लो ये अगर डायस्टोल में थे तो अब हमारे पास क्या बच गया बच्चे? सिस्टोल बच गया. तो सिस्टोल में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा. क्या उल्टा हो जाएगा? अब यहाँ माइट्रल स्टेनोसिस था तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? माइट्रल रीगर्जिटेशन, माइट्रल रीगर्जिटेशन, ठीक है. और एओर्टिक क्या हो जाएगा? एओर्टिक स्टेनोसिस, तो वो सिस्टोलिक हो जाएगी. सिस्टोल का क्या मतलब है? सिस्टोल का मतलब है दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू, हाँ जी, सिस्टोल मतलब वेंट्रिकल्स आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट. तो अगर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ब्लड यहाँ से ऊपर जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज माइट्रल रिगर्जिटेशन. या फिर ब्लड जो है वो यहाँ से यहाँ जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी एओर्टिक स्टेनोसिस, ठीक है. तो पहली चीज अगर ये समझ में आ गई बच्चे, तो देखो S1 साउंड क्या होती है और S2 साउंड क्या होती है? चलो बेटा बताओ जल्दी से, व्हाट इज S1 साउंड एंड व्हाट इज S2 साउंड? व्हाट इज S1? चलो S1 किसकी वजह से होता है? क्लोजर ऑफ S1 टू S2 के बीच का जो विंडो होता है, दिस इज कॉल्ड एज सिस्टोल. ओके, S1 और S2 के बीच का जो विंडो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोल, ठीक है. एंड सिस्टोल जो हो रहा है, सो व्हाट इज S1? S1 इज एक्चुअली क्लोजर ऑफ AV valve. Okay, closure of AV valve. And what is S2? S2 is closure of
closure of aortic as well as pulmonary valve. ठीक है, aortic and pulmonary valve. That is why you have got A2, you have got P2 like that. ठीक है, A2 and P2. यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? चलो अब हम एक एक कंडीशन को पढ़ते हैं. ये मैंने सारे आपसे बेसिक्स डिस्कस कर लिए. ठीक है, so we have discussed all the basics of valvular heart disease. Now we will discuss about the एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे about the murmur. ठीक है, about the murmurs. So just quickly tell me if it is a mitral stenosis. Okay, mitral stenosis का केस होगा तो मैंने मेरे बच्चों को पहले से ही बता दिया that we have to remember a mnemonic MDMS, that is going to be a mid diastolic murmur. And mid diastolic murmur का क्या मतलब होता है बेटा? So for example this is S1, for example this is S2. So we are going to have a murmur that is coming after S2 and coming after S2 like this. Okay, coming after S2 like this. Okay, coming after S2 like this is a mid diastole. So after S2 started diastole and it is coming in the middle. Okay, so it is a mid diastolic. Okay, it is a mid diastolic and it is coming because of what? Mitral valve stenosis. So because it is coming after and can you see this is coming after a while. So what is this gap? This is called as opening snap. Okay, opening snap. डोंट वरी अगर आपको नहीं याद रहता ओपनिंग स्नैप. एस से होता है स्टेनोसिस. रिमेंबर एस से होता है स्टेनोसिस एंड ओ से क्या होता है? हाँ जी, ओ से क्या होता है? एम एन ओ पी. सो एम फॉर माइट्रल. ठीक है, एंड ओ फॉर ओपनिंग. ठीक है, जस्ट रिमेंबर लाइक दिस. ओके, माइट्रल एंड माइट्रल स्टेनोसिस में ओपनिंग स्नैप दिखती है. ठीक है, ओपनिंग स्नैप दिखती है. ठीक है, तो इसका मैनेजमेंट क्या होता है? तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ दिस? सो फॉर ट्रीटमेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड यू विल डू बलून डायलिटेशन. ओके, बलून valvotomy or balloon dilatation. Balloon valvotomy. Okay, and when you are supposed to do this, if you have got either it is a symptomatic case, it is having atrial fibrillation. Okay, symptomatic having atrial fibrillation. Okay, or it is having PAH. Okay, in these three cases you will do mitral. Yes, you will treat the mitral stenosis. तो आपको समझ में आ गया ना? एक ही चीज होती है जो डिफिकल्ट होती है याद रखना, वो ये है या फिर वो ये है. तो वो मैंने आपको बता दिया. जहां पर स्टेनोसिस है उसको क्या करोगे? बलून डाल करके डायलेट करोगे. दिस इज mitral stenosis. Okay, coming on to the next one, that is mitral regurgitation. Okay, mitral stenosis and mitral regurgitation. ओके, अच्छा देखो अब इसमें ना आप लोगों को मरमर की साइट से पहचानना पड़ता है. ठीक है, मरमर की साइट से आप लोगों को पहचानना पड़ता है. लाइक इफ इट इज ऑन द लेफ्ट साइड तो फिर आपका क्या हो जाएगा? हाँ जी, लेफ्ट साइड पे होगा तो यू विल हैव व्हाट? यू विल हैव योर mitral valve involvement. राइट साइड पे अगर मरमर सुन रहा है तो दैट्स गोइंग टू बी व्हाट? दैट्स गोइंग टू बी tricuspid valve involvement. Yes, coming on to mitral regurgitation. So I have told you mitral regurgitation is a systolic murmur. It is what? It is a systolic murmur and it is rather a pansystolic murmur. ठीक है, पहले ही मैंने आपको बता दिया था. Now you can remember it is a pansystolic murmur. It is what? It is a pansystolic murmur. And तो pansystolic है तो क्या होगा? For example, this is S1, this is S2. So in entire one, it is going to have a murmur like this. Okay, murmur like this. This is S1 and S2. S1 and S2. ओके, नो माइट्रल रिगर्जिटेशन अगर हो रहा होगा तो देखो नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पर इस बात को समझना. नॉर्मली ये आपका A2 होता है और उसके बाद में आपकी P2 आती है. ठीक है, नॉर्मली A2 P2 ये रहता ही रहता है. ठीक है, तो होगा क्या इसमें? यू विल हैव अ वाइड स्प्लिट. ओके, यू विल हैव व्हाट? यू विल हैव अ वाइड स्प्लिट. ओके, अच्छा पहले मुझे बताओ इफ A2 कम्स फर्स्ट और P2 कम्स फर्स्ट. यस, क्विकली टेल मी, A2 पहले आता है या P2 पहले आता है? A2 is coming first, then is going to be P2. P2 बाद में आता है, पहले A2 आता है. Because your left side musculature is strong ना बेटा. Because your left side musculature is strong, that's why A2 is going to come first and then P2 is going to come. Okay, पहले A2 आ जाएगा, बाद में क्या आ जाएगा? बाद में P2 आ जाएगा. So what is important this A2 and P2? So you have to remember in this case because mitral is regurgitation. ठीक है, mitral क्या हो रहा है? mitral regurgitate कर रहा है. तो a lot of blood is going to get accumulated in your which side? In your left side. And because a lot of blood is going to get accumulated in your left side, the left atria is going to give
blood to left ventricle, and left ventricle is going to release that amount of blood quickly, and what you will have, you will have a early A2. You will have what? You will have a early A2. So you will have early A2, यानी A2 अगर पहले यहाँ आ रहा था तो अब A2 जो है वो पहले आ जाएगा. That's why you will have a wide fixed, understand, you will have a wide, you will have a fixed, what, wide fixed split. Okay, wide fixed split of S2. So wide fixed split of S2 is going to be there. Okay, right? समझ में आ गया? What is the management? How will you treat this? Again, you have to give mitral valve repair, or you can do a mitral valve replacement. Mitral valve repair, or you will do a mitral valve replacement. When will you do? Again, if it is symptomatic, if it is having severity, if there is atrial fibrillation, if there is PAH, you will do this. So this is about the mitral stenosis as well as mitral regurgitation. हाँ जी, माइट्रल स्टेनोसिस एंड माइट्रल रिगर्जिटेशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. ठीक है, मैंने आपको याद भी करवा दिया कैसे याद करना है. माइट्रल रिगर्जिटेशन के लिए ये दो चीजें आप याद रखो. ठीक है, माइट्रल रिगर्जिटेशन के लिए ये दो चीजें याद करो. देखो कैसे याद करना है. दिस इज M, so M का उल्टा हो जाता है W, so you have to remember it is going to be wide split. ठीक है, it is going to be what? It is going to be wide split. Okay, wide split. Coming on to the third one. चलो बेटा, अब हम next बात करते हैं. So this is now we will discuss about aortic stenosis. ठीक है, so aortic stenosis. So S and C, they are phonetically similar. That is why the murmur is crescendo decrescendo, crescendo decrescendo murmur. Okay, crescendo decrescendo murmur. So for example, this is S1, this is going to be S2, and what you are going to have, you will have a ejection systolic murmur like this. Okay, ejection systolic murmur like this. This is crescendo decrescendo. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए. ठीक है, ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए. और ये कहाँ दिख सकता है? Yes, in which syndrome? So it can be seen. So S के बाद में क्या आता है? T, PQRST. So T for Turner syndrome. Why Turner syndrome? Because Turner syndrome has got bicuspid aortic valve. Okay, your pediatric faculty must have taught you that it has got a bicuspid aortic valve. Bicuspid aortic valve. And what is going to happen? Because aorta is stenosed, that's why P2 comes first and A2 comes late. This is called as paradoxical. This is called as what? This is called as paradoxical split. Okay, paradoxical split. Okay, so you have to remember this mnemonic and remember this also. ठीक है, pass. पप्पू पास हो गया. P for paradoxical, S for stenosis. With stenosis, aortic stenosis. So PAS comes together. Okay, so this is the next thing which you have to remember. And again, because it is stenosis, so what will you do in aortic stenosis? We have to give AV replacement. ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? Generally we do for AV aortic AV replacement. ठीक है, so remember RST rather than remembering ST. And you can remember this also, that this is AV replacement. हाँ जी, चलो बच्चे, quickly tell me aortic regurgitation. हाँ जी, aortic regurgitation. आ जाओ, एक बहुत अच्छा तुम्हें निमोनिक बताता हूँ aortic regurgitation का. तो जो बच्चे सुन रहे हैं आज, वो तो एक aortic regurgitation कभी नहीं भूलेंगे. बताओ. So ग्राहम स्टील मर्मर. यस, ये सुना है सबने? ग्राहम स्टील मर्मर. यस, ग्राहम स्टील मर्मर. देखो ये होता है ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर. ठीक है, सो ए मतलब एओर्टा, तो एओर्टा का ब्लड, यू मतलब यू टर्न. सो इफ एओर्टा का ब्लड यू टर्न मार रहा है यानी एओर्टा रिगर्जिटेशन, तो दिस इज गोइंग टू बी ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर. ओके, और मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया दैट एओर्टिक रिगर्जिटेशन इज गोइंग टू बी अ diastolic murmur. That's going to be which murmur? Diastolic murmur. So what is going to happen? This is going to be S1, this is going to be S2, and the murmur is going to be like this. Okay, murmur is going to be like this. So what you will do? You will do a AV replacement. Okay, so what you are going to do in this case? AV replacement. Okay, you will do a AV replacement in this. Okay, AV replace. Okay, so when you do, तो जब भी एओर्टा का केस होता है ना, whenever there's an aorta case, so we have to understand that we do AV replacement. Okay, AV replacement if the ejection fraction is, okay, if ejection fraction is like less than 50% or the patient is symptomatic. Okay,
the patient is symptomatic, then we do this. ठीक है, so coming on to, हाँ यहाँ तक आप लोगों को I think समझ में आ गया है. Okay, about the mitral stenosis, mitral regurgitation, aortic stenosis and aortic regurgitation. ठीक है, सारी चीजें आई होप आप लोगों को समझ में आ गई हैं. एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट मोर फॉर, सो नाउ वी विल डिस्कस अ लिटिल मोर अबाउट, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस, रादर आई एम गोइंग टू ड्रॉ एंड यू विल टेल मी विच मर्मर इज दिस. चलो 1 2 3 4. हाँ जी, फर्स्ट मर्मर, yes, quickly tell me if this is S1, this is S2 and the murmurs are like this, so which murmur is this? Yes, quickly tell me which murmur is this. So if this is S1, this is S2 and I am having a murmur like this, so which murmur is this? हाँ जी, 1 बताएंगे, 2 बताएंगे. This is S2, this is S1 and murmurs is like this, so which murmur is this? This is S1, this is S2 and the murmur is like this. चलो बताओ 1 2 3 4. Yes, quickly tell me what is this 1 2 3 4. Crescendo decrescendo, very good. Condition का नाम क्या है बच्चे? Condition, yes, it is seen in, yes, it is seen in aortic stenosis, pulmonary stenosis, crescendo decrescendo, very good. Next बताओ बच्चा, second बताओ. हाँ जी, second, quickly. Aortic stenosis, yes, what is this? A pansystolic murmur seen in, second वाला बताएंगे बच्चे. Pansystolic murmur is seen in mitral regurgitation. First is aortic stenosis, second is MR, very good. MRTR, yes, MR भी हो सकता है, TR भी हो सकता है, yes. Third one is MVO. Okay, what is this MVO? आपको पता था, that's good. This is MVP, mitral valve prolapse. Okay, mitral valve prolapse. Okay, mitral valve prolapse. So just remember, this is called as mid diastolic click. ओके, मिड डायस्टोलिक क्लिक बोलते हो आप इसको, ठीक है, सॉरी, मिड सिस्टोलिक क्लिक बोलते हो, मिड सिस्टोलिक क्लिक बोलते हैं इसको बेटा. सो दिस इज सीन इन, यस, दिस इज सीन वेयर, दिस इज सीन इन योर, हाँ, दिस इज सीन इन योर mitral valve prolapse. So this is something which you have to remember. And yes, one more is going to be what? Last वाला, अच्छा नहीं, ये नहीं, ये वाला नहीं बनाया हमने. Yes, this is a diastolic murmur. हाँ, बस जल्दी बताओ diastolic कौन सा है ये? Fourth one is aortic regurgitation. Anonymous, you are absolutely correct. This is, हाँ जी, what is this fourth one? This is your aortic regurgitation. Aortic regurgitation. दो चीजें और बताना चाहता हूँ बेटा. रिमेंबर, ये जो स्टेनोसिस वाली है, एओर्टिक स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस, ये कैरोटिड्स में होती हैं, ठीक है, ये कैरोटिड्स को रेडिएट करती हैं. So just remember, like A, B, C. So A for aorta and C and S has got same sound. So A and C coming together. So what does this mean? So if there is aortic stenosis, we will have रेडिएशन टू कैरोटिड्स. मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर एओर्टिक स्टेनोसिस है, एक तो एस और सी की साउंड सेम है और ए और सी आती पास में है, तो यू कैन रिमेंबर, इफ इट इज स्टेनोसिस एंड इफ इट इज एओर्टिक स्टेनोसिस, then it is going to radiate to carotids, whereas pansystolic murmur has got this A word in it and A for axilla. So pansystolic murmur, it is going to go in the axilla. Okay, it is going to go where? It is going to go in axilla. ठीक है, समझ में आ गया? Coming on to next one, aortic regurgitation. Yes, aortic regurgitation. तो हाँ, तो ये aortic regurgitation है, ठीक है. After that, what next? Aortic regurgitation. हाँ, aortic regurgitation मैंने आपको बता दिया, that this था Austin Flint murmur, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. चलिए, नेक्स्ट चीज अब मुझे ये बताओ. This is something, the next part I want you to tell me. चलो, if this is S1, if this is S2, and then you have got a gap, and then we have got something like this murmur. So what is this? हाँ जी, ये कौन सा murmur हो जाएगा बच्चे? Yes, you are saying MS. Very good, very good, absolutely perfect. Anonymous, anonymous, एकदम correct आपने आंसर दिया. This is MS. This is mid systolic murmur. Sorry, mitral stenotic murmur. This is extremely important and everybody should know that. So this is MS. Okay, and if it is associated with RHD, rheumatic heart disease, then you call it as which murmur? Carey-Coombs murmur. Okay, Carey-Coombs murmur. And can you see Carey, double R, R. Okay, double R and R. So this is how you have to remember mitral valve stenosis.
very good. Open click, very good. Abdullah Sheikh, very good, very good. Mahnoor Bhatt, mitral valve stenosis, very good बच्चों. So you are awesome. चलो, last question, last question, last question. If this is S1, if this is S2, अब आप लोग जो है ना मरमर्स के मास्टर हो चुके हो, है ना? If this is S1, if this is S2, and I have got this pattern of murmur, अब बताओ ये कौन सा मरमर है? अब बताओ ये कौन सा मरमर है? मरमर बताएंगे? पीडीए, अमेजिंग. अनोनिमस, यू आर अमेजिंग. अमेजिंग मीन्स अमेजिंग. दिस इज पेटेंट डक्टस arteriosus. So basically, patent ductus arteriosus is a connection between your two things. Between what? Between your pulmonary artery and aorta. Okay. So because this is going to be patent, very good, Abdullah Sheikh. This is because it is going to be patent, it is going to be in your systole also, in your diastole also. This is going to be machinery murmur. Machinery murmur. देखो बच्चे, आंसर किया करो. गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं. Nobody is going to tell you, I mean, scold you, or nobody is going to tell you anything. But अच्छी बात क्या होती है पता है? आंसर करने से ना आपको ये चीज एक पता लगती है कि आपको कितना आता है और कहाँ आप गलत कर सकते हो. ठीक है. तो जब आप गलती करते हो तो मोर यू रिटेन, द मोर यू डू रॉन्ग, मोर यू रिटेन. पीडीए इज एसोसिएटेड विद रुबेला. वेरी गुड. रुबेला बिल्कुल सही बात है. इट इज एसोसिएटेड विद रुबेला. ठीक है. सो रुबेला के ट्रायड में क्या क्या आता है? आ जाओ, थोड़ा सा इन्फेक्शियस डिजीज याद करा देता हूँ. सो इट हैज गॉट कैटरैक्ट, it has got a sensory neural hearing loss, and it has got a patent ductus arteriosus as well. Anonymous, पक्का बेटा. सिलेक्शन पक्का, पक्का. स्क्रीनिंग में आप लोग ने इस बार जो है ना फाड़ के आना है एफएमजी का पेपर, है ना? एमआई की कुछ एक चीजें बता दो. तो यहाँ हम लिखेंगे वॉल ऑफ एमआई. ठीक है, कि कौन सा वॉल जो है वो गया और उसकी वजह से हमारे पास में क्या फीचर्स आते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज टेकिकार्डिया, then tell me which wall is involved, and if it is bradycardia, preparing for नेपाल सीई. बच्चे पक्का हो जाएगा, डोंट वरी. और मैं बता देता हूँ सभी एग्जाम्स के लिए, दिस इज समथिंग विच इज प्राइमरी, दिस इज समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑलवेज. ठीक है. चलो, विच वॉल ऑफ, सो इफ इट इज टेकिकार्डिया, विच वॉल इज एसोसिएटेड? सो रिमेंबर, एंटीरियर वॉल. ओके, एंटीरियर वॉल एमआई में देयर इज टेकिकार्डिया विच इज सीन. हाँ जी. ब्रेडिकार्डिया किस में होता है? इंफीरियर वॉल एमआई. तो इंफीरियर मतलब क्या? इंफीरियर ऐसे ही बनाओगे. तो ये जो है ये डिक्रीज का भी साइन होता है. तो डिक्रीज मीन्स ब्रेडिकार्डिया. ए से एंटीरियर, ए से आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, मतलब कि इंक्रीज होते जाओ. दिस इज गोइंग टू बी टेकिकार्डिया. टेकिकार्डिया. सो इफ देर इज अ anterior wall MI, so what there is tachycardia already. Okay, so what you have to give in this case? So we have to give inotropes. Okay, inotropes हम लोगों को देने होते हैं, so that force of contraction increases. Okay, not the rate but the force of contraction has to increase. ठीक है, force of contraction. But if it is inferior wall MI, then what you will do? Then you will, because it's a Brady case, तो BP भी जो है वो low हो रहा होता है. So then here what you are supposed to give? We have to give IV fluids. ठीक है, we have to give what? We have to give IV fluids बच्चे. ठीक है, we have to give IV fluids. Okay, coming on to relative bradycardia, स्ट्रोक एडम्स, एंड 2 स्लाइड्स के बाद में हमारा सीवीएस जो है वो फिनिश हो जाएगा. सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया? ओके, सो माय डियर चिल्ड्रन, द कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स. क्विकली टेल मी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ब्रेडिकार्डिया. रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया मींस, सी जनरली व्हाट हैपेंस, फॉर एवरी 1 degree Fahrenheit increase in temperature, there is 10 beats per minute pulse increase. Okay, that happens. But if it is not occurring by that rate, then we call it as a relative bradycardia. Okay, तो जितने भी डिजीजेस एला के नाम से आते हैं ना, एला, ठीक है, जैसे कि लीजियोनेला, ब्रूजेला. ओके, लीजियोनेला, ब्रूजेला. ओके, जितने भी डिजीजेस इस नाम से आते हैं, लीजियोनेला, ब्रूजेला, देन ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू कम इन. यस, ठीक है, ये सब इसी के अंदर में आएंगे. हाँ जी. और salmonella, that means enteric fever. Okay, salmonella. What is Faggot sign? So if relative bradycardia is occurring in yellow fever, okay, yellow fever, then we call it as Faggot sign. So F से fever, F से Faggot sign. हाँ जी. और कौन सा हो सकता है बच्चे? Yes, what else? So किसी ने लिखा है शायद like increased ICP. हाँ बच्चे,
like for example, if you have pyogenic meningitis, तो उस केस के अंदर भी yes of course this is the case, this is going to occur. Yes, correct, एकदम सही बोल रहे हो. Yes. And then if the patient is on beta blockers, ये तो बहुत obvious सी बात है ना. If the patient is on beta blockers, कैसे टेकी में जा पाएगा? जा ही नहीं पाएगा. ठीक है. If there is a factitious fever, ठीक है, मतलब फीवर है ही नहीं और पेशेंट बोल रहा है कि मुझे फीवर है, तो फैक्टिशियस फीवर उसमें नहीं होगा. ड्रग फीवर, लाइक इट इज बिकॉज ऑफ ड्रग्स. ठीक है. सो ऐसे सब केसेस के अंदर में वी डोंट हैव द टेकिकार्डिया एंड देयर इज गोइंग टू बी रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया. तो ये चीजें जो है, हाँ, डिगॉक्सिन इज कॉजिंग फीवर. गुड, ये आपको याद रखनी है. चलो बच्चे बताओ, स्टोक एडम सिंड्रोम, व्हाट इज दिस स्टोक एडम सिंड्रोम? तो स्टोक एडम सिंड्रोम को क्या हुआ है? देखो, ये मेरा दिल है. हाँ हाँ, ये मेरा दिल है, ये मेरा दिमाग है. फॉर एग्जाम्पल, दिल में हार्ट का ब्लॉक आ गया. फॉर एग्जाम्पल, दिल में हार्ट का ब्लॉक आ गया. ठीक है. अब हार्ट ब्लॉक आ सकता है ना. एक शायरी सुनाता हूँ तुम लोगों को, है ना, बहुत देर से पढ़ पढ़ के हम भी बोर हो जाते हैं. एक शायरी सुनाता हूँ, बड़ी अच्छी है. कहते हैं, जो बीत गए वो जमाने नहीं आते. हार्ट ब्लॉक हो गया, या फिर मान लो ब्रेडिकार्डिया हो गया किसी भी कारण की वजह से. ओके, किसी भी रीजन की वजह से क्या हो गया? ब्रेडिकार्डिया हो गया मान लो किसी भी रीजन से. तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट? इन दोनों कारणों की वजह से द परफ्यूजन टू योर सीएनएस इज गोइंग टू डिक्रीज. देयर इज गोइंग टू बी डिक्रीज कार्डियक आउटपुट टू वाइटल ऑर्गन्स. ओके, so there is decreased cardiac output to vital organs. Okay, there will be hypoperfusion, and because of hypoperfusion the brain is going to have what? It is going to have syncope. Okay, it is going to have syncope. इसी को बोलते हैं स्टॉक एडम्स सिंड्रोम. ठीक है, स्टॉक एडम्स syndrome. It is actually life threatening. So the treatment is going to be what? The treatment is going to be anti-arrhythmic agents. Okay, you have to give what? You have to give anti-arrhythmic agents. Okay, anti-arrhythmic, right? So इसमें भी इनफैक्ट ईसीजी के ऊपर में you will have what? You will have wide QRS complexes. Okay, previous history रह सकती है सेम चीज की. Okay, पेनोटिक सेल्स तो रहेंगे ही रहेंगे. तो ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों को समझनी है, याद करनी है. ठीक है. चलो बच्चे, वेरी गुड. सो जीआईटी अब तक देखो, सीवियस इज समथिंग जिसमें हम लोगों को ज्यादा दिमाग लगाना. ठीक है. और असाइटिस में, और आई मीन जीआईटी और बाकी में जो है ना चीजें, इनमें हम लोगों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. इसमें हमें सिर्फ जो है ना रीड करते जाना, लर्न करते जाना, तो वो इजीली हो जाएगा. ठीक है. हमेशा क्वेश्चंस में पागलों के जैसे वो लोग लिख देते हैं दैट SAAG का जो लेवल है वो कितना है. या तो वो दे देंगे मोर देन 1.1 है, या वो दे देंगे लेस देन 1.1 है. हमारे बच्चे वैसे ही परेशान हो जाते हैं कि भाई इसका जवाब क्या है. ठीक है, इसका जवाब क्या है. तो देखो, अगर 1 और 1 से ज्यादा, मतलब मोर देन 1.1 आ गया, ठीक है, तो बस एक चीज याद कर लेना कि 1.1 से ज्यादा अगर आ गया तो वो पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाती है. ठीक है. मोर देन 1.1 आ गया, सो इट इंडिकेट पोर्टल हाइपरटेंशन. ठीक है. मोर देन 1.1 आ गया, सो इट इज इंडिकेटिंग पोर्टल हाइपरटेंशन. और फिर पी से पोर्टल हाइपरटेंशन में आपको प्रोटीन देखना होता है. ठीक है. सो वी विल चेक अबाउट द असाइटिक प्रोटीन लेवल्स. ठीक है, वील चेक अबाउट द असाइटिक प्रोटीन लेवल्स. ठीक है. सो अगर असाइटिक प्रोटीन लेवल आपका मोर देन 2.5 है, एक कंडीशन है. लेस देन 2.5 है, दूसरी कंडीशन है. अगर मोर देन 2.5 है तो यू हैव गॉट समथिंग विच इज कॉल्ड एज बी से बट-चियारी सिंड्रोम. बी से बट-चियारी सिंड्रोम. सी से तुम्हारा कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस. और फिर तुम्हारा एक हो जाता है सी से और कार्डियोमायोपैथी. ठीक है. तो देखो कितना इजी है, याद रखना. ए से असाइटिक प्रोटीन, बी से बट-चियारी, सी से कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस एंड कार्डियोमायोपैथी. बट अगर असाइटिक प्रोटीन लेस देन 2.5 है, असाइटिक प्रोटीन यदि लेस देन 2.5 है बेटा, इसका मतलब क्या है? दैट प्रोटीन्स आर नॉट गेटिंग फॉर्म्ड. प्रोटीन्स आर नॉट गेटिंग फॉर्म्ड. ऊपर से पोर्टल हाइपरटेंशन तो हो ही रखा है. तो क्या लगता है क्या कारण होगा? पोर्टल हाइपरटेंशन हो रखा है, प्रोटीन्स बन नहीं रहे हैं, मतलब लिवर डैमेज है. सो आंसर क्या हो जाएगा? लिवर डैमेज है तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चे? दिस इज गोइंग टू बी लिवर सिरोसिस. ठीक है बेटा. सो दिस इज गोइंग टू बी लिवर सिरोसिस. ओके, लिवर सिरोसिस. ओके, समझ में आ गया? गुड. इफ SAAG is less than 1.1, if SAAG is less than 1.1, तो हम लोगों को क्या याद रखना? बाकी के चीजें देखनी है कि क्या दे रखा है उन्होंने.
जैसे कभी कभी वो लोग देते हैं फ्रॉथी यूरिन, चलो बेटा बताओ, इफ ए हिस्ट्री इज फ्रॉथी यूरिन, बी दे हैव गिवन फीवर प्लस वेट लॉस, ठीक है, फीवर प्लस वेट लॉस, सी में उन्होंने दे रखा है वेट लॉस प्लस एल्डरली पेशेंट, ठीक है, और डी में ऑप्शन में उन्होंने दे रखा है एक्यूट पेन इन दी एपिगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है। चलो मुझे बताओ फटाफट ए बी सी डी के आंसर्स दो मेरे को, ए कौन सी कंडीशन है, बी कौन सी कंडीशन है, सी कौन सी है, एंड डी कौन सी है, जल्दी जल्दी बताओ। नेफ्रोटिक, वेरी गुड एनोनिमस, वेरी गुड, दिस इज नेफ्रोटिक, वेरी गुड। यस, फीवर प्लस वेट लॉस, फीवर प्लस वेट लॉस, this is tuberculosis. Weight loss plus elderly, this is malignancy. And acute pain, epigastric pain, this is going to be what? Yes, acute pain, epigastric pain, this is going to be what? This is going to be pancreatitis. Pancreatitis, very good, very good. चलो अब बताओ, कौन बताएगा मुझे, कौन था जिसने सबसे पहले सही आंसर दिया था? एनोनिमस, हाँ जी एनोनिमस बेटा, जल्दी से एक बता दे कौन सा गाना सुनना है, और अगर नहीं सुनना तो बता दे, तो फिर मैं आगे पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ एसाइटिस, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ एसाइटिस क्या होगा? सो माइल्ड में व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, ओके, माइल्ड में जस्ट सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, इसमें कोई फिजिकल फाइंडिंग्स नहीं आती, ओनली यूएसजी, ओके, ओनली यूएसजी सजेस्टिव ऑफ एसाइटिस। सिमिलरली इफ वी हैव मॉडरेट प्रॉब्लम्स, सो देन मॉडरेट में क्या होता है, मॉडरेट में इसमें यूएसजी भी पता लगता है, और आपको साथ साथ में कुछ क्लिनिकल फीचर्स भी आने लगेंगे, जैसे फ्लूइड थ्रिल, शिफ्टिंग डलनेस। So what is going to be the treatment in this case? You will give furosemide, okay? Furosemide, torsemide, furosemide, that drugs you are going to give. Severe is something which is accompanied with respiratory distress, यानी इतना पेट जो है वो फूल जाता है कि डायफ्राम के ऊपर में प्रेशर आता है, एंड देन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने लगता है। सो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, यू हैव टू डू हाई वॉल्यूम पैरासेंटेसिस, हाई वॉल्यूम पैरासेंटेसिस इज समथिंग दैट यू हैव टू do, okay, high volume paracentesis you have to do, ठीक है। और एक चीज याद रखना, इसमें मोर देन 2.5 लीटर्स ऑफ फ्लूइड जो है वो आप बाहर निकाल लेते हो, बट वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू सप्लाई एल्ब्यूमिन, ओके, यू हैव टू सप्लीमेंट इट विद द एल्ब्यूमिन, ठीक है। चलो दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, अब बताता हूँ, अब देखते हैं कौन जो है वो सबसे जल्दी मेरे को आंसर देगा। अ 25-year-old man, history of binge drinking, complaints of retching pain and vomiting, investigation reveals hyper-resonant note on chest percussion, what is the diagnosis? हाँ जी, quickly tell me the diagnosis. Bohr-Haave syndrome, धीरज, it is not Mallory-Weiss dear बेटा, it is Mallory-Weiss नहीं है ये, ठीक है, Mallory-Weiss नहीं है, बोर-हावे सिंड्रोम है। Mallory-Weiss और ज्यादा सीवियर मिलेगा तुम्हें, ठीक है, Mallory-Weiss is even more severe, ठीक है। तो दिस इज बोर-हावे सिंड्रोम, वेरी गुड। और जब भी ये हिस्ट्री हो ना, हिस्ट्री ऑफ बिंज ड्रिंकिंग, तो मोस्टली बोर-हावे इज समथिंग व्हिच इज द आंसर, सो दिस इज द बोर-हावे सिंड्रोम, दिस वाज आल्सो अ वेरी गुड। अब्दुल्ला शेख ने नेक्स्ट आंसर भी बता दिया, व्हिच इज द ट्रायड, दिस इज द मैकल्स ट्रायड, एंड मैकल्स ट्रायड क्या क्या है, बिंज ड्रिंकिंग, देन यू हैव गॉट वॉमिटिंग, एंड द थर्ड कंपोनेंट इज एम्फाइसीमा, ठीक है, जो मैंने बताया है ना कि देयर इज अ hyper resonant note on chest percussion, ठीक है। What is the investigation of choice and what is the treatment? So surgical correction is the treatment, but what is the investigation of choice? हाँ बच्चा, investigation of choice, CT, very good, it is CECT with contrast, CECT with contrast। अच्छा बच्चे, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, वैसे तो नहीं भी करोगे तो मेरे को उतनी तनख्वाह मिलनी है बट कर दोगे तो इट इज गुड फॉर यू, बिकॉज देन वी आर एबल टू प्रोवाइड यू द एनोटेटेड पीडीएफ ऑल्सो, तो प्लीज उसको याद रखना, ठीक है। तो एनोटेटेड पीडीएफ हम लोग तभी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चलो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नाउ, दिस इज पॉलिप, ठीक है। तो पॉलिप में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द नॉन नियोप्लास्टिक एंड नियोप्लास्टिक पॉलिप। सो नॉन नियोप्लास्टिक पॉलिप के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। तो नॉन नियोप्लास्टिक पॉलिप्स कौन कौन से होते हैं? वन इज हाइपरप्लास्टिक, ठीक है, one is going to be hyperplastic। अच्छा, I forgot to give you the mnemonic for this, just remember mild में it is salt, okay, moderate, so moderate के अंदर में you are going to give furosemide, okay, furosemide is going to be given in moderate and severe is surgical। so इसमें कुछ इतना है नहीं mnemonic देने जैसा, so just leave it। so non neoplastic में क्या क्या आता है बच्चे? hyperplastic आता है, then you have got inflammatory,
Okay, hyperplastic आएगा, then you have got inflammatory, then what next? Next you have got juvenile polyp, and one more is going to be what? That's going to be Peutz-Jeghers syndrome. Peutz-Jeghers syndrome. Okay, so juvenile and Peutz-Jeghers syndrome, both of them are going to be hematomatous polyp. Okay, hematomatous polyp. ठीक है, तो प्लीज इतना याद रखना, ये hematomatous polyp हो जाते हैं कौन से बच्चे? जुवेनाइल एंड Peutz-Jeghers syndrome. ओके, लस्सी पीनी है वो पुत्र की गल हो गई है, ठीक है, जुवेनाइल एंड Peutz-Jeghers, जुवेनाइल एंड Peutz-Jeghers, दिस इज हेमाटोमेटस पॉलिप. ठीक है, चलो हाँ बच्चे ध्यान से मेरी बात को समझेंगे. हाइपोप्लास्टिक पॉलिप में क्या है? तो देखो हाइपरप्लास्टिक पॉलिप का वो लोग क्या पूछते हैं आपसे, इफ समथिंग दे विल गिव यू एज अ हाइपरप्लास्टिक पॉलिप, तो वो आपसे सिर्फ इतनी ही चीज पूछेंगे कि व्हाट इज द हॉलमार्क सेरेशन. ठीक है, हॉलमार्क क्या है इसका? हाइपरप्लास्टिक का हॉलमार्क क्या होता है? हॉलमार्क इज गोइंग टू बी द सेरेशंस. ठीक है, एकदम सेरेटेड दिखेगा आप लोगों को. ठीक है, सो हॉलमार्क इज गोइंग टू बी द सेरेशंस व्हिच आर प्रेजेंट इन सुपरफिशियल 1/3. ओके, ठीक है, सुपरफिशियल 1/3. Please understand this is important that serrations are present in superficial 1/3 because if serrations are present all over, okay, if serrations are present all over, this is not hyperplastic, this is the sessile serrated adenoma. This is going to be what? This is going to be sessile serrated adenoma. ठीक है, तो ये चीज प्लीज अपने दिमाग में रखना कि sessile serrated adenoma में पूरे के अंदर serrations होते हैं, whereas hyperplastic में serrations कहाँ होते हैं और कहाँ नहीं होते हैं. ठीक है, ये देखो किसी ने कमेंट किया हुआ है सेरेशंस. बेटा सेरेटेड एज इन, अच्छा इफ आई ड्रॉ तो वो इस तरीके का दिखेगा आप लोगों को. ठीक है, तो ये पॉलिप का ये ल्यूमन, ये पॉलिप, ठीक है, तो वो आपको इस तरीके से आपको दिखेगा. ठीक है, लाइक दैट. ठीक है, सो ये सेरेशंस होता है बट ओनली अपर 1/3 के अंदर में आपको दिखेंगे, ये हाइपरप्लास्टिक होता है. ठीक है, फिर हम लोग इन्फ्लामेटरी की बात करेंगे. अच्छा ये किस में दिखते हैं आप लोगों को हाइपरप्लास्टिक पॉलिप? हाइपरप्लास्टिक पॉलिप इज सीन इन काउडेन सिंड्रोम. चलो बताओ विच इज द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर काउडेन सिंड्रोम? हाँ जी, विच इज द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर काउडेन सिंड्रोम? So P10 gene, so P10 cow den, P10 cow den. So this is how you can remember it very easily. So inflammatory में क्या होता है बच्चे? Inflammatory में there is a history of rectal mucosal bleed. Okay, rectal mucosal bleed and of course you will have one more thing. ठीक है, रेक्टल म्यूकोजल ब्लीडिंग भी होगा और उसके साथ में एक और चीज जो होगी वो क्या होगी? म्यूकस डिस्चार्ज. ठीक है, रेक्टल म्यूकोजल ब्लीड होगा बच्चे और क्या होगा बेटा? यू विल हैव अ म्यूकस डिस्चार्ज विच इज सजेस्टिव ऑफ व्हाट? सरस. है ना, वो गुजराती में बोलते सरस छे. सो SRUS मतलब S फॉर सॉलिटरी, R फॉर रेक्टल, U फॉर अल्सर, सॉलिटरी रेक्टल अल्सर. ओके, सजेस्टिव ऑफ सॉलिटरी रेक्टल अल्सर. वेरी गुड मेलोडी फन, वेरी गुड बेटा. चलो कमिंग ऑन टू जुवेनाइल. ठीक है, जुवेनाइल. सो बेटा जुवेनाइल का ये होता है हॉलमार्क फीचर. व्हाट इज दिस? यस, जुवेनाइल पॉलिप का ये होता है हॉलमार्क फीचर. क्या है बच्चे? ये सिस्टिकली डायलेटेड स्पेसेस, सिस्टिकली डायलेटेड स्पेसेस. ठीक है, सिस्टिकली डायलेटेड स्पेसेस जो होते हैं बेटा वो इसका हॉलमार्क हो जाता है. ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है, सिस्टिकली डायलेटेड स्पेसेस. कैन यू सी ये जुवेनाइल में जो यू है, तो यू इज जस्ट लाइक अ सिस्टिकली डायलेटेड स्पेस. देन वी है सिस्टिकली डायलेटेड स्पेस. ठीक है, यू एंड वी, so these are also cystically dilated spaces, so this is the hallmark, cystically dilated space बच्चे. और प्यूस और जुवेनाइल पॉलिप किस में होता है? जुवेनाइल पॉलिप का किस में दिखता है बच्चे आपको? छोटे बच्चों में. हाँ जी, या कोई भी बताओ. मेलोडी फन, विच इज द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर जुवेनाइल पॉलिप? हाँ जी, जुवेनाइल पॉलिप के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है? जुवेनाइल पॉलिप के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है? STK11 नहीं बच्चे, STK11 इज Peutz-Jeghers, STK11 is Peutz-Jeghers. जुवेनाइल, J से जुवेनाइल, J से जोर, जोर से 4, 4 से 4 लेटर वाला SMAD और 4, SMED4. Dr. Sunset, you are the sunrise for this class. Dr. Sunset is the sunrise for this class. This is SMED4. You have got absolutely correct answer. This is SMED4 gene which is responsible. ठीक है, तो STK11 बेटे Peutz-Jeghers में होता है. यहाँ लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए. ठीक है, यहाँ I can write this is STK11 gene. ठीक है, STK11 gene that is seen in Peutz-Jeghers
syndrome and it has got what this. तो 11 इज प्यूट्स जगर, ठीक है, प्लीज इसको याद रखना, ठीक है, प्यूट्स जगर STK 11, ओके। सो इसको प्लीज आपने याद रखना है, इसको नहीं भूलना। और देखो ना, ये एक लाइन आती है ना मेरे पास MNOP, ठीक है, QRST, ठीक है, तो ये ST जब आ रहा है सो वी हैव टू रिमेंबर PB जो है ना वो पास में होता है, सो यू कैन रिमेंबर लाइक दैट। बट फॉर एग्जाम्पल आपको ये मुश्किल लग रहा है कि नहीं सर ये हम ये कैसे याद कर सकते हैं, तो मैं जस्ट आपको इतनी बात बताता हूँ कि क्या बोलते हैं, हाँ, जैगर, ठीक है, जैगर, जैगर को कैसे लिख सकते हो आप, जैगरी, एंड जैगरी कहाँ से आती है, शुगर केन, सो जैगरी शुगर केन, एंड सोचो ये दो शुगर केन के डंडे हैं, सो फ्रॉम S यू कैन रिमेंबर STK, एंड ये दो डंडों से यू कैन रिमेंबर 11, ठीक है। सो STK 11 gene is for Peutz Jeghers syndrome. It has got this tree-like pattern, arborizing pattern. Okay, this has got a tree-like pattern, arborizing pattern. ठीक है, so there are high chances of three things: पैनक्रियास कैंसर, कोलोन कैंसर, स्टमक कैंसर, ठीक है, ये तीनों का जो होता है बच्चे हाई चांसेस होता है, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके, यू हैव टू रिमेंबर। सो P for Peutz Jeghers, P for pancreas, and Peutz, Z is just like S, so S से Z लिखते हो, ऐसे S लिखते हो, तो S is for stomach, and remember this S and C are phonetically similar, so you can remember the colon as well. Whereas neoplastic are two, one is tubular and other is going to be Willis type. So can you see these are the long villi and these are the short tubules. So both of them, tubular and Willis, are suggestive of which cancer? Suggestive of colonic cancers. ठीक है, suggestive of colonic cancers. कोई तो है, बहुत सारे दिल भेज रहा है, थैंक यू फॉर ऑल द हार्ट, ठीक है। चलो बच्चे, एक ओ यस क्वेश्चन, ठीक है, आई डोंट नो आप में से खाए हैं क्या किसी ने ये दिस पफ पैकेट, आई यूज टू लव इट अ लॉट। हाँ, ये पफ पैकेट किसने खाया, जल्दी से एक कमेंट्स में हार्ट रिएक्ट कर दो, है ना, जल्दी से, ये किसने खाया, जल्दी जल्दी बताओ मुझे ये ओ यस, नहीं तो इस वीडियो को लाइक कर दो, इफ यू आर हैप्पी द वे आई एम टीचिंग यू गाइस, जस्ट लाइक द वीडियो सो दैट आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। हाँ, फिर से आ गए दिल, ये पता नहीं कौन भेज रहा है। Identify this disease, बच्चे, myelinosis, very good, very good. Osmotic demyelination syndrome, yes, osmotic demyelination syndrome, yes, also called as what, also called as, no बच्चे, it's not sarcoidosis, it's also called as central pontine myelinosis, central pontine myelinosis. So after the class I'll give you my contact, myelinosis, तो मुझे anonymous जी, आप बच्चे जरूर अपना एड्रेस भेजो, I'll send you one OS packet, ठीक है, I'll send you one OS packet for sure. Central pontine myelinosis और osmotic demyelination syndrome. So क्या होता है बच्चे, whenever we are short of sodium, so there is a formula to remember this sodium deficit, and that is total body weight into desired sodium minus actual sodium, okay, desired sodium minus actual sodium. So this is the formula for sodium deficit, and then from here you check कि कितना सोडियम चाहिए। अगर मान लो इस सोडियम को आप फास्ट करेक्शन करते हो, ठीक है, इफ यू डू फास्ट करेक्शन, ठीक है, फास्ट सोडियम करेक्शन, तो वो फास्ट सोडियम करेक्शन की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे ये सिंड्रोम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज your central pontine myelinosis. Can you see the myelination which has occurred here? Central pontine myelinosis. This is the posterior part. This is your brain stem. Okay, so yes, ठीक है, so this is how you can remember this. ठीक है, चलो, entering the nephrology, renal tubular acidosis. चलो बच्चे, ये देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है renal tubular acidosis जो कि मुझे पता है कि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं ये टॉपिक करते हुए, रिनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। तो मैं क्या करूंगा, ये रिनल ट्यूबुलर एसिडोसिस को आपको मैक्सिमम निमोनिक्स के साथ में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग जो है इसको बहुत अच्छे से कर लो। मुझे पता है एवरीवन, हाय लूसीफर, हेलो बच्चे, so everyone does it wrong, but what I will do, I will tell you supremely important, well, good, beautiful mnemonics, मतलब आप इसको भूलोगे ही नहीं, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है, आप पक्का नहीं भूलोगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बस इतनी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज ये थोड़ा टाइम जो है ये बहुत ध्यान से समझ लेना, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे निमोनिक्स हैं, निमोनिक्स आर ऑन योर वे, लेट मी जस्ट टीच यू, एंड वी आर here to go with renal tubular acidosis type 1, renal tubular acidosis type 2, renal tubular acidosis type 4, क्योंकि renal tubular acidosis type 3 में कुछ भी नहीं है बच्चे, that's very simple, RTA3 is also called as marble bone disease, okay,
मार्बल बोन डिजीज और मार्बल बोन सिंड्रोम, ठीक है, या तो एक इतना पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। सो मार्बल बोन डिजीज और मार्बल बोन सिंड्रोम, और दे विल आस्क यू अबाउट द which enzyme is deficient. So carbonic anhydrase deficiency is going to be there. So just remember in your ABC, in your ABC, C is the third letter. So अगर हम RTA type 3 की बात करें तो उसमें C कार्बोनिक एनहाइड्रेस की जो है वो डेफिशिएंसी होती है। बच्चे हर निमोनिक, जो निमोनिक पसंद आए एक बार जरूर थोड़े बहुत हार्ट रिएक्ट कर दिया करो, ताकि मुझे भी पता लगे कि बच्चों को इससे फायदा हो रहा है। चलिए, यस, आरटीए टाइप 1 में कौन खराब हो जाएगा? देखो निमोनिक्स सुनो, सारे निमोनिक्स में ग्रीन में लिखूंगा, ठीक है। ऑल द निमोनिक्स विल बी रिटन इन ग्रीन कलर, ठीक है। निमोनिक्स विल बी रिटन इन ग्रीन कलर। वेरी गुड, कलेक्टिंग डक्ट। देखो बेटा, टाइप 1 पीरियोडिक टेबल में, इन द पीरियोडिक टेबल H is the first letter. Okay, so in the periodic table H is the first letter, first element is H. So RTA type 1 has got H positive problem, so it has got H positive defect, and because this is a H positive defect, the defect lies in the collecting duct. Okay, the defect is going to lie in what? The defect lies in the collecting duct. Okay, so there is H positive defect, that means less H positive excretion. So if the H positive is not getting excreted, that means H positive is getting accumulated, and since the H positive is going to get accumulated, you have to remember it leads to acidosis. ठीक है, तो एक निमोनिक समझ में आ गया आप लोगों को, ये निमोनिक समझ में आ गया, ठीक है, कि ये H पॉजिटिव की वजह से हो रहा है। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट निमोनिक विच यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, ठीक है। दूसरी चीज बेटा, दूसरी चीज, विच इज द फर्स्ट लेटर ऑफ अल्फाबेट्स? दिस इज ए। ए इज द फर्स्ट लेटर ऑफ अल्फाबेट्स, सो जस्ट रिमेंबर that this is the defect in M4 terracin. I mean RTA type 1 can occur because of M4 terracin B. अच्छा, हमने सारे ये ग्रीन में लिखने हैं तो मैं ग्रीन में लिखता हूँ M4 terracin B. Okay, M4 terracin B is responsible for causing this defect, and the defect is called as RTA type 1. ठीक है। दूसरा, it is also seen with a autoimmune disease called as, so फिर again it is starting from A, it is autoimmune disease, and this autoimmune disease is called as Sika syndrome. It is also called as which syndrome? It is also called as Sika syndrome. Sika syndrome. And coming on to the next mnemonic says STONE, that is stone. Stone is also responsible for causing RTA type 1, that is nephrocalcinosis. Nephrocalcinosis. Okay, clear? So ONE1 coming in the stone. A से आप और क्या याद कर सकते हो? This is a analgesic nephropathy. Analgesic nephropathy. So this is A for analgesic nephropathy. This you have to understand. Okay, clear? चलो, okay. नेक्स्ट चीज के ऊपर में आते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट चीज, व्हाट इज गोइंग टू बी द ट्रीटमेंट? सो प्लीज रिमेंबर, ए आपने लिख लिया, ए के बाद बी लिखेंगे, बी के बाद सी लिखेंगे। सो व्हाट इज बी? बी फॉर बैड प्रोग्नोसिस। ओके, बी फॉर व्हाट? बी फॉर बैड प्रोग्नोसिस। सी फॉर citrate supplementation is given. Citrate supplementation is given. Okay, citrate supplementation is given. अच्छा, अब बेटा एक चीज आपको याद रखनी है अबाउट द पीएच, ठीक है। एक चीज जो आपको याद रखनी है वो आपको याद रखनी है अबाउट द पीएच। तो पीएच जो है आरटीए सिर्फ टाइप 2 में लेस देन 5.5 होती है बस, ठीक है। आरटीए टाइप 2 में लेस देन 5.5 होती है, बाकी हर जगह पीएच इज मोर देन 5.5, मोर देन 5.5, ठीक है। समझ में आ गया? यस, ठीक है। ये हमारा आरटीए टाइप 1 का निमोनिक था। अच्छा, आरटीए रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस जो होता है वो आपको क्या याद रखना है? दिस इज अ नगमा। ओके, दिस इज अ नगमा। सो नगमा क्या होता है? नॉर्मल अनायन गैप मेटाबॉलिकल एसिडोसिस। नॉर्मल अनायन गैप मेटाबॉलिकल एसिडोसिस, यानी कि इफ यू विल सी यूरिनरी पार्ट, so what is going to happen? यूरिनरी, हाँ जी, एक होता है यूरिनरी इशू। अब नगमा जो होता है उसके दो चीजें होती हैं। एक नगमा मतलब नॉर्मल अनायन गैप मेटाबॉलिकल एसिडोसिस। तो इसमें क्या है बच्चे? नॉर्मल अनायन गैप मेटाबॉलिकल एसिडोसिस के दो कारण हैं। एक हो सकता है यूरिनरी डायरिया, ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है? जीआईटी डायरिया। ओके, यूरिनरी डायरिया हो सकता है, जीआईटी डायरिया हो सकता है। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज, अगर जीआई होगा, अगर जीआई कॉज होगा
या फिर यूरिनरी कॉज होगा ऑफ NAGMA, ठीक है, नगमा, सो दैट इज नॉर्मल एंड आयन गैप मेटाबॉलिकल एसिडोसिस। तो इन दोनों केसेस को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? अनायन गैप नॉर्मल होगा इन GIT डायरिया, whereas in urinary diarrhea it is going to be high, ठीक है, इन यूरिनरी डायरिया इट इज गोइंग टू बी हाई। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ में आ गया है। ठीक है, क्लियर। चलो बच्चे, कमिंग ऑन टू RTA टाइप 2। ठीक है, RTA टाइप 2। सो व्हाट इज RTA टाइप 2? हाँ जी, RTA टाइप 2 क्या है? तो देखो अभी 2 को कैसे याद रखना है, देखो 2 से याद रखो। अच्छा, 1 से याद रखना था 10 इयर्स ऑफ एज। 2 से क्या याद रखोगे? 20 इयर्स ऑफ एज। 20 को हम लोग और क्या बोलते हैं? बाय। दैट मीन्स यहाँ पर किस चीज की प्रॉब्लम है? बाइकार्बोनेट की। एंड सिंस इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ बाइकार्बोनेट, आप बताओ मुझे, बाइकार्बोनेट एक्सक्रीशन की प्रॉब्लम होगी या रीएब्जॉर्प्शन की? यदि हमारे पास कहीं पे एसिडोसिस हो रहा है, इसका मतलब बाइकार्बोनेट रीएब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं। सो बाइकार्बोनेट रिजॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम, and since it is a bicarbonate reabsorption problem that leads to acidosis. Okay, सो बाइकार्बोनेट प्रॉब्लम, सो निमोनिक नंबर 2, निमोनिक नंबर 3। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। एंड वी नो दैट ऑल द बाइकार्बोनेट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन PCT, दैट इज व्हाई it is a case of Fanconi's disease or a PCT problem, Fanconi's disease or a PCT problem। ठीक है, अच्छा अब बताओ कलेक्टिंग डक्ट, बट वी कैन सी अंडरस्टैंड दैट कलेक्टिंग डक्ट इज एब्सोल्युटली फाइन। So if the collecting duct is absolutely fine, the pH is going to be absolutely fine, that is 5.5 से कम। और यही जो चीज थी वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि pH is normal in only this case, मतलब बाकी दोनों के अंदर में जो है 5.5 से नॉर्मल होती है, क्योंकि collecting duct is something which is responsible for your H positive, that's why it is going to be like this। ठीक है, समझ में आ गया? Okay, so because this is a defect in PCT, next thing which you have to understand that there will be glycosuria, there will be amino acid urea, and there is going to be phosphate urea as well। Okay, phosphate urea as well, and you very well know that PCT is something that is responsible for your carbonic anhydrase। Okay, so carbonic anhydrase also is inhibitor is going to be the defect over here। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ जी। अब आपको याद क्या रखना है? देखो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था A B C, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे अब? D। ठीक है, सो व्हाट इज D? सो यू हैव टू सप्लीमेंट D3 सप्लीमेंटेशन इन केस ऑफ दिस। बट मान लो अगर आप भूल गए तो याद रखना, दिस इज टाइप 2। टाइप 2 को बोलते हैं बाय, बाय को और बोलते हैं डाई, डी से D3 सप्लीमेंटेशन। दिस इज अबाउट RTA टाइप 2। एंड नाउ कमिंग ऑन टू RTA टाइप 4, so please remember it is in the 40 to 60 years of age। ठीक है, so 4 से, from 4 you can remember 40 to 60 years of age। ठीक है, 40 to 60 years of age। now this 4 just look like A। ठीक है, ये जो 4 है ये किसके जैसा दिखता है? A के जैसा दिखता है। so A से you can remember this is the aldosterone problem। okay, aldosterone problem। okay, aldosterone problem। now what is the function of aldosterone? See, aldosterone causes potassium loss, right? Aldosterone is responsible for causing potassium loss. I think everybody knows that. And K loss, I can write like this. If I just add some words, it becomes LK losses. Okay? So normally aldosterone, hi Honey Mehta, normally aldosterone is responsible for potassium loss and causing LK losses. But since here acidosis is happening, what happens in RTA type 4? This is acidosis. And since it is acidosis, so we have to understand that here it is lack of aldosterone. Because normally aldosterone is responsible for alkalosis, but here acidosis is happening. How? Because there is lack of aldosterone। क्योंकि aldosterone कम हो रहा है इसीलिए यहाँ पर acidosis हो रहा है। ठीक है, acidosis हो रहा है। तो अगर aldosterone कम है तो अब तो मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से पता है that it leads to what? That it leads to hyperkalemia। Okay, it causes what? It causes hyperkalemia। Okay, hyperkalemia, and it can cause arrhythmia, and because it can cause arrhythmia, yes, it is the problematic thing। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को याद रखना है ये। ठीक है, हम लोगों को इसको याद रखना है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ,
कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स का थोड़ा सा मिसकंसेप्शन था, रियली सॉरी। जस्ट रिमेंबर हियर, एक दवाई रहती है जिसका नाम है डायमॉक्स, ठीक है, एक दवाई रहती है जिसका नाम है डायमॉक्स। सो डाई मीन्स टू, और ये है क्या डायमॉक्स? दिस इज एसिटाजोलामाइड, द कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, एसिटाजोलामाइड। ओके, सो एसिटाजोलामाइड क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है। HCO3 नेगेटिव का रिजॉर्प्शन जो है वो कम कर देती है। सो इफ इट इज नॉट गेटिंग, सॉरी, रिजॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन। So if it is not getting reabsorbed, it causes what? RTA type 2. So this is the mnemonic, you can remember this, ठीक है, डायमॉक्स, राइट? So this is about the renal tubular acidosis. चलो बच्चों, कैसा लगा renal tubular acidosis पढ़ के? Just tell me in the comment section, and quickly we will move on to the inherited channelopathies. ठीक है, quickly we will move on to inherited channelopathies. Coming on to next topic बच्चे, that is inherited channelopathies. So there are three inherited channelopathies which you have to understand: Barter's, Gitelman's and Liddle. ठीक है, तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा व्हाट यू कैन डू, चलो ये मैं एक बार पहले पढ़ा देता हूँ आप लोगों को। बार्टल्स, देन जिटलमैन एंड देन लिडल्स। ओके, बार्टर सिंड्रोम, जिटलमैन सिंड्रोम एंड लिडल सिंड्रोम। सो सॉरी, वन सेकंड, बार्टर हो गया, जिटलमैन हो गया एंड लिडल सिंड्रोम हो गया। चलो बेटा, एक एक करके इनको समझेंगे। सबसे पहली चीज, द वेरी फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू नोटिस इज दैट, मैंने इनको समझाने के लिए, दीज आर चैनलोपैथी, चैनल्स खराब हो जाएंगे, समझाने के लिए ऑलरेडी इसको एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा के रखा है। लाइक सबसे पहले मैंने आपको बी बोला है, बार्टर, देन ए, जी है, देन एल है। सो दिस इज एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विच यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। कमिंग ऑन टू व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस? Now in Barter and Gitelman you can't see D, but इसके अंदर में आपको D दिख रहा है। So just remember this is autosomal dominant. This is autosomal dominant. Whereas these are autosomal recessive. Whereas these are autosomal recessive. ठीक है, अब हम समझेंगे कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। What is the etiopathogenesis? ठीक है, पैथोलॉजी क्या है? So remember, if I just make a nephron for you, ठीक है, make a nephron, तो वो क्या है इसमें देखो, हाँ, फैनकोनीज, यस, आई टीच यू, डोंट वरी बेटा। सी है, सो प्रॉब्लम कहाँ आती है? एक आती है लूप में प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम आती है कहाँ पर? यस, एक आता है, यस ऑफ कोर्स यू हैव इशू इन योर, आई शुड से कि ये किसके जैसा होता है, ठीक है, किसके जैसा होता है। सो जस्ट रिमेंबर, जैसे हम लोग लूप डायूरेटिक्स देते हैं, ठीक है, हम लोग क्या देते हैं? लूप डायूरेटिक्स देते हैं। तो प्रॉब्लम किस में आती है? लूप डायूरेटिक्स में प्रॉब्लम क्या आती है? सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल्स में, ठीक है, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। ये मैं आपको नॉर्मली बात बता रहा हूँ, एक चीज समझो पहले। मान लो हम लोग थायाजाइड देते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग थायाजाइड टाइप ऑफ डायरेटिक दे रहे हैं तो सोडियम क्लोराइड चैनल जो है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड चैनल जो है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। और वहीं अगर हम मान लो एल्डोस्टर अपना एम्योडरॉन देते हैं, ठीक है, सो वहीं अगर मान लो हम लोग एम्योडरॉन देते हैं तो क्या होगा? इससे हमारा इनैक चैनल बंद हो जाता है, इनैक चैनल जो है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, इनैक चैनल जो है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया? इनैक चैनल जो है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो, ध्यान से इस बात को समझ लेना कि डिफेक्ट कहाँ कहाँ आ रहा है। इन बार्टर सिंड्रोम, देखो जो पहले लिखा है सबसे पहले, उसमें इसमें डिफेक्ट आएगा। देयर इज अ लूप डायूरेटिक डिफेक्ट, ठीक है, बार्टर हैज गॉट अ लूप डायूरेटिक डिफेक्ट। चलो अभी इसको मैं लिखता हूँ, हाँ, बार्टर हैज गॉट अ लूप डायूरेटिक टाइप ऑफ डिफेक्ट, वेयर एज योर जिटलमैन हैज गॉट अ थायाजाइड टाइप का डिफेक्ट, whereas your ENaC is actually not blocked, but ENaC channel defect है, channel defect है, ठीक है। Stimulatory ENaC channel defect, stimulatory ENaC channel defect is seen in what? It is seen in Liddle syndrome. It is seen in what? It is seen in your Liddle syndrome, ठीक है, it is seen in your Liddle syndrome। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया? गुड। चलो पहले लिडल को समझ लो। लिडल में क्या है? लिडल इज जस्ट लाइक अ ENaC चैनल स्टिमुलेशन, ठीक है, ENaC चैनल stimulation beta. So if your ENaC channel is getting stimulated, that means a lot of sodium is going to get reabsorbed and a lot of potassium is going to be lost
And I've told you that whenever there is a potassium loss, we label it as K loss. So this becomes alkalosis. This becomes what? This becomes alkalosis. And of course, there will be hypokalemia also. There is hypokalemia, there is alkalosis. There is hypokalemia is going to be there. There is alkalosis is going to be there. Okay, right? समझ में आ गया आप लोगों को? Yes. So now, next is what you have to understand, that there is a lot of sodium which is going to get reabsorbed, and since lot of sodium is getting reabsorbed, this is also going to have hypertension. This patient is also going to have what? This patient is also going to have what? This patient is going to have hypertension. ठीक है, this patient is going to have hypertension. ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? That's it. ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया, समझ में आ गया. ठीक है, तो यहाँ पर इनैक्ट चैनल स्टिमुलेशन है. ओके, अगर मान लो इनैक्ट चैनल स्टिमुलेशन नहीं, इनिबिशन हो, देन व्हाट इज द डिजीज? देन डिजीज इज योर सूडो हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म. ओके, सूडो हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म. ठीक है, चलो. हाँ बच्चे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आर यू गेटिंग इट और नॉट? इफ यू आर गेटिंग इट, just quickly type in the chat box getting it, GI. हाँ जी, quickly type in the chat box getting it, that is GI. ठीक है, so that I can teach you the next part now. Sodium chloride channel is gone. Sodium chloride channel is gone. Okay, you're getting it? Sodium chloride channel is gone. And because sodium chloride channel is gone, now what we have to understand, that here it is going to be what? हाँ जी, here is going to be what? देखो दोनों ही cases में ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को. डिफेक्ट कहाँ आ रहा है? देयर इज अ डिफेक्ट इन द सोडियम पोटेशियम, हाँ जी, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर. ओके, सो सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर इज गॉन, and since sodium chloride co-transporter is gone, what we have to understand here is that there will be sodium chloride co-transporter is gone, so there will be no reabsorption of sodium. So sodium is not going to be much higher, sodium is going to be less. Okay, sodium is going to be less, so that's why the BP is going to be what? The blood pressure, either it is going to be normal or the blood pressure will be decreased. The blood pressure will be normal or blood pressure will be decreased. One thing which I want you to remember is this, that here also you will have hyperkalemia and alkalosis. Here also you will have both of these features. Okay, I'll just mark this, that here also you are going to have alkalosis, hypokalemia, alkalosis, hypokalemia, alkalosis, and you will have hypokalemia, right? Alkalosis is going to be there, hypokalemia in both the sessions, both the classes, both the Barter and Gentleman, and BP either is going to be normal or even low. ठीक है, BP is either going to be normal or the BP is going to be low. ठीक है, समझ में आ गया? Great. Now after that, the next important part is going to be about the your next part, and that is going to be what? That is going to be your the thing which we understand very well, that it is mimicking. बाप रे. So it is mimicking लूप डायूरेटिक्स. ठीक है, तो ये लूप डायूरेटिक्स को मिमिक कर रहा है, एंड वन थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट लूप लूजेस ऑल. ठीक है, लूप लूजेस ऑल. सो इफ द लूप लूजेस ऑल, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू हैव calcium in the urine. Okay, calcium in urine. So if there is calcium in the urine, there will be what? There will be hypercalciuric stones. There will be hypercalciuric stone. Similarly, if you see for Gittelmans is M and A. So please remember, Gittelman is little. Gittel is something like little, and M for M. So little magnesium. This means there will be hypomagnesemia, and A for arrhythmia as well. So if the magnesium is low, then it can cause arrhythmia. If the magnesium is low, it can cause arrhythmia as well. Okay, arrhythmia as well. So please understand, this is important. And what is the treatment? So please remember, the treatment for Barter is NSAIDs. Okay, the treatment for Gittelman is magnesium, and the treatment for your Liddle syndrome is going to be amyloride. Okay, amyloride. ठीक है,
समझ में आ गया आप लोगों को? यस, आई हैव ट्राइड एंड एक्सप्लेन इनहेरिटेड चैनलोपैथीज इन अ मच इजियर वे टू ऑल ऑफ यू एंड लेट्स अंडरस्टैंड। हाँ जी, चलो अब एक्यूट किडनी इंजरी पे जाएंगे। हाँ, फटाफट बताओ मुझे, आप लोगों को समझ में आ गया? यस, आई नो, बट बिफोर एंटरिंग टू द पार्ट ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी, आई जस्ट वांट यू गाइस टू, चलो मुझे जल्दी जल्दी से बताओ कि क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या आप लोग क्या चाहते हो बताओ? शायरी सुननी है, या फिर हम लोग एक अच्छा सा गाना सुने, या फिर हम लोग पढ़ाई पे ध्यान दें? फटाफट बताओ मुझे। यस, रीडिंग अबाउट द एक्यूट किडनी इंजरी, ठीक है, ये एक बार थोड़ा सा देख लो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा गया है आपके एफएमजी एग्जाम में। सो यू हैव गॉट प्री रिनल एकेआई, you have got renal AKI. Okay, so how to differentiate between pre-renal AKI and renal AKI? First is going to be urea to creatinine ratio. Okay, urea to creatinine ratio. So urea to creatinine ratio is less than 12:1, which is actually normal in case of renal AKI. But अगर वो pre-renal है, तो pre-renal AKI का क्या मतलब होता है? That means the blood supply, ठीक है, जो ग्लोमेरुलस है हमारे पास में, या जो ब्लड सप्लाई है, दैट इज damaged. So if it is damaged, then what is going to happen? The urea is going to rise. Why? Because nothing is, I mean, less blood is reaching, the less blood is coming to your kidney. So if less blood is coming to your kidney, of course kidneys can't filter much amount of urea, so the urea is going to increase, so the ratio becomes more than 20:1, more than 20:1. Coming on to urea osmolarity, ठीक है, यूरिया ऑस्मोलैरिटी, यूरिन ऑस्मोलैरिटी, सॉरी. So urine osmolarity is going to, yes, is going to be more like 500 milliosmoles if it is a pre-renal AKI. But if your kidney is damaged, remember this, if your kidney is damaged, that means there will be no resorption, nothing that is going to occur, and of course the osmolarity is going to decrease less than 30, less than 350 milliosmoles per liter. Coming on to urinary sodium levels. Okay, urine sodium levels, if we see, so remember, sodium levels are going to be like more than 40 milliequivalents in renal and less than 20 in case of urinary. Sodium is going to be less in case of what? In case of your pre-renal AKI. ठीक है? FeNA, that is fraction of sodium treated, that's going to be less than 1% in case of your pre-renal, where it is whereas it is going to be more than 2% in case of renal AKI. Okay, coming on to novel biomarkers. Okay, some biomarkers are going to be there. Okay, some biomarkers are going to be there. Okay, so what all biomarkers are going to be there? Like you have got, okay, TIMP2, IGF, BP7. Then others, what you can do, you can have NJL, then KIM. Okay, so KIM and NJL are important, NGAL, sorry, and in दोनों के अंदर में याद रखो, if it is present, then it is surely a marker of kidney injury. If they are absent, it is a pre-renal AKI. So renal AKI versus pre-renal AKI we have discussed, right? So coming on to the last part of your nephrology. Okay, so quickly tell me, which is this pattern of injury? Hanji, quickly tell me, which is this pattern of deposition? What is the pattern of deposits? Hanji, quickly tell me, what is the pattern of deposit? So it's a granular pattern, beta. It is a granular pattern. Okay, and most oftenly I've seen students confusing between these two. Actually, remember, granular pattern says that it is a post-pharyngitic cause of glomerulonephritis. It is a post-pharyngitic cause of glomerulonephritis. Okay, yes. So post-pharyngitic cause of glomerulonephritis. So I know this. So okay, beta, quickly tell me about the Burgers versus PSGN. Burgers is IgA nephropathy. Okay, also called as Burgers disease. Okay, and then you have got PSGN. Beta, please remember, it is not Burgers. Okay, Burgers नहीं है, ये Burgers है. Okay, it is. तो Burgers क्या होता है? Thromboangiitis obliterans. That is a आर्टीरियल डिजीज. दिस इज बर्जर्स. तो प्लीज आंखें खोल के एग्जाम दिया करो. आप लोग गलती कर देते हो, वो ब्यूजर्स पूछते हैं, आप बर्जर्स देख लेते हो. ठीक है, सो प्लीज कीप इट इन माइंड. ओके, ये गलती बहुत करते हो बेटा. देखो, अगर आपको एग्जामिनर दे रहा है, लाइक एज है 20 to 30, अगर वो मेल, अच्छा देखो, बी से बर्जर, बी से बाय, बाय मीन्स 2, 2 मीन्स 20. ठीक है, तो एक तो ये याद रखना, 20 to 30. ओके, मेल प्रिडोमिनेंट. ओके, ब्रदर, मेल फीमेल दोनों, वो आप छोड़ भी सकते हो. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देखो 2 से पहले क्या आएगा? 1 आएगा. ठीक है,
So it takes only 1 week of time to develop this, whereas PSGN is going to take approximately 1 to 3 weeks. So this is very important. अगर एक हफ्ते का history दिया हुआ है, तो it's burgess, it is not PSGN. You have to understand, बहुत important चीज. Although features यहाँ पर nephrotic syndrome जैसे features वो लोग देते हैं आप लोगों को, क्योंकि it is just like 5 to 15 years, तो बच्चों में होता है. ठीक है, ये बच्चों में होता है. PSGN. So P for pediatric. So please remember, it is going to happen in pediatric, and P से ही, because it's a Hinglish session. So mnemonic है 15, तो 15 साल के बच्चों तक में ये हो जाता है. So presentation is going to be just like a nephrotic. तो nephrotic वही होता है बच्चे जो बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में होता है. So this is how you have to remember. Okay, and once you will look on to serology, so you will see, because it's IgA nephropathy, so we will have IgA, amount of IgA will be increased, and similarly if we see serology here, so you will have what? Anti-DNase antibody. Okay, anti-DNase antibody, and of course ASO titer is also going to be positive. ASO titer is also going to be positive. So what is the treatment? Please remember, IgA, A is automatically corrected. Okay, so you just need to reassure the patient, automatically correction is going to be there. And in the treatment of your PSGN, you will have penicillin as the treatment. Penicillin as the treatment. So this is important thing. Coming on to rheumatology, and let's discuss about the inflammatory myopathy. Beta, just give me like 15-20 minutes more and we are good to go for that. Okay, we are good to go to finish up these things. Okay, चलो. So देखो, inflammatory myopathy में अगर आप लोगों को history दे रखा है that there is rash. Okay, if there is rash which is going to be there, then you have to check. If it is rash which is going to be present, then of course only and only one diagnosis. This is dermato, because rash is there, so it is going to be dermatomyositis. Myositis, that means muscles are also going to be involved. So dermato and myositis. Dermato and myositis is something which you have to understand. This is dermatomyositis. If the rash is going to be absent, it is not dermatomyositis. We will have to see which muscles are involved. It is the proximal muscle which is involved, or is it the distal muscle which is involved? So if it is proximal muscle, then P for P, remember, polymyositis is going to be there. Polymyositis. All rheumatological conditions are most commonly seen in females only. Okay. And if distal are involved, this is called as DI. I for inclusion body myositis. Inclusion body myositis. यानी अगर मसल्स डिस्टली दर्द कर रही हैं, लाइक हाथ की मसल्स, पैर की मसल्स, so then it is going to be inflammatory myopathy distal, and that is inclusion body myositis. So see here, I have given you 3-4 things. So chalo jaldi se batao, what is this called as? Rash around the eye. So this is, we are talking about dermatomyositis now. Dermatomyositis. हाँ जी, dermatomyositis के features बताओ जल्दी से बच्चे. What is this? Yes, which rash? हाँ जी, which rash? Which is this rash? Heliotropic. This is called as heliotropic rash. हाँ बच्चे ये बताओ, what is this? Yes, what is this? This is dash rash. Mind you, this is the most specific finding. ये कौन सी फाइंडिंग है बेटा? मोस्ट स्पेसिफिक फाइंडिंग. विच ग्रॉटिन रैश. ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी द ग्रॉटिन्स रैश. ओके, हाँ जी, बाकी के फीचर्स दिखा देता हूँ बेटा. देखो, दिस इज हीलियोट्रोपिक, जो आईज के पास होते हैं, आई हैव टोल्ड यू. देन मलार रैश इज गोइंग टू बी देयर ऑन द फेस. देन in the front you can see this is the V sign, and on back side, as if some women is wearing the shawl, so this is called as shawl sign. So weakness, if you talk about, so if there is a shoulder girdle weakness, then you will have a arm raise issue. But if it is a pelvic girdle problem, then the child and then the female will not be able to climb the stairs properly. Okay, so dermatomyositis में मुझे बस आप लोगों को ये बताना है that sometimes it is associated with malignancy. Okay, sometimes this is associated with malignancy, so we have to give the treatment very quickly. Okay, and what is the gold standard? हाँ जी, what is the gold standard test? चल बच्चे जल्दी जल्दी बता दो, what is the gold standard test? Gold standard test बताओ.
मायोसाइटिस का गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट बताएंगे जल्दी से? बायोप्सी। यस बच्चे, वेरी गुड। एनोनिमस आल्सो सेज बायोप्सी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बच्चे, कमिंग ऑन टू दिस प्रॉब्लम ऑफ गाउट। ठीक है, सो गाउट क्या होता है? हाँ जी, गाउट एवरीबडी नोज। नाउ समथिंग आई होप यू ऑल ऑफ यू नो दैट दिस इज अ गाउट इज अ क्रिस्टल इंड्यूस्ड आर्थ्रोपैथी, है ना? क्रिस्टल इंड्यूस्ड आर्थ्रोपैथी है। ठीक है, that means your bones are going to get damaged, so crystal induced arthropathy, or I think crystal induced arthritis I should say। ठीक है, चलिए कौन से क्रिस्टल होते हैं? सर मैंने मेडिसिन नहीं किया है, ये सफिशिएंट है क्या? बच्चे ये तो छोड़ के जाओगे तो सारे ही आंसर गलत करोगे, एटलीस्ट ये तो देख के जाओ ही जाओ। ठीक है, एटलीस्ट इतना तो करो ही करो। हाँ जी बच्चे, तो क्रिस्टल इंड्यूस्ड आर्थराइटिस, क्विकली टेल मी विच क्रिस्टल, विच क्रिस्टल्स? Monosodium urate crystals, monosodium urate crystals, monosodium urate crystals are going to be there। हाँ जी, monosodium urate crystals, they will have which shape crystal? Needle shaped crystals। ठीक है, needle shaped monosodium urate crystals are going to be there। ठीक है, okay, so what is the etiology? हाँ जी, what is the most common etiology? क्या cause होता है gout का? Most common etiology is going to be what? It is going to be your hyperuricemia, hyperuricemia because of, yes, because of decreased renal excretion of, yes, decreased renal excretion of urea, uric acid। Some drugs are also there। ठीक है, some drugs are also going to be there like prozenamide, prozenamide। और बच्चे बियर पीते हैं जो बच्चे, हाँ, उनको भी गाउट हो सकता है। ओके, गाउट हो सकता है। चलो अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। वेरी गुड। अच्छा, अब मैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों को बता रहा हूँ जिसपे आपके पास में क्वेश्चन आया हुआ है। विच इज द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर और विच इज द फर्स्ट क्लिनिकल फीचर यू विल गेट? हाँ जी, विच विल बी द, विच विल बी द फर्स्ट क्लिनिकल फीचर और द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर? हाँ जी, चलो मुझे बताओ, साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट, कौन सी साइट इन्वॉल्व होती है? सो इट इज अ, हाँ जी, कौन सा जॉइंट इन्वॉल्व होता है? जल्दी जल्दी से बता दो। फर्स्ट जॉइंट इन्वॉल्व। एंड व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस? मेटा, वेरी गुड, मेटा लिख दिया बच्चे, वेरी गुड। फर्स्ट एमटीपी, मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट। व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस? हाँ जी, व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज पोलराइजिंग माइक्रोस्कोपी। ओके, बेटा देख लो कितने इजी इजी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और वहां पर भी बच्चे गलत करते हैं। ठीक है, तो ये जो एकदम सिंपल चीजें हैं बच्चे, ये तो बिल्कुल हमें गलत करनी ही नहीं है। ठीक है, ये तो हम लोगों को गलत करनी ही नहीं है। एंड पोलराइजिंग माइक्रोस्कोपी इज गोइंग टू शो व्हाट? नेगेटिव डिस्फरेंजेंस, सो यू कैन रिमेंबर इट लाइक नेगेटिव। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि गाउट में दिस इज अ नेगेटिव disference which is going to be there। if it is a, if it is a positive disference, then it is going to be what? That is going to be the pseudo gout। ठीक है, वो फिर वो pseudo gout हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, what is the treatment for acute attack? हाँ जी, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर acute attack बताएंगे फार्मैक वाले बच्चे। यस, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर acute attack, क्विकली टेल मी बच्चे, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर acute attack क्या होगा बेटा? जल्दी बताओ। एंड फर्स्ट लाइन थेरेपी, फर्स्ट लाइन थेरेपी इंडोमिथासिन लिखा है एक बच्चे ने। बेटा वेरी गुड, वी कैन गिव एनसाइड्स। ओके, वी कैन गिव कॉल्चिसिन आल्सो। ओके, एंड यस, फर्स्ट लाइन थेरेपी क्या होगा? एलोप्यूरिनॉल। वेरी गुड, सो फर्स्ट लाइन थेरेपी इज गोइंग टू बी एलोप्यूरिनॉल। एलोप्यूरिनॉल is going to be the first, okay, first line। if the case is refractory case, okay, then we can add the other drugs like pegloticase also। ठीक है, then we can add the other drugs like pegloticase also। okay, then we can add the other drugs like pegloticase as well। okay, coming on to, बस दो तीन स्लाइड्स रह गई बेटा, only 2-3 slides are left। चलो बेटा, सिक्का सिंड्रोम, क्विकली टेल मी, सिक्का सिंड्रोम आल्सो नोन एज, हाँ जी, सिक्का सिंड्रोम आल्सो नोन एज, हाँ जी, सिक्का सिंड्रोम आल्सो कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, हाँ जी, also called as Sjogren syndrome। Very good, Sjogren syndrome, very good, 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 that is also called as Sjogren syndrome। coming on to clinical features, हाँ बेटा जल्दी जल्दी बताओ, what are the clinical features? yes, characteristic features, clinical features, xerostomia, that means dry mouth, and xerophthalmia,
xerophthalmia and xerophthalmia. This is going to be very good. Dryness of eyes and dryness of mouth. Why it is going to be there? Because there is a T cells which are going to come. So remember, PQRST, S and T come very close. So Sicca syndrome, T cell. Okay. So T cells are going to come. They are going to infiltrate your mouth. They are going to infiltrate your eyes. Okay. ठीक है. So mouth भी खराब हो जाएगा, eyes भी जो है वो खराब हो जाती हैं. ठीक है. So mouth खराब हो जाएगा मतलब basically it is going to infiltrate your salivary gland. Eyes खराब हो जाएंगे मतलब basically they are going to come and occupy your lacrimal gland. ठीक है. Lacrimal gland. So what is going to be the treatment? So this is going to be the treatment. Like if there is first of all investigation. So what investigations you will do? Shermer's test you will do to in order to see the tears. Okay, or you can see the rose bengal dye test as well. Okay, rose bengal dye test as well. Okay, so what is the treatment? Of course is going to be what? Artificial tears. Okay, artificial tears is something which we are supposed to give to this patient. Coming on to the last second topic, that is going to be large vessel vasculitis. So large vessel vasculitis is going to be giant cell arteritis as well as Takayasu syndrome. So giant cell arteritis. Of course, it's going to be giant, but from giant, what I can remember is in giant age group, like 50 years of the age group. Okay, 50 years of the age group, we will give what? 50 years age group people, generally the females, the postmenopausal females are somebody who are going to develop this giant cell arteritis. Giant cell arteritis. This is again a giant, has got T letter, so it is a T cell mediated disease, and it is going to have what? This is going to have a giant cell granuloma as well. Okay, giant cell granuloma as well. ठीक है, समझ में आ गया? Yes. So now quickly tell me, yes, which is the most common artery involved? Most common artery, सब बच्चे फटाफट लिख रहे हैं, temporal artery. Okay, temporal artery. Okay, beta, this is going to be temporal artery, or I should write superficial temporal artery. So the clinical features are going to be your throbbing headache. Okay, because your temporal artery is involved. So clinical features is going to be throbbing headache is going to be there. There can be diplopia also. Okay, there can be jaw claudication as well. Okay, jaw claudication as well, and there will be paresthesia as well. Okay, paresthesia, that means on one side the face will be having loss of your, ठीक है, loss of your sensations over the face. ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया. So ये आपको पता होना चाहिए. Rarest हमने देखा, अच्छा, superficial temporal artery, branch of external carotid artery. Rarely we have seen internal carotid artery, I mean ophthalmic artery is also going to get involved, and that is the branch of what? That is the branch of internal carotid artery. Internal carotid artery. So this is again important. Now the important point is that if this artery is involved, there is a high risk of permanent blindness. There is a high risk of permanent blindness. That is why we have to start with the treatment, and we should say immediate treatment, that is going to be steroids. Okay, so immediate treatment, if somebody asks you, this is going to be steroids only. Okay, that's going to be what? That's going to be steroid. ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों को. ओके, एंड व्हाट इज अदर क्वेश्चंस आस्क्ड इज व्हाट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड. सो प्लीज रिमेंबर, सिंस इट इज द आर्टरी, देखो एक ये अगर आपको पता है ना, तो मोस्टली जाइंट सेल आर्टराइटिस के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेते हो. ठीक है, सो व्हाट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड? हाँ जी, what is the gold standard? So gold standard is going to be temporal artery biopsy. Takayasu is in the young age group. जो मैंने बताया था, giant मतलब old age group, Takayasu young. All the direct branches of aorta are involved. So see here, A for what? Aorta. So all the direct branches of aorta is involved. Aortic arch syndrome. What is going to be the gold standard? MR aortography. Most common vessel is Takayasu S. S for what? S and U together forms what? Subclavian artery. Okay, which artery? Subclavian artery. And this is not Tataka, this is Takayasu. So C for, you can remember, least preferred, although coronary can be there. Coronary arteries can be there. Okay, pulmonary renal syndromes. Okay, Wegener's also and Churchill's also. They are going to involve the lungs as well as kidney also.
pulmonary renal syndrome. It is having Wegener's syndrome as well as Churg-Strauss syndrome. So please understand important things. Both of them are ANCA positive. Okay, both of them are ANCA positive. Churg-Strauss also and Wegener's also. So what is going to be there? Wegener's is going to have the history. So Wegener's is going to have the history of N for nose. So nose, okay, so it is going to have which type of nose? It is going to have a saddle type of a nose, and from nose you can remember that upper respiratory tract is involved. बेटा मेरा सेशन करो, उसके बाद सारे PYQs लगा के देख लेना, आप लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा. ठीक है. So upper respiratory tract is going to get involved, and since upper respiratory tract is involved, so you can remember you will have a serous otitis media in the ear. You can have the sinusitis also. ठीक है. Sinusitis also as well as sinusitis also as well as your PYTs पढ़ो. तो हमारा सेशन देखो आज का और कल का, और उसके बाद तुम अपना PYQs करो. तो यस, पक्का सिलेक्शन हो जाएगा. डोंट वरी एट ऑल. ठीक है, आप मेरे पे विश्वास कर सकते हो बहुत आसानी से. ठीक है. नेक्स्ट, लंग्स में क्या दिखेंगे? मल्टीपल कैविटीज विद द एब्सेस. सो सी दिस G, the G is and C look very similar. So from C you can remember cavities. So there will be multiple lung cavities which are going to be there. Okay. So there will be multiple lung cavities which are going to be there in Wegener's granulomatosis. Okay, Wegener's granulomatosis. Okay. Then other things, please remember that you will have the rashes also. So Wegener's, okay, Wegener's has got this R now. Okay, so this is R. अभी इसको नीचे कैसे लिखे हैं? चलो यहाँ से लिखे आते हैं. So this is going to be R. So there is going to be rash on the legs, on the buttocks. Okay, there's going to be rash on the legs and on the buttocks is going to be there. Okay, and Wegener's has got this E also. So what is this E? इसको भी हम लोगों को नीचे लेके आना है, तो इसको ऐसे लेके आते हैं. ठीक है, this is E. Okay, it is important, this E for eye. So it is going to have what? It is going to have uveitis. So there is a history of uveitis as well in case of Wegener's granulomatosis as well. Okay, and remember the drug of choice in this case is going to be cyclophosphamide. Drug of choice is going to be what? It's going to be cyclophosphamide. And one important thing, please remember anti-PR3, anti-DR3 antibodies are going to be there. ठीक है, anti-DR3 antibodies. So C क्या होता है? C is actually the third letter, right? So since C is the third letter, so remember anti-DR3 antibodies are going to be there, right? You got it? Great, great, बच्चे, great, great, great. But the problem in Wegener's is going to be W. What is W? W is worst prognosis. Okay, W is what? W is worst prognosis. Okay, worst prognosis. Coming on to Churg-Strauss. So please remember Churg-Strauss is going to be okay. So can you do you see, like if you visit some village, किसी गांव वगैरह में जाओगे, तो there is straw, there is husk, है ना? ये सारी चीजें जो हैं वो तुम्हें मिलेंगी. And from Churg-Strauss you can remember the straw, husk, and from this you can remember what? You can remember the your allergy. Okay, they can cause allergy. So it can cause allergic rhinitis as well. ठीक है, allergic rhinitis as well, and A for allergic rhinitis, A for asthma. So asthma can also develop. Okay, asthma can also develop. So rashes here were on the legs, but यहाँ पर जो rashes होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं? There are generalized rashes in case of Churg-Strauss syndrome, and yeah, anti-DR3 था. In Churg-Strauss, please remember we have got anti-MPO antibody. Anti-MPO antibody. Okay, so please remember anti-MPO antibody is going to be there. ठीक है, तो देखो जैसे हम लोग चग करते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, जो लोग दारू वारू पीते हैं उनको पता होगा, चग करो चग करो चग करो. तो चग करो मतलब मुन्ना सारी दारू पियो पियो पियो. ठीक है, so MPO, anti-MPO is going to be there, and the drug of choice is going to be from Strauss. You can remember from Strauss, you can remember S for steroids is going to be the drug of choice. Steroids is going to be what? Steroids is going to be the drug of choice. Okay, and yes, prognosis wise, if you see, this is having a worse prognosis. So prognosis in Churg-Strauss is comparatively favorable. So we will have a favorable prognosis. Okay, favorable prognosis is going to be there. ठीक है, चलो बच्चे. So first of all, test for cerebellar damage. अगर हम लोग कुछ tests की बात करें,
So please understand there are two things. One is something which is called as dysdiacokinesia. Okay, so dysdiacokinesia. Okay, dysdiacokinesia. Okay, and the other test is called as finger to nose test. Okay, so finger to nose test, and then next test is going to be your dysdiacokinesia. So this movement, okay, this movement is something which we call it as dysdiacokinesia. Okay, so dysdiacokinesia is this movement. So repeated supination and pronation. Okay, so earlier I think in your FMGE 2019-20 they asked this question about dysdiacokinesia and the finger to nose test. So they asked, like, by giving you the history, and then they ask which of the following is going to be a helpful test. So dysdiacokinesia and finger to nose test, both of them are going to be important test for what? Important test for your cerebellar damage. Okay, because cerebellar damage. Okay, coming on to the next thing. Next thing is going to be your GTCS. So there are 4-5 things that you have to understand about the GTCS. So what is GTCS? G for generalized. Okay, so generalized means like a lot. Not a focus of brain is involved, but the entire brain is involved. That is generalized. Then tonic. Tonic का क्या मतलब होता है? So tonic means that the what I should say. Tonic matlab the tone of the body is going to get increased. Okay, the tone of the body is going to be increased. Okay, so this is called as tonic scissors. And what do you mean by clonic? What is clonic? So clonic का मतलब होता है continuous jerky movement. Okay, continuous jerky movements. A lot of jerks will be there, and because of these jerks, of course, see, inside the body also there is a churning movement. There's a movement which is going to be there. So there will be, because of these movements of muscle, there will be frothing which is going to take place. Okay, so there will be froth also that's going to come out from this. Okay, so frothing is going to be there, continuous jerky movement is going to be there. That is called as clonic. And what do you mean by tonic? So tonic means that there will be increased posture. Okay, increased posture. Okay, now tell me one question for you guys. If I tell you about decorticate rigidity, okay, if I mention this word decorticate rigidity, what do you understand by this? So option A is arms into flexion. Okay, option A is arms into flexion. Option B is arms into extension. Okay, option C is legs into extension, and option D is both A and C. Yes. Tell me the right answer quickly. First option देखते हैं और फटाफट आंसर कर देते हैं. But you have to see the next thing also. Can you see legs into extension? Yes, this is also a feature of decorticate rigidity. So both A and C is going to be the answer. This is D. तो हमें ऐसे नहीं करना, फटाफट फर्स्ट ऑप्शन देख करके उसको टिक नहीं करना. We have to go for all the options. ठीक है? And what is this S? So S, remember, S stands for sleepy. Okay, S stands for sleepy. Now what do you mean by this sleepy? So S stands for sleepy. So what is sleepy? Sleepy means post-ictal. Now whenever you will have a word ictal, so ictal का मतलब होता है seizure. Okay, ictal का मतलब होता है seizure. So post-ictal, that means seizure के बाद you are going to have a weakness. Okay, you are going to have what? You are going to have a weakness, and this weakness, बच्चे, is called as post-ictal cry. Okay, it is called as what? It is called as this weakness is actually called as what? This is called as post-ictal cry. Okay, I'm writing it, post-ictal cry. Okay, post-ictal cry is going to be there. Okay, loss of consciousness also you can say, but rather than loss of consciousness, you should write it as weakness. ठीक है, दिस इज वीकनेस. ओके, राइट, समझ में आ गया? दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. ठीक है, समझ में आ गया? दैट्स ग्रेट. सो ये सारी चीजें जो है हमें बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए, एंड दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट इक्टल क्राई. एंड ऑफ कोर्स दिस वीकनेस इज गिवन अनदर नेम दैट इज कॉल्ड एज टॉर्ड्स पाल्सी. ठीक है, दिस इज गिवन अनदर नेम दैट इज कॉल्ड एज टॉर्ड्स पाल्सी. ठीक है, अनदर नेम इज टॉर्ड्स पाल्सी. राइट, so ये GTCS, इसके mnemonic से you can easily remember about the generalized tonic seizures. Coming on to Parkinson's now. ठीक है, so Parkinson's में you know very well that there will be a bend posture,
or stoop posture. Okay, there will be what? There will be a bend posture that is going to be there. Okay, remember there will be a gait. Which gait is there of Parkinson's? This is shuffling gait. Okay, which gait is there? That is shuffling gait. Then which type of face is going to be there? Mask like face. Okay, which face is going to be there? Mask like face. Then there will be akinesia, that means less movement or lack of movement, akinesia. Then there is going to be rigidity. Now the question which they ask is which type of rigidity is going to be there. So rigidity is nothing but a cogwheel type of rigidity. So I hope that you all know this type of a device which is called as cogwheel, है ना? ये I hope आप लोगों ने देखा होगा. This is called as cogwheel. ठीक है? So this is called as cogwheel. So cogwheel type of rigidity is going to be there. And T for बच्चे tremors. Okay, T for tremors. So what is tremors? So please remember, tremors are the pin rolling movement. Okay, so pin rolling movement that they are going to give in the question. Pin rolling movement. Okay, cigarette rolling or something like that. Pin rolling movement. So the mnemonic to remember is B and SMART, smart. Okay, so the mnemonic is be smart. Okay, if you are having Parkinson's, so you have to be smart. Okay, you have to be what? You will have to be smart. Now quickly tell me which bodies are seen in Parkinsonism. Okay, bodies which are seen in Parkinsonism, बताओ जल्दी से. Lewy body. ठीक है, Lewy body. So how to remember? Remember, lawn and park are the same things. Okay, lawn and park are the same things. Now you have got something more than that, that is called as Parkinson's plus disease. Now what do you mean by Parkinson plus disease? Parkinson plus disease मतलब कि पार्किंसन तो है ही है. अंडरस्टैंड दिस, पार्किंसन तो होगा ही होगा, बट उसके साथ में और कुछ भी होगा. जैसे पार्किंसन प्लस डिजीज में फर्स्ट एग्जांपल इज लुई बॉडी डिमेंशिया. So Lewy body dementia, as the name suggests, first of all you will have Lewy body. Okay, Lewy body is going to be there. The second thing is going to be dementia, and remember the third thing is visual hallucination. So Lewy आ गया, ठीक है, इसमें word आ गया hallucinations, Lewy. So these are the three things which you have to remember when you study about Lewy body dementia. So remember Lewy body dementia, first of all Lewy body is going to be there, dementia is dementia itself, and visual hallucinations. Next is going to be progressive supranuclear palsy. Progressive supranuclear palsy. It is also called as Steele-Richardson syndrome. Steele-Richardson syndrome. So progressive means P, supranuclear means S, and P is there. So the mnemonic is also PSP. So P for S for P for. So P for the posture is going to be extended. Okay, the posture is going to be extended. What is S? S for there is going to be stiffness. S for there is going to be stiffness. And what is P? P for poor gaze. Okay, so because the poor gaze is there, the person is not able to see the floor properly, and that is why the downward gaze is actually, because the downward gaze is not proper, that's why the child or the person, mostly the adult, is not able to see the floor, and there will be history of frequent falls. So if they give you the history of frequent falls with stiffness and extended posture, it is PSP, and from this S you can remember one more S, that is, it is also called as Steele-Richardson syndrome. Coming on to multiple system atrophy. So multiple system atrophy, also called as MSA, is of two types, A and C. So C is having cerebellar signs, whereas MSA is also called as shy dagger syndrome. So only these 2 points are the most important points. So just remember, MSA A is shy dagger syndrome, and MSC C is going to be what? Is going to have the cerebellar signs. Okay, cerebellar sign. Clear? Good. If you are suspecting meningitis, now this is next topic of discussion. Okay, if you are suspecting meningitis, so what to look for? So because it is meningitis, itis is going to be there, so fever is going to be there. Then because it is involving the head and neck region, so of course headache is going to be there, and head and neck region, that means your neck stiffness is going to come. Okay, so fever is generalized symptom. Then because there is head involvement, so there is going to be headache, and because there is neck stiffness, there is going to be what? There is going, I mean, because the neck area is involved, that is nuchal rigidity or neck stiffness. Nuchal rigidity or neck stiffness is going to be there. Coming on to, yeah, if you suspect this meningitis, what is going to be the treatment? So I always teach you
I always teach students like this, like there are three age groups. One is adolescent age group, then you have got adult age group, and then you have got elderly age group. Okay, you have got adolescent age group, adult age group, and elderly age group. Coming on to the treatment. So what you will give in adolescence, quickly tell me. So bache, remember, elderly people have a risk of CVA. What is CVA? Cerebrovascular accident or stroke, है ना? So elderly लोगों में stroke जो है वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है. So what you have to understand that in elders we have got three things, three therapies, C, V, and A. So this is my mnemonic, and this mnemonic you are supposed to remember. What is CVA? C for ceftriaxone. Okay, C for ceftriaxone, V for vancomycin, and what is A? A for ampicillin. Okay, A for ampicillin. So if you can remember by of this elder, now adults and adolescents are easy. Adolescents will only have C, adults will have C and V, and elderly is going to have C, then V, then A. Okay, ceftriaxone, vancomycin, and ampicillin. All these three things are going to come. Okay, why the therapies are different? Because remember that you just remember that this C and V together, they are effective against your pneumococcus. Okay, they are effective against your pneumococcus, and your ampicillin is something that is effective against listeria. So you can remember my name. My name is Parv. So first of all, P you should remember, and then L you should remember. So it's very easy to understand. This is P, this is L. Okay, so P for pneumococcus हो गया और आपका L for listeria हो गया. तो अब आपको समझ में आ गया कि adults के अंदर में, because we are giving C and V, so it is who is the culprit? So it is the pneumococcus. Whereas in adolescence, so adolescence क्या होता है? सबसे छोटे होते हैं, तो इसको किसकी जरूरत होती है? माँ की जरूरत होती है. So माँ मतलब M, M मतलब meningococcus. Okay, meningococcus, Neisseria meningitidis. Okay, Neisseria meningitidis. Okay, so ये तो हो गया empirical treatment. So whatever I've written till now is nothing but a empirical treatment. Like you don't need any kind of any sort of what I should say, any cultural evidence or something to remember them. But remember, if it is not effective, okay, if it is not affected, so we have to look out for the red flag signs. Okay, next you have to look for the red flag sign. So red flag sign means, the mnemonic to remember the red flag sign is fails. Okay, so what is fails? What is fails? So F for focal neurological deficit. So if there is a focal neurological deficit, then we can suspect there is a red flag sign. A for if the mental status is altered. So altered mental status. Okay, and altered mental status. And I for, please remember, I is immunocompromised. Okay, immunocompromised state. Then what is L and S? L for any lesion in the brain. Okay, any lesion in the brain, and S is something seizure. Okay, so then you have to understand, like if the meningitis is having any of these things, as in बस इतना याद करो कि meningitis के साथ अगर कुछ भी और दे रखा है, okay, anything else, then that has to be considered as a red flag sign, and we have to start with the other treatments as well. So focal neurological deficits, altered mental status, then immunocompromised, then L for your lesion in the brain, and S for your seizure. So anything, if it is happening, if it is there, if the red flag signs are present, yes, then what we have to do? We have to do a neuroimaging. Okay, we have to do what? We have to do a neuroimaging, so as to see like what is happening, why these lesions and why this stuff is coming into the play. So we have to do neuroimaging. So neuroimaging, if it is normal, okay, fine. If neuroimaging is normal, okay, fine. Okay. But for example, if neuroimaging shows a space occupying lesion, okay, a space occupying lesion, then what you have to do? You have to do, yes, बताओ, अगर space occupying lesion है तो what you are supposed to do? We have to treat the cause. ठीक है, so if there is any space occupying lesion, we have to treat the cause. Okay, so already meningitis is responsible for increase in the pressure of the brain, and then again if there is a CSF, space occupying lesion, then we have to treat the cause. Okay, and remember, if there are no red flag signs, okay, if there are no red flag signs, then what we are supposed to do? If there are no red flag signs, then we can obtain a lumbar puncture. Okay, obtain a lumbar puncture
see who is the culprit and start the medications accordingly. Okay, so I hope that with all my mnemonics the things were easy and very much easy for you to understand. Coming on to the next important part, like the chart which we prepare. So remember, the chart says like there are three types of predominantly of meningitis. So what you have to understand, first of all, check out the glucose level. Okay, CSF glucose level. So this I'm telling you, if you are obtaining a lumbar puncture, then how to proceed. So just obtain a CSF glucose, and if CSF glucose is like more than 40 or less than 40, sorry, less than 40 and then more than 40. So if the glucose is good, of course, bacteria is not at the cause. At the sorry, if the glucose is less, that means what? That means what? The bacteria ate all the glucose. ठीक है, बैक्टीरिया ने सारा का सारा जो ग्लूकोज था वो खा लिया. So there can be two bacteria. One, there can be tubercular meningitis. Other, there can be normal bacterial meningitis. So what to do? So check for the cells. In tubercular meningitis, lymphocytes are going to be predominant, whereas in bacteria, you are going to have what? Neutrophil predominant. Okay. So neutrophil predominant in bacteria and lymphocyte in tubercular. So remember, lymphocyte T is coming. So T for what? T for your tuberculosis. Okay, T for what? T for tuberculosis. Neutrophils are double L is coming. So here also L is coming, bacterial. Okay, so this is how you have to remember. So what to do? How to confirm it? So confirmation के लिए tubercular meningitis has to be taken care on culture, has to be seen on PCR. But one lab test which they have asked, ADA test. Okay, so ADA testing is something which is done if we are going to check for the tubercular meningitis, but on bacterial, so listeria and all these things are there, so we can do latex agglutination. Okay, latex agglutination. Okay, latex agglutination test is something which we can do. Yes, of course, beta CB-NAT can be done if there is a tuberculosis infection. Okay, so latex agglutination we can do, culture we can do, staining we can do, and most probably which is going to be the culprit. So culprit is going to be what? The Neisseria can be the culprit. Okay, so Neisseria, I have told you, meningococcus, you give ceftriaxone. So in this case, start the ceftriaxone. Okay, start the ceftriaxone. But in case of tuberculosis, what you have to understand? Yes, what you have to understand if it is a tuberculosis infection. Okay, first of all, I think I should write start the therapy accordingly. Okay, start therapy, because we have got three different therapies. And if this is tubercular meningitis, please understand, first of all, we start steroid. Okay, first of all, we will start steroid and then we will give anti-tubercular drug. Now, the steroids are going to decrease the intracranial pressure, and then ATT can better penetrate. Okay, then ATT can better penetrate. Very good, beta. Very good, Nilanjan. Good, बच्चे. ठीक है, चलो. I'm very happy with the students who always give replies in the comment section. चाहे गलत दो चाहे सही दो, but at least you should be able to give the replies in the chat box. गलती भी करोगे तो then I can, in fact, मैं थोड़ा सा ध्यान रख करके I can even teach you that beta you are going wrong. And once I will say that बच्चे you have done a mistake, you will never forget in your lifetime. So if it is more than 40 CSF glucose, next thing we have to keep in mind is lymphocyte count. ठीक है, lymphocyte. So if the lymphocyte count is raised, then we can suspect HSV. Okay, HSV, herpes simplex virus. And now, my dear students, will tell what is the treatment of herpes simplex virus. Okay, again, for investigations you have to do PCR on CSF sample, etc. ठीक है, MRI we can do, but can tell me what is the treatment? ये जल्दी से इसका ट्रीटमेंट बताओ. एंड द देखते हैं कौन सबसे पहले सही आंसर देता है. मोहम्मद अरशद सेज पेनिसिलिन. नो बच्चे, व्हाई विल यू गिव पेनिसिलिन इन एचएसवी? यस, ट्रीटमेंट बताओ, चाहे चैट जीपीटी से देख के बताओ, आई डोंट हैव एनी इशू. ए साइक्लोवीर. कमिंग ऑन टू अमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस. सो अमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस क्या चीज होता है, क्या नहीं होता है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. एक क्वेश्चन इससे आएगा, उस एक क्वेश्चन को कैसे क्रैक करना है मैं वो आपको तैयारी करवा देता हूँ. ठीक है, so just remember now how to deal with this amyotrophic lateral sclerosis. So you have to remember a mnemonic that says ice bucket. So what is this ice bucket? So I for it is inherited. Okay, I for it is inherited, and since it is inherited, they ask about gene as well. So C9ORF gene. Okay, C9ORF
gene is something that is really important, so please don't forget this C9orf gene. किसमें देख रहे हैं हम लोग? अमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस में देख रहे हैं, ठीक है। सो सी से क्या होता है? देखो इसमें भी प्रॉब्लम क्या है, देयर इज अ कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट इन्वॉल्व, corticospinal tract involvement is going to be there. Okay, I'm really sorry beta for these notifications. So corticospinal tract involvement is going to be there. Okay, corticospinal tract involvement is going to be there. Please remember, eyes are going to be normal. Okay, eyes are going to be normal. Okay, eyes are going to be normal. Bladder is also going to be normal. Eyes are normal, bladder is normal, okay, in both these cases. So what is U? Please remember, it has got UMN plus LMN lesion. Okay, it has got UMN lesions also, it has got LMN lesions also. Okay, so this is the characteristic features of amyotrophic lateral sclerosis, that it has got problem in corticospinal tract, it has got problem in UMN and LMN lesions as well. And then you have to understand that cognition is also intact. Okay, cognition is also intact. Cognition is intact. Chaitanya Bhatt says, sir, please send PDF. But I'll surely share the PDF. Just the constraint is that we want approximately 200 likes on this video, and then the faculty will be allowed to share the PDF with the students. So आपके भी हाथ बंधे हुए हैं, मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं, ठीक है? So just let's wait. I think the number of likes are very less. So I just request you all to do that. Okay. Coming on to K. So K means cannot talk. So this is important for K, that is cannot talk. Okay, so they have got what? Dysarthria. Why dysarthria? Because the muscles are very weak. Okay, the muscles are very weak. So this is something which you have to remember, cannot talk, and dysarthria is going to be there. E, again cannot eat also. So eating is also hampered. Okay, eating is also hampered, so this is called as cannot eat as well. So from this you can remember the cannot talk and cannot eat. And T is treatment. So what is going to be the treatment? The treatment is going to be your two drugs. One is called as riluzole and next is edaravone. So ये दोनों की दोनों important है, riluzole and edaravone. Okay, riluzole and edaravone. So please remember, अगर आप पूरा ice bucket नहीं याद कर सकते, so just try and remember this small mnemonic. This is called as cure. ठीक है, cure at least आप इतना याद रख लेना. So this is going to be more than sufficient. So what is C? C for corticospinal tract involvement. Corticospinal tract involvement and C9orf gene. Then what is K? Of course, cannot talk, dysarthria, and eating is also impaired. Then R for riluzole and E for edaravone. So these are two simple mnemonics to remember the amyotrophic lateral sclerosis. Coming on to Huntington's chorea. ठीक है, कमिंग ऑन टू हंटिंगटन्स कोरिया. सो हंटिंगटन्स कोरिया क्या होता है? चलो जल्दी से बताओ, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है या ऑटोसोमल रिसेसिव होता है? क्विकली टेल मी, इज इट ऑटोसोमल डोमिनेंट और इज इट ऑटोसोमल रिसेसिव? So a dominant hunter hunts, dances. A dominant hunter hunts, dances on date, okay, and puts animal in cage. So what is this? A dominant hunter. So what do you mean by dominant hunter? So dominant means it is autosomal dominant. Okay, it is autosomal dominant. First thing is this: a dominant hunter is autosomal dominant. Dusra, being dominant is a behavior. Okay, it's a behavior. So please remember, in Huntington's chorea, the behavior is also altered. There is behavioral abnormalities. Hunter, of course, hunter means what? Huntington's chorea. Dances. Why anybody will dance? So dances, one means chorea, and the other thing is there is increase in dopamine. Okay, there is increase in dopamine. Okay, so it is going to what? It is going to समझ गए? It is going to, yes, dopamine बढ़ जाएगा on a date. ठीक है, on a date means what? Yes, what do you mean by this date? So date means caudate. Okay, date means caudate. So the caudate nucleus is something which is damaged, and puts animal in cage means
CAG repeats. So genetically they have asked it as CAG repeats, which is problematic. Okay, CAG repeat is going to be there. And dances, यहाँ तक आपने समझ लिया. Please remember one important thing also, that there is dementia also which is associated with Huntington's chorea. Okay, dementia also which is associated with Huntington's chorea. Okay, so remember a dominant hunter. So dominant hunter means, dominant means autosomal dominant. Hunter is Huntington's chorea. Hunts, dances. So dances means what? Chorea is dancing movement, and then you have got increased dopamine. Goes on a date. Date means chordate nucleus. Puts animal in cage. Cage is CAG. Cage is something which is having how many walls? So cage is having 4 walls. So since cage has 4 walls, this is chromosome number 4. ओके, क्रोमोसोम नंबर 4. तो बाकी सारी चीजें भी हैं बच्चे, लेकिन ये मेरी क्लास का एक जो क्या कह सकते हो नियम है, या मेरा जो एक डिजायर है वो ये है कि मैं आप लोगों को उतना ही पढ़ाऊं जितना जो है ना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है. क्योंकि हम लोग ज्यादा पढ़ सकते हैं, ज्यादा पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर अगर हमें याद ही नहीं रहेगा एग्जाम के टाइम पे तो उस चीज का कोई फायदा नहीं. ठीक है, समझ में आ गया. सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट इज हेडेक. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट हेडेक. So headache can be, so if this is there is a man. अच्छा, आप में से कितने लोग चाय पीते हो? Yes, how many of you take चाय? भिजवाऊंगा नहीं, लेकिन पूछ रहा हूँ जस्ट. ओके, निरंजन दत्ता says he drinks चाय. ओके, anybody else? तो हेडेक क्या हो सकता है? या तो यूनिलैटरल हेडेक होगा, ठीक है, यूनिलैटरल हेडेक होगा, या फिर हेडेक जो है वो बायलैटरल होता है. ठीक है, सो आइदर हेडेक इज गोइंग टू बी अ यूनिलैटरल हेडेक और इट इज गोइंग टू बी अ बायलैटरल हेडेक. सो अगर ये यूनिलैटरल हेडेक है तो हमें ना ये चेक करना है कि टच करने से बढ़ता है या नहीं. सो इफ इट इज इंक्रीजिंग ऑन टच, ठीक है, सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज द स्काल्प टेंडरनेस. ठीक है, कि स्काल्प भी जो है ना उसका टेंडर है. सो अगर ऐसा होता है बेटा, so that is actually suggestive of what? That is associated with giant cell arteritis. Okay, giant cell arteritis. क्योंकि arteritis is inflammatory, and because arteritis is inflammatory, of course any inflammation will have what? Any inflammation will have a tenderness that has to be associated with this. Okay, next important part is going to be pulsatile. Okay, next important cheese is going to be pulsatile. So if it is pulsatile or if it is not pulsatile. So if you think it is pulsatile, you have to check for the nausea. So if it is associated, देखो pulsatile में दो ही चीजें हो सकती है. pulsatile headache में दो ही चीजें हो सकती है. एक हो सकता है माइग्रेन, ठीक है, एक हो सकता है माइग्रेन, और दूसरा पल्साइटाइल कौन हो सकता है? एन्यूरिज्म. ठीक है, एन्यूरिज्म हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है? एन्यूरिज्म हो सकता है या फिर माइग्रेन हो सकता है. तो आपको पता ही है, अगर माइग्रेन होगा तो माइग्रेन इज समथिंग विच इज एसोसिएटेड विद नोशिया एंड वॉमिटिंग, whereas एन्यूरिज्म हैज नॉट टू डू विद एनीथिंग. ठीक है, एन्यूरिज्म में कोई भी आपके पास नहीं होता है. जायंट सेल में जॉ क्लॉडिकेशन होती है, बिल्कुल सही बात है, जॉ क्लॉडिकेशन. कल हम लोगों ने पढ़ा था ना जॉ क्लॉडिकेशन के बारे में, सारा डिप्लोपिया, जॉ क्लॉडिकेशन, ये सब मैंने बताया था. माइग्रेन में नोशिया, वॉमिटिंग, फोटोफोबिया, ये सारी चीजें जो है वो होना बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक है. एंड इनफैक्ट ऑडिटरी, कई लोगों को क्या बोलते हैं, साउंड से भी जो है वो इंक्रीज हो जाता है, नहीं तो परसेप्शन आने लगता है. ठीक है, so these things, so nausea, vomiting, photophobia, this is going to be on migraine. And if you are suspecting a bilateral edema, so then we can have some differentials, like you can have cluster headache. So bilateral में क्या क्या हो सकते हैं? Let's understand about bilateral. Bilateral में there can be cluster headache. Okay, then other is going to be, yes, bilateral में cluster headache हो सकता है. Other things can be papilledema. ठीक है, so papilledema can be there. Okay, cluster headache is going to be there, and one more is going to be there, that is called as tension headache. ठीक है, tension headache. फोनोफोबिया, हाँ बच्चे भाई, जैसे मैं ऑडिटरी चीज आपको बता रहा था, इट इज इन द माइग्रेन. ओके, सो बायलैटरल में इट कैन बी क्लस्टर हेडेक, पेपिलिडीमा एंड टेंशन हेडेक. सो इफ यू वांट टू नो अबाउट द क्लस्टर हेडेक, सो देखो क्लस्टर हेडेक क्या होता है. क्लस्टर में यू हैव टू सी दिस आर वर्ड. दिस आर वर्ड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज रेट्रो और बाइटल. ओके, रेट्रो और बाइटल, तो कहते हैं ना आंखों के पीछे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है. सो क्लस्टर हेडेक इज एक्चुअली the retroorbital explosive. Okay, so this E, from this E you can remember explosive. So explosive retroorbital headache, and that's also bilateral. No bache, cluster headache is a bilateral headache for sure. So just remember explosive headache, retroorbital,
is going to be what? It's going to be cluster headache. Then we have to check of the papilledema. So we have to check about the papilledema. If papilledema is going to be there, that means it is because of the increase in the intracranial tension. So the diagnosis is going to be idiopathic intracranial, yes, idiopathic intracranial hypertension. Idiopathic intracranial hypertension. And if I tell you about the tension headache, so it is a diagnosis of exclusion. Like if it is not cluster, if it is not papilledema, then it is going to be tension. बच्चे कह रहे हैं सर cluster is unilateral. नहीं बच्चे, cluster is not unilateral. Cluster means cluster ना, cluster means cluster itself. तो वो दोनों साइड ही होगा. Why it will be a unilateral headache? ठीक है. Coming on to, or if you have some tension headache is a band headache. अगर क्लस्टर को यूनिलैटरल बायलैटरल में कंफ्यूजन है, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट क्विकली सेंड मी दैट क्या बोलते हैं उसको, एक कुछ तो स्क्रीनशॉट वगैरह भेज देना. आई विल जस्ट ट्राई एंड कंफर्म एंड विल लेट यू नो. कमिंग ऑन टू द ट्रीटमेंट, तो एक किसी बच्चे ने लिखा है अबाउट द ट्रीटमेंट ऑक्सीजन, वैल्प्रोइड, वेरापामिल एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अबाउट द क्लस्टर. वेरी गुड बेटा. सो ऑक्सीजन, चलो मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके. सो टेंशन हेडेक, यू हैव टू सी टेंशन हेडेक, ठीक है, जो कि बैंड लाइक हेडेक है हमारा. ठीक है. सो टेंशन हेडेक अगर है किसी को, सो इनिशियली द ट्रीटमेंट इज गोइंग टू बी एनसेड्स. ठीक है. सो इनिशियल ट्रीटमेंट क्या होता है बेटा, एनसेड्स देते हैं हम लोग. ठीक है, इनिशियली. सो इफ देयर इज लाइक 1 एपिसोड, देन यू हैव टू गिव NSAIDs. ठीक है. rather than writing 1 episode, I should write if it is episodic. Okay, so if it is episodic means some tension episode is happening, like less than 15 days हुए हैं और ये हो रहा है, so this is NSAIDs, treated by NSAIDs. but if it is chronic, like हर बात की टेंशन हो ही जाती है, so if it is happening for more than 15 days, then we have to look out for the tricyclic antidepressants. ठीक है, tricyclic antidepressants. This is about the tension headache. Migraine, of course, if there is a acute attack, then what you will give? Migraine acute attack. हाँ जी, चलो ये बच्चे बताएंगे माइग्रेन के acute attack में क्या देते हैं, शायद हम लोग ने कल भी डिस्कस किया. एंड प्रोफाइलैक्सिस में क्या देते हैं? प्रोफाइलैक्सिस में ऑफ कोर्स there are 3-4 drugs which you should know. Anti-epileptic drugs, beta blocker is very important if it comes to this. Okay, then calcium channel blocker, tricyclic antidepressants. So this ABC is important. Okay, acute में क्या देते हैं? Triptans. Very good beta. Triptans is something which we give in the acute attack. Okay बच्चे, next is going to be about the cluster headache. Okay, cluster headache. हाँ बेटा, तो हम क्लस्टर हेडेक की बात करते हैं. तो आपने बताया है कि वी हैव टू गिव ऑक्सीजन, वी कैन गिव verapamil. Okay, so oxygen and verapamil, more than sufficient information. This is something which they are going to ask you. Coming on to the next part, this is myasthenia gravis. Okay, this is myasthenia gravis. Myasthenia gravis. ठीक है, चलो. सो हाँ, माइस्थीनिया के बारे में पढ़ लेते हैं. अच्छा चलो, कुछ एक आई थिंक या इट इज ऑटो इम्यून एंड एवरीथिंग, आई थिंक आप लोगों को पता ही है. सो मतलब मैं ऐसा बहुत ज्यादा कुछ मेरे को बताने लायक है नहीं. सो आई विल जस्ट आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस, आप मुझे बताते जाना एंड देन वी विल क्या कहते हैं, हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग आपको क्वेश्चंस के थ्रू ट्रेन कर देंगे फॉर माइस्थीनिया टॉपिक. ठीक है, समझ में आ गया? हाँ. सो यू नो दैट देयर इज एंटी कोलिन, एंटी acetylcholine receptor antibody that is going to get formed. Okay, so इसमें एक question आया था that of course one important part is going to be like it is coming from the thymus. Okay, it is going to come from thymus. So most commonly it is because of thymic hyperplasia. Okay, and thymic hyperplasia, and the rare causes is your thymoma. ठीक है, थाइमोमा. ठीक है, सो थाइमोमा के फीचर्स इन्होंने पूछे थे. ठीक है, थाइमोमा के फीचर्स दे वांटेड टू आस्क यू. सो व्हाट आर द पैरानियोप्लास्टिक फीचर्स ऑफ थाइमोमा? चलो ये जल्दी से बता दो, व्हाट आर द पैरानियोप्लास्टिक फीचर्स ऑफ थाइमोमा? एक तो हमने कल ही डिस्कस किया था, डर्मेटोमायो. यस बच्चे, हॉर्नर इज नॉट अ पैरानियोप्लास्टिक फीचर्स. ठीक है, डर्मेटोमायोसाइटिस तो हमने कल ही डिस्कस किया था. एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पूछ रहा हूँ मैं आपसे, प्योर रेड सेल एप्लेशिया. ठीक है, प्योर रेड सेल एप्लेशिया इज अ पैरानियोप्लास्टिक फीचर ऑफ थाइमोमा. यानी कि whenever they want to give you a history,
They can give you a history of pure red cell aplasia also, as well as thymoma as well. So please don't forget this. They can ask you the questions other way around as well. ठीक है, ऐसे सीधा नहीं पूछ करके ये आप लोगों को थोड़ा सा उल्टे से भी पूछ सकते हैं. आई नो दिस टॉसेस ऑफ थैल्मोप्लेजिया, ये सब आप लोगों को पता होता है. ठीक है, सो ये सब बच्चों को पता होता है. कुछ एक क्लिनिकल फीचर्स जो आप लोग भूल जाते हो. ऑफ कोर्स क्लिनिकल फीचर्स लाइक योर ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, दैट मींस टॉसिस, दैट ऑफ थैल्मोप्लेजिया, ये तो मुझे पता है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होते हैं. बट लाइक your voice also is going to get changed. So voice changes is called as mushy voice. Okay, hot potato or mushy voice. Then nasal timber is going to be there. हाँ कहाँ कर रहे हो, ऐसी करके आवाज आएगी. ठीक है, so these things are going to be there. ठीक है, so these things are going to be there. Mushy voice, nasal timber, this is something which you have to remember always. ठीक है, this is something which you have to remember always. And which is the test which we do in this myasthenia gravis? So this is going to be your edrophonium test. ठीक है, edrophonium test, or some people may call it as what, tensilon test. Okay, so tensilon test or edrophonium test is something that we do for myasthenia gravis. Okay, so this is something which has to be understood. Okay, so edrophonium test हो गया, ये हो गया. Then ice pack. ठीक है, then ice pack. So ice pack is also responsible for the improvement in your tosses. 10 से हाँ ठीक है, 10 से run. So what ice pack does? So ice pack has inhibition of acetylcholine esterase. ठीक है, ये esterase को कम कर देता है. So acetylcholine levels are going to increase. तो of course जो tosses है वो improve हो जाएगा. myasthenia gravis जो है वो improve हो जाता है. ठीक है, समझ में आ गया? वेरी गुड. सो दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है, कुछ और चीजें भी हैं बट इतना भी याद किया आपने तो चलेगा. ठीक है, सो दिस इज अ शॉर्ट इन ब्रीफ अबाउट माइस्थीनिया. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू दिस क्वेश्चन. चलो क्विकली टेल मी अबाउट दिस क्वेश्चन. विच इज दिस स्टेन एंड विच इज दिस पैथोजन? ठीक है, चलो क्विकली टेल मी अबाउट दिस क्वेश्चन. विच इज दिस स्टेन एंड विच इज दिस पैथोजन? देखते हैं सबसे पहले कौन सबसे सही आंसर देने वाला है. ओके, यू हैव गॉट हिस्ट्री ऑफ HIV एंड हिस्ट्री ऑफ मेनिंजाइटिस आल्सो. Cryptococcus is very good. Cryptococcus is the organism and stain is going to be India ink. ठीक है, India ink. ये ऐसे क्यों दिखाता है? Because this Cryptococcus has this polysaccharide capsule, and because of the presence of this polysaccharide capsule, it is going to show you appearance like this. And what is the most sensitive test? Most sensitive test for Cryptococcus? Yes, quickly tell me what is the most sensitive test for Cryptococcus? That is latex agglutination test. Okay, latex agglutination test. Okay, ठीक है, ये most sensitive test होता है. Latex agglutination test for what? For your Cryptococcus. So just remember like this: my name PARV, Parv, and LUTHRA. ठीक है, so this is my name. So P for polysaccharide containing. Okay, polysaccharide containing. ठीक है, and L for your latex agglutination test. Latex agglutination test. Now see here the picture, and they are going to give you a history, that there is history of HIV, and this CT scan will be given to you. Okay, so what so they're going to ask you, identify PCG, that is pneumocystis jirovecii. So this is pneumocystis jirovecii or Zerovici. So pneumocystis jirovecii is going to be there, and it is going to have what? It is going to have bilateral. Can you see it here? Can you see it here? So they are bilateral bilateral. See this one. ठीक है, glass को see this bilateral ground glass opacities. Bilateral ground glass opacity. So see, normally in your lung parenchyma you should have black color. ठीक है, because there is only and only air, but here you can see a lot of white color. So this white color is bilateral ground glass opacity. Bilateral ground glass opacities are going to be there. Okay, bilateral ground glass opacities is going to be there. Typically you have to remember the CD4 count in this case is less than 200. Okay, less than 200. Okay, pneumocystis, please remember pneumocystis jirovecii is having two words, one is P, one is J. So this is two words, and you can remember CD4 count is less than 200. Okay, less than 200. So what you will do, what is the investigation? Investigation is going to be
bronchoalveolar lavage, and this bronchoalveolar lavage will be stained under Gamori methenamine stain, GMS stain. Okay, and you will have what? Ping pong ball colonies, ping pong ball colonies, ping pong ball colonies are going to be there. So what is going to be the treatment? Treatment is going to be cotrimoxazole. Okay, it is going to be what? Cotrimoxazole. ठीक है, cotrimoxazole. बेटा देखो, ध्यान से मेरी एक बात समझ लेना, तुम यहाँ पर सारा याद कर लोगे. सो जेरोविका इज जस्ट लाइक जीजा जी. ठीक है, इनको जीजा जी. वैसे हमारे घर में एक सब्जी बनती है, जीजा जी आते हैं तो दो सब्जी बनती है. ठीक है, दो सब्जी बनती है. और आई डोंट नो इफ यू नो दिस और नॉट, इन राजस्थानी वी कॉल्ड खाना एज जीमड़ा. ठीक है, सो दिस इज द जीमसा स्टेन व्हिच इज गोइंग टू बी देयर. ठीक है, और जीजा जी हैं तो जीजा जी क्या करते हैं? जीजा जी बहुत सारा पैसा ले जाते हैं और हमारी क्या बचती है? वो गाना नहीं है, तो बुआ जी आएंगी, जीजा जी आएंगे तो प्यार की पुंगी बजा देंगे. ठीक है, और कौन आने वाले? दोनों आने वाले, बुआ जी भी आने वाली है, जीजा जी भी आने वाले. सो बुआ जी और जीजा जी जब आएंगे यानी कि कोट्राइमोक्साजोल, तो प्यार की, ठीक है, और दो सब्जी के साथ उनको हमने जिमाना भी है. ठीक है, और जीजा जी मतलब जीजा जी. ठीक है, याद रखना. और उनके लिए क्या अपना, वैसे आप लोग स्टील के पानी में, स्टील के बर्तन में, ग्लास में पानी पीते हैं. जीजा जी आते हैं तो हम लोग कांच के ग्लास, ठीक है, ग्लास हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, सो कमिंग ऑन टू एक कावासाकी सिंड्रोम. आई नो कावासाकी इज नॉट अ डिजीज ऑफ सीएनएस, बट ऐसा है कि हम लोग जैसे थोड़ा सा फॉर अ चेंज. सो बच्चे इसको याद करो, कावासाकी को. कावासाकी का निमोनिक होता है क्रैश एंड बर्न. ठीक है, सो व्हाट इज द निमोनिक फॉर कावासाकी? निमोनिक फॉर कावासाकी इज क्रैश एंड बर्न. ठीक है, सो क्रैश एंड बर्न जो है वो इसका निमोनिक है. सो क्रैश एंड बर्न इज क्रैश एंड देन यहाँ पर आ जाएगा बर्न. ठीक है, क्रीम भी लिख सकते हो, निमोनिक क्रैश भी लिख सकते हो, जो आपको मन करे वो आप लिख सकते हो. सी से क्या होता है बेटा? सी से होता है कंजंक्टिवाइटिस. ठीक है, सी से क्या होता है? कंजंक्टिवाइटिस. तो कंजंक्टिवाइटिस ऑफ कोर्स बायलैटरल होगा क्योंकि ये सिस्टमिक डिजीज है. नॉन, बस यहाँ पे याद रख लेना, नॉन एक्सुडेटिव, यानी कि अगर क्वेश्चन में एक्सुडेटिव लिखा है तो वो कावासाकी नहीं है. ठीक है, सो नॉन एक्सुडेटिव, नॉन प्यूरुलेंट जो है हमारा कंजंक्टिवाइटिस होना चाहिए. आर से रैश हो जाएगा. देन एडिनोपैथी, बट याद रखो एडिनोपैथी जो होती है वो एक साइड पे होती है. ठीक है, एक. ठीक है, ए से एडिनोपैथी, ए से एक साइड पे. एक साइड का मतलब क्या हो गया? दैट इट इज यूनिलैटरल. एक साइड का मतलब क्या होगा? दैट इट इज गोइंग टू बी यूनिलैटरल. ठीक है, देन एस से जो सबसे ज्यादा बड़ा इसका फीचर है, स्ट्रॉबेरी टंग. ठीक है, ये आते ही सबको हा मजा आ जाता है. स्ट्रॉबेरी टंग इज गोइंग टू बी देयर. देन यू विल हैव हैंड्स विल हैव स्वेलिंग, हैंड्स विल हैव एरिथेमा. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो होने ही वाली है. ठीक है, और इस एच से और क्या याद रखोगे? हॉट. हॉट मीन्स व्हाट? हॉट मीन्स देयर इज गोइंग टू बी फीवर एज वेल. ठीक है, सो इससे आपको फीवर भी जो है वो याद रखना है. तो ये सारी चीजें जो है हमें देखने को मिलती हैं. एंड सी, वन मोर थिंग विच यू कैन रिमेम्बर इज कोरोनरी आर्टरी. ओके, कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म. ठीक है, कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म्स आर गोइंग टू बी देयर. ठीक है, चलो अब मुझे कुछ एक दो क्वेश्चंस पूछने हैं आपसे एंड देन आई विल टेल यू द ट्रीटमेंट. सो बताओ व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन? ओके, सो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन? Most common complication, and also tell me what is the most specific complication. हाँ जी बताओ, most common complication, most specific complication. And no doubt the treatment is going to be IVIG, but remember aspirin is also given for Kawasaki disease. Okay, aspirin is also given for Kawasaki. Most common is which? Myocarditis. Okay, most common is myocarditis. Okay, so the disease itself is going to tell you this is M, this is C, so this is going to be most common. And most specific, Hanji, most specific is going to be coronary artery aneurysm. Okay, coronary artery aneurysm. Okay, coronary artery aneurysm is going to be the most specific. So देखो अगर इसको बनाओगे CAA, तो CAA के साथ में S लगाओगे तो वो क्या बन जाएगा? खास बन जाएगा, है ना. और खास क्या होता है? स्पेसिफिक. ठीक है, सो मोस्ट कॉमन इज, मोस्ट स्पेसिफिक इज गोइंग टू बी खास. ठीक है, तो इसको जो है ना आपको इसी तरीके से याद रखना है.
ठीक है। तो देखो हिंदी के लेक्चर्स का ना यही फायदा होता है कि हम लोग ये खास और ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं, जो कि हम लोग प्योर इंग्लिश वाले लेक्चर्स में यूज नहीं कर सकते। एंड व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर, हाँ जी, ड्रग ऑफ चॉइस बतानी है बेटा दोनों की आपने, ठीक है, क्रिप्टोस्पोरिडियम पार्वम की भी, साइक्लोस्पोरा की भी। और ये क्वेश्चन कैसे आता है, ऐसे आएगा, हिस्ट्री ऑफ HIV प्लस डायरिया, ओके, प्लस एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स, ओके, stained by Quignon's method, okay, stained by what, stained by Quignon's method। हाँ जी बच्चे बताओ जल्दी से, ड्रग ऑफ चॉइस। सो क्रिप्टोस्पोरिडियम इज गोइंग टू हैव nitrous oxide, whereas cyclospora is going to have drug of choice of cotrimoxazole, जिसको आप लोग ट्राइमिथोप्रिम एंड सल्फाडॉक्साइन लिखते हो, ओके। यस, ठीक है, गुड बेटा। सो जस्ट रिमेंबर दैट साइकिल हैज गॉट दिस C, whereas क्रिप्टो क्या होता है, क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन। कहीं पे भी क्रिप्टो वर्ड आएगा मतलब हिडन, हिडन मतलब नहीं दिखने वाला, ठीक है, नहीं दिखने वाला। सो नहीं दिखने वाला इज N, और इसी N से यू कैन रिमेंबर निट्रास ऑक्साइड, ठीक है, यू कैन रिमेंबर निट्रास ऑक्साइड। कमिंग ऑन टू गिलेन-बारे सिंड्रोम, ठीक है। Coming on to the next syndrome beta, that is Guillain-Barré syndrome. No bachcha, not descending, it is ascending paralysis. So Campylobacter jejuni will have antibodies formed against it, okay. So antibody formed against Campylobacter jejuni, please understand, antibody formed against Campylobacter jejuni is going to have these antibodies are going to attack the Schwann cells, okay. So Schwann cells are going to get attacked, and since Schwann cells are attacked, there will be loss of myelination or decrease in the myelination, and because there is decrease in the myelination, we have a syndrome that is called as Guillain-Barré syndrome, okay, fine. So that's why this is called as post infectious demyelinating polyneuropathy, post-infectious demyelinating polyneuropathy, okay. So post-infections, right, so it is post-infectious demyelinating polyneuropathy, ठीक है। So what are going to be the clinical features of this case, हाँ जी, क्या रहने वाले हैं clinical features? So clinical features, we have a criteria that is called as Brighton's criteria, okay. So Guillain-Barré सिंड्रोम और गुलन-बेयर सिंड्रोम और गुयेन-बेयर जो भी बोलते हो आप लोग, सो बी से बी, ब्राइटन्स क्राइटेरिया, इट इज गोइंग टू हैव एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम ए। सो लेट मी जस्ट राइट डाउन अ बड़ा सा ए so that you can remember everything starting from A. So first A is A reflexia, that means loss of reflexes. Then ascending paralysis, that means the paralysis is going to start from your feet and it is going to go to your brains, ठीक है। So it is going to start from the feet and then going to the like upper body, okay. Yes, next is absent involvement of bladder, okay. So there will be no bladder involvement, a minute involvement of sensory system. So basically it's a motor disease, but there is a minute involvement of sensory system as well. Coming on to the important questions, like most common cranial nerve involvement is, yes, tell me, which is the most common cranial nerve involved? Number 3, nahi bache, it is not number 3, it is number 7, okay, it is number 7, okay. So please remember it is number 7th, okay. So just remember this is number 7, okay. So देखो ऐसे याद करो, गुलन ने बारे के साथ 7 फेरे लिए। सो बारे फेरे, फेरे कितने होते हैं? 7, ठीक है। बारे फेरे, फेरे कितने होते हैं बेटा? 7 होते हैं, ठीक है। इसी का ना एक वेरिएंट होता है, तो इसी का एक वेरिएंट है, उस वेरिएंट का नाम होता है मिलार्ड फिशर,
ओके, मिलार्ड फिशर सिंड्रोम। ओके, मिलार्ड फिशर सिंड्रोम, आज हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, तो शायद उसके अंदर में ये सिंड्रोम है। सो मिलार्ड फिशर सिंड्रोम इज अ ट्रायड ऑफ अटैक्सिया, ऑफ्थैल्मोप्लेजिया एंड ए रिफ्लेक्सिया। ठीक है, सो रिफ्लेक्सेस चले जाएंगे, ए रिफ्लेक्सिया, ऑफ्थैल्मोप्लेजिया एंड अटैक्सिया। ठीक है, अटैक्सिया, ए रिफ्लेक्सिया, ऑफ्थैल्मोप्लेजिया। सो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें सारे ईया ईया ओ ईया, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, मिलार्ड फिशर सिंड्रोम। ओके, जब भी इन्होंने ये तुम्हें देना होता है गुलिन बारे सिंड्रोम, तो ये एक चीज हमेशा लिखते हैं, और वो चीज मैं तुम्हारे लिए भी लिख देता हूँ। ठीक है, जो कि इनका इन्वेस्टिगेशन होती है, and in investigation they are always going to write AG dissociation, ठीक है, sorry, AC dissociation, that is called as albumino cytological dissociation. This is extremely important for your Guillain-Barré syndrome. Okay, so remember गुलिन ने बारे के साथ में 7 फेरे लिए थे। ठीक है, बट एक चीज, एल्ब्यूमिन और सेल्स साइटोलॉजिकल, इनका डाइवोर्स हो गया था। ठीक है, सो इफ यू कैन रिमेंबर दिस, आपका गुलिन बारे का एमसीक्यू कभी गलत नहीं होगा। Albuminocytological dissociation that's going to take place. Why? Because remember in CSF the amount of albumin is going to increase, but because the antibodies are attacking your Schwann cells, there is no increase in the cells. ठीक है, no increase in the cells which is going to be there. And of course one student has already written the treatment. So the treatment is going to be IVIG therapy. IV immunoglobulins are something which we are going to give. Plasmapheresis is also, or plasmapheresis or plasma exchange is also something which we give. Why? Because the old plasma is going to have a lot of what? A lot of antibodies. Okay, ठीक है, this is a छोटू सा homework for you guys. What we call as rule of 17. So rule of 17 में क्या होता है? So 10 plus 7 is equal to 17. 12 plus 5 is equal to 17. ठीक है, एंड जब भी 10th नर्व की पाल्सी होती है, जब भी 7th क्रेनियल नर्व की पाल्सी होती है, तो जो डेविएशन है वो नॉर्मल साइड पे जाती है। ठीक है, 7 मतलब 7, और किसके साथ आप जाओगे? जो कि नॉर्मल होगा, है ना? तो पागल से तो शादी करता नहीं, तो किसके साथ जाते हैं? जो कि नॉर्मल होता है। सो रिमेंबर, अगर 10th क्रेनियल नर्व और 7th क्रेनियल नर्व की डैमेज है, सो हम लोग हमेशा जो भी डेविएशन होगा वो नॉर्मल साइड पे होगा। वेरएज अगर 12th या फिर 5th नर्व की डैमेज है, सो जो डेविएशन है हमारा वो कौन सी साइड पे होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। ठीक है, बट यू हैव टू फाइंड आउट कि डेविएशन होगा किस स्ट्रक्चर का। ठीक है, डेविएशन ऑफ विच स्ट्रक्चर, लाइक फॉर एग्जाम्पल डेविएशन ऑफ फेस किस में होगा, डेविएशन ऑफ टंग किस में होगा, डेविएशन ऑफ एंगल ऑफ माउथ किस में होगा, एंड डेविएशन ऑफ यूवुला किस में होगा। ठीक है, सो इसके आगे आप लोगों को बस इसके क्रेनियल नर्व्स लिखने हैं। इतना एक छोटा सा आपके लिए क्या है, ये होमवर्क है, और सारे बच्चे ये होमवर्क कंप्लीट करेंगे, और करने के बाद में मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे जरूर। ठीक है, कमिंग ऑन टू द सब बच्चों का फेवरेट टॉपिक, और वो ढिंचैक पूजा। आई डोंट नो इफ योर जनरेशन नोज ढिंचैक पूजा और नॉट। हाँ, डू यू नो ढिंचैक पूजा? तो उसका था ऐसे, दारू दारू दारू, इस तरीके की पागल लड़कियां वो हरकतें करती थी। ठीक है, तो अल्कोहल से रिलेटेड कुछ तो चीजें हैं। सो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइन? ठीक है, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइन एसोसिएटेड विद अल्कोहल? So just tell me quickly. And what are the signs of alcohol intoxication? Alcohol dementia नहीं बेटा, signs of alcohol intoxication. So most common sign is going to be tremors. Tremors के बाद में होते हैं बच्चे hallucination. ठीक है, बट याद रखना इन hallucination में orientation intact रहती है, यानी कि if you ask the patient time, place and person, the patient is going to reply you with all of his consciousness. ठीक है, then comes generalized tonic-clonic seizures.
Then comes delirium tremors. So if there is delirium tremor which is going to come, यहाँ पर hallucination भी आएगी, और यहाँ पर अगर वो इतना ज्यादा इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में है तो यहाँ पर उसका जो ओरिएंटेशन भी है वो लॉस हो जाएगा. सो इफ द person is having alcohol intoxication associated with orientation loss, remember it is called as delirium tremor. Whereas if it is alcoholic hallucination, then it is not an orientation loss kind of a state. ठीक है, तो ये orientation loss नहीं होती. ठीक है, तो इसको प्लीज जो है आपने याद रखना है. ओके, समझ में आ गया? तो ये चीज जो है आप लोगों को पता होना चाहिए. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बियर्स क्राइटेरिया. हाँ जी, क्विकली टेल मी व्हाट इज बियर्स क्राइटेरिया. ठीक है बेटा, सो देखो बहुत ध्यान से समझो. बियर्स क्राइटेरिया हैज गॉट वर्ड्स एंटी, 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 एंटी. ठीक है, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, बार्बिचुरेट्स, ये थोड़े ऐसे वर्ड्स हैं जिनके अंदर में एंटी नहीं आता. इसमें और भी एंटीज आते हैं, लाइक एंटी थ्रोम्बोटिक्स, एंटी साइकोटिक्स, ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू कम. ठीक है, सो बियर्स क्राइटेरिया होता क्या है कि अब अगर किसी पेशेंट का एज फॉर एग्जांपल 65 के ऊपर है, ठीक है, समझ में आ गया, अगर वो 65 के ऊपर में उसका एज है, सो कैन यू गिव द ड्रग टू द पेशेंट और नॉट, तो वो उसके ऊपर में आप लोगों को वो वहां से पता लगता है. ठीक है, यस, इनफैक्ट एनसेट्स भी इसी के अंदर में आते हैं. सो इट एक्चुअली चेक्स द सेफ्टी इंडेक्स, लाइक safety index as in is it safe to give that particular drug to a patient or not. ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है. Yes, what is Dejerine-Roussy syndrome? So for example, if he is a patient, just one second. If he is a patient, then and if this is the brain, so brain is injured from this part, so it is going to show what? It is going to show contralateral hemiparesis. It is going to show contralateral hemiparesis, anesthesia. ओके, ना तो मसल सेंसरी चल रहा है ना ही मोटर चल रहा है. ठीक है, एंड देन व्हाट एल्स, देयर विल बी पेन, a lot and lot of pain is going to be there, and then you have got athetosis in the hand, so there will be some abnormal movements. Athetosis in the hand is going to be there in the Dejerine-Roussy syndrome. Okay, Dejerine-Roussy syndrome. So डी से क्या होता है? डबल होता है ना, डी से डबल होता है, तो डबल होता है मल्टीप्लाई टू, एंड इफ इट इज डिवाइडेड बाय टू, दैट इज 1/2, दैट इज कॉल्ड एज हाफ. तो हाफ इज गॉन, मतलब हाफ ऑफ द सेंसरी इज गॉन, sorry, motor is gone, hemiparesis, half of sensory is gone, hemi anesthesia is going to be there. Okay, so E for extremely pain, extreme pain is going to be there, extreme pain is going to be there. J for jerks, jerks as in some abnormal movements are going to be there. So this is how you can remember the Dejerine-Roussy syndrome. So why does it happen? Because there is an artery that is posterior थैलेमोपरफोरेटिंग आर्टरी, उसको वो खराब हो जाती है उसके डैमेज की वजह से, देन यू गेट द Dejerine-Roussy syndrome. बट this is sufficient to know the Dejerine-Roussy syndrome. Coming on to transient ischemic attack. देखो, so in stroke what you are going to get? In stroke you are going to get some radiological findings also, radiological manifestations of your evidence of infarctions. बट ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक क्या होता है? 24 आवर्स. रिमेंबर, एक अटैक आया, ट्रांजिएंट अटैक आया ऑफ सिनकोप का, सिनकोपल अटैक आया, बट there is a complete recovery. So if it is a complete recovery within 24 hours, ठीक है, within 24 hours, plus there is no radiological sign, ठीक है, plus there is no radiological sign which is going to be there. So इन दोनों चीजों को मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं? This is a transient ischemic attack. Now there are high chances कि अगर एक transient ischemic attack आया है
So this transient ischemic attack can even progress to stroke. ध्यान से समझना है इस बात को. Now there are high chances that this transient ischemic attack can even progress to stroke. तो उसको वो होगा या नहीं होगा, the chances depends upon this A, B and C. So what is this A? A for age. So if the age is 65, you give plus 1 point to this parameter. Next is blood pressure. So if BP is more than 140 by more than 90, so more than equal to 140 and more than 90, you will give a score of plus 1. And then C for some clinical features. So what are the clinical features? So clinical features like weakness, like speech deficit. Okay, so if there is speech deficit, if there is weakness, so in both these cases we can understand that yes, there are high chances of stroke, and you will give plus 2 to this. So once in FMGE exam they have asked this criteria. Then you have got D as well. So what is this D? D for duration. Okay, D for duration. So if the duration is like 10 to 59 minutes of transient ischemic attack, give plus 1 point. But if it is like more than 60, then give plus 2 points. And then you have got history of diabetes mellitus, that is also going to have plus 1 point. So just two things you have to remember which are going to have plus 2, that is one is C, another is D. So C and D, C, D are two words, so 2 points. Okay, 2 points. So what can be the maximum score? Yes, what can be the maximum score? So 2 plus 2 4 and 4. Yes, 2 plus 2 4. चलो बताओ, जल्दी से बताओ, what will be the maximum score? This is a good question for you. What can be the maximum score? That's going to be 7. Now why it is 7? So mostly students think it is 8. No. So this one okay, 2 okay, 4 okay. So इन दोनों में से तो एक ही होगा ना बेटा, और अगर मैक्सिमम वैल्यू आप लोगे तो ये वाली वैल्यू लोगे एंड ये वाली लोगे. सो 2 plus 2 4 and 3 7. ठीक है. So maximum score for ABCD2 criteria. Okay, ABCD2 criteria is going to be 7. ठीक है, ABCD2 criteria is going to be what? It is going to be 7. ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चे ये? This is going to be 7. Okay, coming on to Wernicke's aphasia. Okay, Wernicke's aphasia. Now what do you mean by Wernicke's aphasia? Yes, B1 deficiency, alcohol beta, that is Wernicke's encephalopathy. मैं आपसे पूछ रहा हूँ Wernicke's aphasia, and this was the reason I took this question. ठीक है, Wernicke's aphasia is different than Wernicke's encephalopathy. Okay, so remember that the fluency is going to be normal. Okay, the fluency is going to be normal. No, but it's not affluent. The fluency is going to be normal. It is smooth. Okay, so contraindications to thrombolysis when you are not going to go for the thrombolysis. So please remember, if there is a history of hemorrhagic shock. Okay beta, so if there is a history of hemorrhagic shock, okay, if there is a history of hemorrhagic shock, then we are not supposed to do the, yes, not supposed to do the thrombolysis. If there is ischemic stroke, okay, if there is ischemic stroke in previous 3 months, okay, so if there is ischemic stroke in previous 3 months, please don't do the thrombolysis. If there is a history of CNS cancer, CNS tumor, please don't do the thrombolysis. Okay, okay. If there is any major trauma, if there is any major surgery which has happened in near past, you are not supposed to do this. And if there is active bleeding, please don't do the thrombolysis. Okay, don't do the thrombolysis. Coming on to UMN lesion and LMN lesion. So what happens? For example, this is your spinal nerve level. Okay, spinal cord. So this is going to be the spinal nerve, and for example, a tract is coming from above like this tract, and this tract I label it as corticospinal tract. Okay, so corticospinal tract, as the name suggests, coming from the cortex going to the spine. So corticospinal tract is going to give its supply to the spinal cord, and then these spinal nerves are going to get activated, and then they are going to send the signals to the particular muscle. Okay, particular what? Particular muscle. So now what you have to understand, this corticospinal tract is just like acting a parent, and this spinal nerve is going to just like act like a child. So if this parent is having a control over the child will be under supervision. The child will not be
Yes, the child will not be super active. Okay, you got it. The child will not be super active. So child will be under limits, right? You got it. But please remember, like if the parent is gone, the child is going to be super active. So what I wanted to tell you is, like, for example, let us understand about the locations first. So what will be the location? So location is actually like the motor cortex. So that will be considered as upper motor neuron. Then corticospinal tract. Okay, corticospinal tract, that is also going to be there in the upper motor neuron, whereas spinal nerves is something that will be considered under lower motor neuron. Spinal nerves will be considered under lower motor neuron. Then affected site. Okay, so what will be the site affected? So see, upper motor neuron is contralateral, whereas lower motor neuron is ipsilateral. Lower motor neuron is going to be ipsilateral. So what is going to happen? Yes, what is going to happen? Remember, as in your deep tendon reflexes. Okay, deep tendon reflexes. So if it is an upper motor neuron lesion, so deep tendon reflexes will be exaggerated because now the parent is not having any control. So they will fire like anything and there will be exaggerated deep tendon reflexes, whereas deep tendon reflexes will be lower down or will be decreased in lower motor neuron. Okay, tongue fasciculations. Okay, tongue fasciculations will be seen if it is a lower motor neuron palsy, whereas it is not seen in the UMN. Okay, it is not seen in the, yes, ठीक है, चलो, right. So I hope that you are able to understand now all these things. ठीक है, चलो, अब एक चीज मैं आपसे बस और डिस्कस कर लेता हूँ. देखो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर ब्रेन. Okay, I'll use this. For example, this is your brain cortex. This is your pons, which is there, and pons is having the seventh cranial nerve. Now this is going to supply to your face, and this is the face, this is upper face, this is lower face. Okay, upper face is going to be there and then the lower face is going to be there. Okay, so what you have to understand, or rather than understanding, I will say कि इसको रट लो, because I know आप लोग इसको 10 बार याद करते हो फिर भूल जाते हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. ठीक है, तो प्लीज अंडरस्टैंड, अगर ये एक लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस है, ध्यान से समझना, अगर ये एक लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस है तो अपर मसल्स, अपर फेस की मसल्स एंड लोअर फेस की मसल्स दोनों के दोनों खराब हो जाएंगे. अपर फेस की मसल्स, लोअर फेस की मसल्स दोनों खराब हो जाएंगे. बट अगर वो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है तो सिर्फ लोअर फेस की मसल्स खराब होती है. ठीक है, बस इसको रट्टा मार लो, क्योंकि मैं आज भी समझाऊंगा तो मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर कि आप फिर इसको जो है वो छोड़ दोगे, फिर आप इसको समझ नहीं पाओगे और फिर वो फिर से रिकॉल नहीं कर पाओगे. तो बस आपको इसको जो है सीधा सीधा याद करना है. एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. कमिंग ऑन टू एंडोक्राइन नाउ. बेटा आज का जो हमारा टास्क है ना, थोड़ा सा बड़ा है, बट वी विल ट्राई टू फिनिश इट अप एज अर्ली एज पॉसिबल. सो व्हाट इज कुशिंग सिंड्रोम? तो क्या होता है, मून लाइक फेस हो जाता है, देन बफेलो हम्प हो गया, देन एब्डोमिनल क्या दिखेगा आप लोगों को, स्ट्राया दिखेगा. ठीक है, मून लाइक फेस, बफेलो लाइक हम्प, एब्डोमिनल स्ट्राया. ठीक है, इजी ब्रूजिंग. ठीक है, इजी ब्रूजिंग इज गोइंग टू बी देयर. देन व्हाट एल्स, ऑस्टियोपीनिया, देन मायोपैथी. मायोपैथी, डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपरटेंशन. ठीक है, ये सब होगा ही होगा. ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर, you have got moon like face, abdominal stria, buffalo hump, easy bruising. So just remember, this is B bruising, B buffalo hump. ठीक है, abdominal stria, buffalo hump, moon like face, everywhere the fat is going to get developed. So this entire thing is related to your fat, then this is related to your bone, and this is related to your muscle. Okay, diabetes and hypertension. So all these things are going to be there if the patient is suffering from Cushing's syndrome, Cushing's disease. Okay, ये क्यों होता है Cushing's disease? Increase in the level of, yes, increase in the level of cortisol. So because there is increase in the level of cortisol, so see, C is cortisol, U for up. So because it is uprising level of cortisol, we have Cushing syndrome that is going to be there. And what is the most common cause? And what is the most common cause? External use. Remember, external use of steroids. Okay, external use of steroids. Okay, external use नहीं, I should say
इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ एक्सोजिनस स्टेरॉइड्स, ठीक है, एक्सोजिनस स्टेरॉइड्स, ओके, एक्सोजिनस स्टेरॉइड्स ज्यादा लेने की वजह से होता है। वेरी गुड, एक्सटर्नल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, यू आर एब्सोल्युटली फाइन। So what will be the investigation? Now comes the FMGE PYQ. Okay, FMGE PYQ. Now comes the FMGE PYQ. How will you investigate? Okay, how will you investigate the Cushing's disease? So what is going to be the investigation of choice? हाँ जी, what is going to be the investigation of choice? Quickly tell me. तो देखो, Cushing disease और हाँ, तो मैंने आपको Cushing syndrome लिखा था, that is uprising level of cortisol. But what is Cushing disease? Cushing disease is because of defect in the ACTH. Okay, so ये इतना याद रख लेना। Cushing disease क्या होता है? So D से disease, D से defect, ठीक है? So disease is the defect in the level of ACTH. So please remember, Cushing syndrome is different and Cushing's disease is different. ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन क्या होगा? 24-hour cortisol, no, DEXA टेस्ट, वेरी गुड मोहम्मद अरशद, यू आर एब्सोल्युटली राइट। डेक्सा स्कैन कर, डेक्सामीथासोन सप्रेशन टेस्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। सो वी गिव व्हाट, वी गिव द डेक्सामीथासोन सप्रेशन टेस्ट, ओके, वी गिव द डेक्सामीथासोन सप्रेशन टेस्ट, ठीक है। तो क्या होता है, देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेक्सामीथासोन देते हैं। सो इफ वी आर सप्लाइंग डेक्सामीथासोन फ्रॉम आउटसाइड, so there will be increased dexamethasone, there will be increased amount of exogenous steroid, and if the exogenous steroid amount is very high, what is going to happen? The adrenocorticotropic hormone is going to get decreased, and if the adrenocorticotropic hormone is going to get decreased, of course your body steroids level is going to be decreased, body steroid level is going to be decreased. Okay, so this is the normal physiology that should happen. Okay, this is the normal physiology what is supposed to be happening. But what happens, like if you are giving dexamethasone from outside, if ACTH comes low, remember, if ACTH comes low, okay, that means, what does this mean? That means your pituitary is working fine, your pituitary is working fine. So the problem is with what? The problem is with adrenal gland itself. That adrenal gland is secreting large amount of, yes, large amount of what? Large amount of cortisol. So this is adrenal adenoma, this is adrenal adenoma. But for example, if you give dexamethasone suppression test and ACTH level is still high, if you give dexamethasone suppression test and ACTH level is high, that means what? That means there is a problem in the pituitary. So pituitary is not fine. Okay, so pituitary is not fine. So what I do after a low dose, so initially I gave a low dose dexamethasone suppression test, I do a high dose dexamethasone suppression test, I do a high dose dexamethasone suppression test, and now I look. So if it is suppressed now, if it is suppressed now in high dose, then I can understand that okay, the pituitary was at problem, so this is a pituitary adenoma. But for example, if it is still not suppressed, if not suppressed, then it is not in pituitary involvement, there is some ectopic source of ACTH, there is some ectopic source of ACTH which is there, and this can be there in case of small cell cancer of lung, small cell cancer of lung, this is going to be there, small cell cancer of lung. So ये आप लोगों को याद रखना है, but I know बच्चे भूल जाते हैं, so just take a mnemonic. C for Cushing's, D for dexamethasone suppression test, D for dexamethasone suppression test. डेक्सा देते ही तीन आउटकम्स हो सकती हैं। अगर लो डोज डेक्सा से ठीक हो रहा है सो वो एड्रिनल एडिनोमा है, अगर हाई डोज से ठीक हो रहा है तो वो पिट्यूटरी एडिनोमा है, और अगर वो ठीक ही नहीं हो रहा है तो वो एक्टोपिक सोर्स है, तो वो एक्टोपिक सोर्स है। तो आप लोगों को इसी सीक्वेंस में याद रखना है, APE, ये बन गया लंगूर, APE लंगूर, ठीक है। सो ये एक तरीका है बेटा जिससे आप लोग बहुत आसानी से याद कर सकते हो। दिस इज C फॉर कुशिंग्स, कुशिंग से डेक्सा, डेक्सा से लिखेंगे APE, यानी लो डोज में ठीक हो रहा है एड्रिनल एडिनोमा, हाई डोज में ठीक हो रहा है पिट्यूटरी एडिनोमा, ठीक ही नहीं हो रहा है एक्टोपिक एडिनोमा, ठीक है बेटा। सो APE, इट इज द mnemonic टू रिमेम्बर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, समझ में आ गया।
सो और इसमें क्या चीज आपको याद रखनी है, ये तो मैंने बता दिया, फैट, बोन, मसल्स. एंड वन मोर थिंग, इफ यू कैन रिमेंबर, यू प्लीज रिमेंबर दैट देयर इज न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिलिया, eosin in I mean there is neutrophilia that is going to be there. Although बाकी सब चीजें कम हो जाती हैं, but कुशिंग्स के अंदर में न्यूट्रोफिलिया जो है वो होता है. So I for increase and N for neutrophil. I for increase, N for neutrophil. So what I have told you, C for cortisol, U for uprising, I for increase, N for neutrophil. Cushing disease होता है, defect in ACTH. बाकी ये फैट, बोन और मसल की चीजें याद रखनी है. मोस्ट कॉमन कॉज पता होना चाहिए. इन्वेस्टिगेशन के लिए मैंने आपको एक निमोनिक दे दिया है. ठीक है. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड एज प्रोलैक्टिनोमा. प्रोलैक्टिनोमा जो ट्यूमर है, ठीक है, उसके अंदर में क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स आएंगे. सो व्हाट विल बी द क्लिनिकल फीचर्स इन प्रोलैक्टिनोमा, वेयर योर प्रोलैक्टिन लेवल्स आर इंक्रीजिंग. हाँ जी, प्रोलैक्टिन लेवल इज इंक्रीजिंग. वेरी गुड. गैलेक्टोरिया, गुड. गैलेक्टोरिया, वेरी गुड. गैलेक्टोरिया, यस. व्हाट एल्स? मिल्क सिक्रीशन, एक्सेसिव मिल्क सिक्रीशन, वेरी गुड. इनफर्टिलिटी नहीं कह सकते, एमेनोरिया बोल सकते हो. एमेनोरिया, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग इन इटसेल्फ इज अ लैक्टेशनल एमेनोरिया पढ़ते हैं ना हम लोग, लैक्टेशनल एमेनोरिया. सो उसी तरीके से इंक्रीज प्रोलैक्टिन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एमेनोरिया, एंड देन इनफर्टिलिटी ऑफ कोर्स इज गोइंग टू कम इनटू प्ले. ठीक है. एंड रिमेंबर दिस प्रोलैक्टिनोमा कैन हैव द कॉम्प्रेसिव सिम्टम्स आल्सो. ओके, कॉम्प्रेसिव सिम्टम्स कैन आल्सो बी देयर. सो व्हाट इज गोइंग टू बी देयर? हाँ जी, ऑप्टिक जो कियाज्मा है आपके पास में, उसको ये क्या कर देगा? कंप्रेस कर देगा. एंड यू विल हैव व्हाट? बाइलैटरल हेमिअनोपिया. ठीक है, बाइलैटरल हेमिअनोपिया is going to be there. Okay, bilateral hemianopia. Okay, bilateral hemianopia is going to occur. ठीक है. Coming on to hyperaldosteronism. Okay, hyperaldosteronism. So prolactin हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं. Yes, what is the protocol? हाँ जी, क्या प्रोटोकॉल है? हाउ विल यू चेक फॉर द हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया? तो क्लिनिकल फीचर्स मान लो प्रेजेंट है, तो आप लोग क्या करोगे? ऑफ कोर्स यू विल चेक आउट फॉर द लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन. ठीक है, ऑफ कोर्स यू विल चेक आउट फॉर द लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन. ठीक है. सो प्रोलैक्टिन लेवल्स कितना होना चाहिए? सो इफ इट इज सीरम लेवल्स, अंडरस्टैंड, सीरम लेवल्स. ठीक है, और सीरम लेवल्स में भी हम लोग फास्टिंग करते हैं, मॉर्निंग करते हैं. ठीक है, फास्टिंग लेवल्स होना चाहिए, मॉर्निंग लेवल्स होना चाहिए. वी चेक फॉर द प्रोलैक्टिन. इफ इट इज मोर देन 200 then we label it as prolactin. Okay, prolactin. So pro is one word, lactin is another word. P and L, Parv, Luthra, my name, more than 200 you have to remember. ठीक है, you have to remember like this. Okay, so this is suggestive of prolactinoma. Okay, suggestive of prolactinoma. But this is not the end. What we do after that? We, in order to confirm it, we do the MRI also of the brain, because we have to look out for the size of the tumor as well. So remember, if it is less than 1 centimeter, किस चीज का देखोगे? MRI brain. What you are going to check? You are going to check the levels, the size. ठीक है. If the tumor is like less than 1 centimeter, okay, fine, no problem. If it is more than 1 centimeter, oh god, problem. But problem is in both of them. 1 centimeter से कम होगा तो क्या है? माइक्रोएडिनोमा. अगर वो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा? मैक्रोएडिनोमा. ओके, so one is microadenoma, another is macroadenoma. So in both of the cases, what you are supposed to do as the first line treatment? Start dopamine therapy, dopamine agonist therapy. Okay, start the dopamine agonist therapy, and after that we have to check. Okay, after that we have to check. What we are supposed to check? See, if it is microadenoma, we have seen that in the in the in microadenoma cases, they just, वो अपने आप ही reduce हो जाते हैं. So just you have to check about the levels of prolactin. So you check the levels of prolactin. Okay, if the prolactin level is less than 50, okay, you can continue the DA therapy. But if it is like more than 50, then we have to go for what? We have to go for surgery. Okay, but in macroadenoma, because the size is also concerning, because it can cause compressive symptoms, then we have to do MRI pituitary. So in MRI pituitary, what you are going to see? The size. Okay, size we see within the 4 months. 4 months में हम लोग size देखते हैं इसका. If it is unchanged, if there is no change, please go for
surgery. If it is decreasing, then we have to continue the DA therapy, continue DA. तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने कुछ नहीं किया, ब्रेन हम लोगों को देखो पहले तो प्रोलैक्टिन लेवल्स ही देखना है, उसके बाद MRI करना है, एंड जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड माइक्रो है या मैक्रो, मैक्रो है MRI करेंगे, माइक्रो है लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन हम लोग देखेंगे, ठीक है। सभी केसेस के लिए क्या ड्रग ऑफ चॉइस होती है, DA में हम लोग देते हैं कैबरगोलिन, ओके, कैबरगोलिन जो होती है वही हम लोग देते हैं कैबगोलिन फॉर ऑल केसेस। बट अगर फॉर एग्जांपल ब्रोमोक्रिप्टिन कब देते हैं, इफ प्रेगनेंसी इज डिजायर्ड, ठीक है। सो वी यूज टू रिमेम्बर लाइक दिस, अगर एक मम्मी है, एक मम्मी का एक बच्चा है और उस बच्चे को भाई चाहिए, सो इफ यू वांट ब्रो, ओके, इफ यू वांट अ ब्रो, ठीक है, इफ यू वांट अ ब्रो मीन्स इफ द pregnancy is desired, then we will give bromocriptine, or else we will give what, we will give the cabergoline only, okay, cabergoline, okay। So if it's a male, of course cabergoline देंगे, ठीक है। In all other cases also what we are going to give, we are going to give cabergoline, ठीक है, राइट, समझ में आ गया, चलो गुड। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, सो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म क्या चीज होता है बेटा, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एल्डोस्टेरोन। So first of all we should know what are the causes of hyperaldosteronism। तो देखो हमेशा इसी चीज में बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि प्राइमरी क्या होता है और सेकेंडरी क्या होता है, ठीक है। प्राइमरी क्या होता है और सेकेंडरी क्या होता है। प्राइमरी मतलब दैट इज इन्वॉल्विंग द एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। और सेकेंडरी का मतलब होता है जब हम लोग हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस के बारे में बात करेंगे। सो एड्रेनल ग्लैंड में क्या हो सकता है, सो प्लीज रिमेंबर द मोस्ट कॉमन कॉज इज बाइलैटरल, ठीक है, याद रखो मोस्ट कॉमन कॉज इज बाइलैटरल माइक्रोनोड्यूलर, ओके, बाइलैटरल माइक्रोनोड्यूलर एड्रेनल हाइपरप्लेशिया, ओके, एड्रेनल हाइपरप्लेशिया, ठीक है, बाइलैटरल माइक्रो। तो देखो ये सपोज करो एड्रेनल ग्लैंड है, तो इनके अंदर में क्या होता है बच्चे, छोटे छोटे माइक्रोनोड्यूल्स हो जाते हैं। सो बाइलैटरल माइक्रोनोड्यूलर एड्रेनल हाइपरप्लेशिया, ठीक है बेटा, हाँ। तो बाइलैटरल माइक्रोनोड्यूलर एड्रेनल हाइपरप्लेशिया, नहीं तो और क्या हो सकता है, द अदर थिंग्स इज कॉन्स सिंड्रोम, ठीक है। सो कॉन्स सिंड्रोम, सो कॉन सिंड्रोम क्या होता है, कॉन सिंड्रोम होता है बेटा एड्रेनल एडिनोमा। जैसे कॉन्स में एन और एन है, वैसे यहाँ पे ए और ए लिख दो, तो ए से एड्रेनल हो जाएगा बेटा, ए से एडिनोमा हो जाएगा, ठीक है, एड्रेनल एडिनोमा, एड्रेनल एडिनोमा। सेकेंडरी कॉजेज क्या हो सकते हैं, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस भी हो सकता है, या फिर कुछ अदर कॉजेज, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को बहुत ज्यादा डायरिया है, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग है, तो डायरिया वॉमिटिंग में क्या हो जाएगा, सब में पोटेशियम लॉस हो जाता है, एंड पोटेशियम लॉस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, पोटेशियम लॉस हो जाएगा, ठीक है, सोडियम सॉरी नॉट, हाँ सोडियम लॉस हो जाएगा बेटा। तो सोडियम अगर लॉस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल्डोस्टेरॉन हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, यस, एल्डोस्टेरॉन इज गोइंग टू गेट इंक्रीज्ड बेटा। और कहाँ कहाँ हो सकता है ये सब, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हो जाता है, ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर में हो जाएगा। देन CCF हो सकता है, ठीक है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं, अब देखो एल्डोस्टेरॉन यदि हाई है बॉडी में, ध्यान से समझना मेरी बात को, यदि एल्डोस्टेरॉन हाई है बॉडी में तो क्या होगा, एल्डोस्टेरॉन इफ इट इज हाई दैट मीन्स इंक्रीज अमाउंट ऑफ सोडियम एंड वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, increase amount of sodium and water absorption, and because sodium and water are getting absorbed more, there is going to be hypertension, so one is going to be hypertension। दूसरी बात में potassium is going to be loss, and potassium loss is something which is called as what, this is called as hypokalemia, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो जाएगी बेटा, हाइपोकेलेमिया। और मैंने कल भी आपको ये निमोनिक बताया था, के लॉस, तो के लॉस के आगे क्या लिखना होता है, ए और यहाँ IS, तो ये क्या हो जाता है, एल्केलोसिस, ठीक है, एल्केलोसिस, यहाँ पर एल्केलोसिस भी हो जाएगा, एंड इस एल्केलोसिस की वजह से फिर क्या होता है बेटा, मसल्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं, टेटनी होने लगेगा, ठीक है। सो मसल क्रैम्प्स एंड टेटनी इज गोइंग टू बी देयर, एंड ऑफ कोर्स वन मोर थिंग, बिकॉज वाटर इज गेटिंग रीअब्सॉर्ब, सो देयर इज गोइंग टू बी कार्डियक रिमॉडलिंग एज वेल, क्योंकि ज्यादा ब्लड होने की वजह से हार्ट पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, सो कार्डियक रिमॉडलिंग इज गोइंग टू बी देयर। बट वन मोर थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इन एल्डोस्टेरॉन इंक्रीजेस, edema is absent, ठीक है, edema is absent, ओके, edema is absent, ठीक है। एंड आई नो कि बच्चे इसको भूल जाते हैं
कि edema is going to be absent. So please remember aldosterone. Okay, so A for absent, E for edema. Okay, edema is going to be absent. ये चीज जो है आपको पता होना चाहिए प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में. सो ये बस पहचानने के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए. कमिंग ऑन टू मेन सिंड्रोम, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेन सिंड्रोम. ओके, सो just a way to remember that in especially if I talk for Indian families, um, I don't know अगर ये थोड़ा आप लोगों को किसी को हर्ट करे, करना तो नहीं चाहिए बिकॉज इट्स जस्ट अ ट्रिक टू रिमेम्बर, तो बुरा तो नहीं लगना चाहिए. बट जैसे हम बोलते हैं ना कि ऑल मेन इन इंडियन फैमिलीज आर डोमिनेंट. ठीक है, so just remember that this is all men syndromes are autosomal dominant, autosomal dominant. So please remember there are कौन से होते हैं. One is men 1 syndrome, then you have got men 2 syndrome, and then you have got men 3 syndrome. ठीक है, so men 1 syndrome, men 2 syndrome, and men 3 syndrome. Men 1 syndrome is called as वर्मर. ठीक है, दिस इज MER मर. ठीक है, डोंट, इसमें नर नहीं है, वर नर नहीं है, वर्मर है. ठीक है, वर्मर है. और उसको याद रखने के लिए याद करो ये मेन है, सो M आएगा यहाँ पे. ठीक है, दिस इज वर्मर सिंड्रोम. ओके, वर्मर सिंड्रोम, दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेम्बर. ठीक है, वर्मर सिंड्रोम. मेन 2, सो 2 क्या होता है, 2 को हम लोग क्या बोलते हैं. हाँ जी, 2 क्या होता है, 2 होता है सेकंड. सो क्योंकि 2 सेकंड होता है तो ऐसे याद करो सिपल सिंड्रोम. ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिपल सिंड्रोम बोलते हैं. ठीक है, सिपल सिंड्रोम बोलते हैं. तो क्या आप चीजें आपको याद रखनी है. सो मेन 1 में क्या होता है, 3 पीज आते हैं आपके पास में. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पी पी पी. यहाँ पे क्या आएगा, पी पी, 2 पी. यहाँ पे क्या आएगा, 1 पी आएगा. ठीक है, बाकी हमारे यहाँ पे क्या डाल देना है, हमने M डाल देना है. ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है. ठीक है, तो कुछ भी हो जाए जो चीज, हाँ ठीक है, तो क्या चीज आपको याद रखना है. सो प्लीज रिमेम्बर ये चीज आपको इस तरीके से आप याद रखोगे कि ये सेम होता है, ये सेम होता है. ठीक है, तो क्या क्या चीजें सेम होती हैं. सो प्लीज रिमेम्बर इट इज गोइंग टू हैव पैराथायरॉयड एडिनोमा. यहाँ पर क्या होता है, पैराथायरॉयड हाइपरप्लेशिया. ठीक है, फिर ये वाला जो पी है ये क्या है, दिस इज फेओक्रोमोसाइटोमा. दिस इज ऑल्सो यहाँ पर फेओक्रोमोसाइटोमा. ठीक है, तो एक जो पी बच गया वो क्या है, पिचूट्री. ओके, दिस इज दी पिचूट्री एडिनोमा. और उसमें भी मोस्ट कॉमन क्या होता है, प्रोलैक्टिनोमा. ओके, उसमें भी मोस्ट कॉमन क्या होता है, प्रोलैक्टिनोमा. वेरी गुड निरंजन दत्ता बेटा, आप बहुत अच्छे आंसर्स दे रहे हो. ठीक है, कीप इट अप. सो पिचूट्री हैज दिस गॉट आई, तो आई जो है वो 1 की याद दिलाता है. तो ये पिचूट्री किसमें इन्वॉल्व है, मेन 1 में इन्वॉल्व है. ठीक है, so pituitary adenoma. Now what is this P, this is also pancreas. ठीक है, so pancreas tumor. अब यहाँ पे क्या आ गया, A आ गया. तो A भी क्या होता है, फर्स्ट लेटर ऑफ अल्फाबेट्स है ना. So because it is a first letter of alphabets, that's why it is going to come. So pancreas and pituitary, they are going to come in the men 1 syndrome only. And one important thing is, जैसे इसमें P और A आ रहा है, वैसे यहाँ G और A लिख दो तो वो आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा. That gastrinoma is the most common pancreatic tumor. ठीक है, gastrinoma is the मोस्ट कॉमन, कौन सा ट्यूमर, मोस्ट कॉमन पैनक्रेटिक ट्यूमर इन दिस. ठीक है, सो मेन 2 इज एक्चुअली सिपल सिंड्रोम. सो मेन 2 क्या होता है बच्चे, सिपल. सो इन दोनों के जीन्स भी याद रखो, 2 and 3. इसमें सारा का सारा कौन सा जीन है, रेट जीन है बच्चे, रेट जीन. ठीक है, रेट जीन इज गोइंग टू बी देयर. सो ये M क्या है, ये M और ये M क्या है. सो प्लीज रिमेम्बर ये दोनों M थोड़े से डिफरेंट है. दिस इज मेड्यूलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड. सो प्लीज रिमेम्बर मेड्यूलरी, DU से याद रखो, डाई, डाई का मतलब होता है 2. ठीक है, सो मेड्यूलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, डाई, डाई का मतलब क्या होता है, 2. ठीक है, समझ में आ गया, ग्रेट. उसके बाद में हम लोग बात करते हैं मेन 3 के बारे में. सो मेन 3 में सारे के सारे M आ जाते हैं, जैसे मार्फेनॉइड हैबिटस, मतलब मार्फिन के जैसे दिखने वाला, मार्फेनॉइड हैबिटस. देन म्यूकोजल न्यूरोमा. ठीक है, देन अगला क्या है, म्यूकोजल न्यूरोमा. ओके, म्यूकोजल न्यूरोमा इज गोइंग टू बी देयर. देन व्हाट एल्स, मेगा कोलोन, मेगा कोलोन. एक मेन 4 भी होता है, बट मेन 4 इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफ यू जस्ट कैन रिमेम्बर, सो इट्स अ मेन 4 is FOUR. So R से you can remember it's a reproductive
problem. ठीक है, it's going to show reproductive tumor and it is going to have which mutation? CDK mutation is going to be there. Okay, CDK mutation is going to be there. ठीक है, so ये मेन सिंड्रोम हो गया, इसको आप लोगों ने याद रखना है. फाइन. 4 इतना नहीं आता. यस, दैट्स ट्रू. 4 जो है वो इतना नहीं पूछा जाता. सो दैट्स एक्चुअली ट्रू. ठीक है, चलो कमिंग ऑन टू बेटा, अब अगले इसमें पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज, दैट इज हाइपोथायरॉयडिज्म. ठीक है, कमिंग ऑन टू हाइपोथायरॉयडिज्म. तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, लेट्स अंडरस्टैंड. ठीक है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए, जैसे बहुत बार मैंने देखा है बच्चों को इसमें थोड़ी गलती करते हैं वो लोग. हाशिमोटोज क्या होता है? इज इट हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म? बताओ. Hashimoto's is hyper और hypo. Very good. So remember Hashimoto, मोटो मतलब मोटा होना, और मोटे हम लोग कैसे होते हैं? Yes, मोटे कैसे होते हैं? अगर थायराइड लेवल जो है वो कम हो जाता है. So if thyroid is less or thyroid is decreased, then this is called as that is seen in the Hashimoto's. So just remember this is a hypothyroidism. That is a hypothyroidism. And one more thing which I want you to remember is Riedel's thyroiditis. Okay, Riedel's thyroiditis. So Riedel's thyroiditis is also hypothyroidism. Hypothyroid. So hypo, or you can remember this way also. Hypo is just like hippo. So hippo is also motu. So Hashimoto is going to be remembered from hippo. ठीक है, ये एक चीज समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, समझ में आ गया. हाँ, और रिडल्स हाइपोथायरॉयडिज्म. तो रिडल्स इज ऑल्सो अ हाइपोथायरॉयड. ठीक है, समझ में आ गया. हाँ, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा. रिडल्स इज ऑल्सो hypothyroidism and Hashimoto's is also hypothyroidism. Now, how will you evaluate hypothyroidism? So we always check for the levels of TSH. So if TSH levels are normal, nothing to do. But if TSH levels are elevated, we check the levels of T4. So if you see that the levels of T4, okay, if the levels of T4 is normal, okay, that means now अभी तक क्या हुआ है? अभी तक जो हमारा क्लिनिकल सिम्टम्स हैं वो नहीं आए हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज सब क्लिनिकल. और क्लिनिकल सिम्टम्स क्यों नहीं आए हैं? क्योंकि T4 जो है नॉर्मल है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म. सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म. बट वहीं अगर मान लो आपका जो T4 लेवल है वो लो हो गया है, ओके, इफ योर T4 लेवल इज लो, then we have to check ki why it is low. So in order to check we have to do anti-TPO antibody. ठीक है, तो check for TPO antibody if it is positive or not. ठीक है, so if it is okay, check for the TPO antibody. If it is positive, then of course Hashimoto's. If it is negative, then we have to check for the other causes. Okay, we have to check for the other causes. But if अगर ये subclinical भी है तो भी आप लोगों को यही करना पड़ता है, that we have to check for TPO antibodies. ठीक है, if the TPO antibody is positive, okay, or the patient is, you can say if the patient is symptomatic, ठीक है, थोड़े से बाद में, और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है नेगेटिव हो. ठीक है, सो अगर वो नेगेटिव निकल आता है एंड इफ इट इज सब क्लिनिकल यानी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, सो वी कैन डू फॉलो अप. But if it is symptomatic, we have to give the T4 as the treatment. Whereas in T4, if it is positive, of course we have to give T4 as the treatment. Whereas if it is negative, then we have to check for the other cause. ठीक है, then we have to check for what? We have to check for the other causes. ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा. What is goiter? क्या होता है? Now this is also a question जहां पर आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो. गोइटर क्या होता है? गोइटर हाइपोथायरॉइड और इज गोइटर हाइपरथायरॉइड? बताओ, ए और बी. Goiter is just the diffuse enlargement of or diffuse swelling of thyroid gland. Okay, it is diffuse enlargement of thyroid gland. It has nothing to do with hyper or hypo. In fact, goiter can happen in both the cases. So, अगर कोई लिख रहा है toxic multinodular goiter, अब क्या होगा? टॉक्सिक मल्टीन्यूडुलर गोइटर. तो आप सोचो बहुत सारे नोड्यूल्स हैं, बहुत सारा थायराइड है. सो मल्टी नोड्यूल्स, मल्टीपल इंक्रीज इन थायराइड. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गोइटर, नंबर 1. देन अदर इज टॉक्सिक एडिनोमा. सो व्हाट इज एडिनोमा? व्हाट इज एडिनोमा? एडिनोमा इज एक्चुअली द कैंसर ऑफ द, या फिर बिनाइन कंडीशन, बिनाइन नियोप्लाज्म ऑफ
है, benign neoplasm of thyroid gland. ठीक है, so benign neoplasm of the thyroid gland is going to be there. This is called as toxic adenoma. And of course somebody has told me Graves disease. Okay, Graves disease. So R से क्या होता है? Raised. ठीक है, R से क्या होता है? Raised. So grave is raised. ठीक है, अच्छा इसमें आप क्या करोगे आप लोग? How will you evaluate this? Again you have to check for TSH. Okay, if of course TSH is going to be low, T4 is going to be high, so it is of course thyrotoxicosis. ठीक है, this is called as thyrotoxicosis, and then you have to check for the हाँ जी, ग्रेव्स है या मल्टीनोडुलर गोइटर है या फिर टॉक्सिक एडेनोमा है, वो आपको चेक करना है. बट वन थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ द TSH लेवल इज लो एंड द T4 लेवल इज नॉर्मल, तो फिर ये क्या हो गया? दिस इज सब क्लिनिकल hyperthyroidism. Subclinical hyperthyroidism. ठीक है, तो ये सारा हम लोगों को इस तरीके से चेक करना होता है. बट ऑफ कोर्स आई विल टीच यू द, ये थोड़ा सा हम लोग इन डेप्थ भी पढ़ेंगे बिकॉज ग्रेव्स पे बहुत बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है. सो दे हैव आस्क्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स अबाउट द ग्रेव्स, सो ऑफ कोर्स आई विल टीच यू द ग्रेव्स डिजीज इन डिटेल. ठीक है, चलो तो अभी हम लोग ने नेक्स्ट क्या डिस्कस करना है? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट योर ग्रेव्स डिजीज. ठीक है, फीचर सजेस्टिव ऑफ व्हाट? फीचर सजेस्टिव ऑफ ग्रेव्स डिजीज. ओके, सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड अबाउट द Graves disease. So please understand that what are the features which are suggestive of Graves disease. So one, of course, because there is hyperthyroidism, so there is going to be diffuse goiter. जैसे कि हाँ, तो diffuse goiter is going to be there. There is no single nodule, but a diffuse goiter that is going to be there. Then TPO antibody is going to be there. TSH receptor antibody is going to be there. Ophthalmologic findings are going to be there, and yes, something which is called as peritibial, that is around the tibia you will have a myxedema also, है ना? Peritibial myxedema is going to be there. तो एक सबसे ऊपर का ऑफ्थैल, ठीक है, एक सबसे नीचे की लेग्स पेरिटिबियल myxedema, और एक बीच की चीज नेक. ठीक है, so जिसमें TSH receptor, TPO, diffuse goiter, all these things are going to come. ठीक है, all these things are going to come. So अगर ये सारे features, if these all features are present, Graves disease, and if all these features are not present, ठीक है, understand this, मैं बहुत easily आपको समझा रहा हूँ कि अगर ये सारे features जो भी हमने अभी features लिखे हैं, so if all these features are present, then it is more likely to be a Graves disease. But if all these features are absent, then it is not a Graves disease. So either it is going to be a toxic adenoma or it is going to be a toxic multinodular goiter. Okay, toxic multinodular goiter. So in order to check what it is, so what we'll do, we will do thyroid scan. Okay, thyroid scan. Now they have asked a plenty of time कि भाई थायराइड स्कैन में कैसे कौन सा आयोडीन यूज करोगे. सो प्लीज रिमेंबर आयोडीन 1 2 3 इज जस्ट लाइक योर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर ऑफ योर MBBS, जहां आप कुछ ट्रीट नहीं करते, केवल डायग्नोज करते हो. ठीक है, केवल डायग्नोज करते हो. सो आयोडीन 123 इज फॉर द डायग्नोसिस. ठीक है, फॉर द डायग्नोसिस. इसी तरीके से आयोडीन 125, आयोडीन 131 जो भी इसके आसपास के हैं, दैट इज ऑल फॉर द डायग्नोसिस. ठीक है, फॉर द डायग्नोसिस. ओके, फॉर द डायग्नोसिस. बच्चा इतने, तुम लोग मुझे इतनी पॉजिटिविटी भेजते हो ना, थैंक यू सर, पूरा फाइनल ईयर को रिवाइज कर दिया. प्लीज सर 19 सब्जेक्ट पढ़ा दो. हाँ बच्चे, चलो ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं. यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? नेक्स्ट इज अबाउट द ग्रेव्स डिजीज. ठीक है, नेक्स्ट इज अबाउट व्हाट? नेक्स्ट इज अबाउट द ग्रेव्स डिजीज. सो ग्रेव्स डिजीज में आप लोगों को क्या पता होना चाहिए? यहाँ पर भी हम लोग थायराइड स्कैन करेंगे. ठीक है, एंड जब यहाँ पर हम लोग थायराइड स्कैन करेंगे तो फिर हम लोगों को क्या पता लगेगा? हाँ जी, यहाँ पर हम लोगों को क्या पता लगेगा? यहाँ पर तो हम लोग और भी करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्नीशियम 99 स्कैन. ठीक है, टेक्नीशियम 99 पर टेक्निकेट पर पर टेक्नीटेट पर टेक्नीटेट स्कैन. ठीक है, टेक 99. तो ये हम लोग करेंगे तो वी विल सी व्हाट? वी विल सी डिफ्यूज. प्लीज अंडरस्टैंड, वी विल सी डिफ्यूज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, बिकॉज दिस इज अ डिफ्यूज एनलार्जमेंट, सो वी विल सी व्हाट? वी विल सी डिफ्यूज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, हम लोग को क्या देखने को मिलेगा?
we will see diffuse distribution. ठीक है, so what we will do, we will start the anti-thyroid therapy. ठीक है, anti-thyroid therapy we will start. ठीक है, coming on to some oral hypoglycemic agents. Now oral hypoglycemic agents, my only purpose of adding this slide is कि जब भी आप endocrine पढ़ोगे, please remember to remember the side effects of your oral hypoglycemic agents, which have been taught to you by the pharmacology faculty very nicely. So please go through the side effects of oral hypoglycemic agents. But if not, ठीक है, अगर वहां पे नहीं समझ में आया और you want me to teach you, so after my lecture comment down in the comment section that you want to learn about oral hypoglycemic agents, and I will teach you this OHA in detail as well. ठीक है, so coming on to next topic of your endocrinology, that is pheochromocytoma. Okay, that is pheochromocytoma. So pheochromocytoma, please understand what is this pheochromocytoma. I just hope इतने सारे मैसेज कर दिए मैंने तो पढ़े भी नहीं. So pheochromocytoma, हाँ क्या होता है pheochromocytoma? So basically it's a tumor of your adrenals. ठीक है, so it's a adrenal tumor. So जितने भी hormones हैं वो सब increase हो जाते हैं. So let me just teach you some most common things which have been asked. Yeah, it's a tumor of adrenal. So what is the most common symptom which will be there? What is the most common sign which will be there? ठीक है, what is the initial investigation you do? Yes, what is the initial investigations which you will do? How will you confirm the diagnosis? Okay, how will you confirm the diagnosis? And best test क्या होता है? ठीक है, best test क्या होता है? Do we do biopsy in this case or not? हाँ जी. And how best test for, okay, so best test for localization क्या होता है, and best test for watching up the metastasis क्या होता है? ठीक है, metastasis देखने के लिए. ठीक है, and best test to see for the extra renal spread, extra adrenal pheochromocytoma. ठीक है, extra adrenal pheochromocytoma देखने के लिए क्या है? ठीक है, most common site क्या है? ठीक है, most common site extra adrenal की. ठीक है, एक्स्ट्रा एड्रिनल की मोस्ट कॉमन साइट क्या है एक्स्ट्रा एड्रिनल फेओक्रोमोसाइटोमा की, एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट? ओके, एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ 10. So what is the most common symptom? Symptom is going to be headache जैसे बच्चे ने लिखा, but what is going to be the most common sign? Sign बच्चों ने नहीं बताया, that's going to be hypertension. ठीक है, so hypertension is not a symptom, it is a sign. So what will be the initial investigations? So we will see the catecholamines levels, and of course one more thing is vanillyl mandelic acid VMA levels. ठीक है, so VMA levels is also something which we are going to see. ठीक है, okay, VMA levels and catecholamines. And how will you confirm? Yes, how will you confirm the case? How will you confirm? So we have to check for the metanephrines. Okay, metanephrines. So how will you confirm? Confirm के लास्ट में M आता है, और इधर ये क्या आ गया बेटा? मेटानेफ्रिन्स आ गया. व्हाट इज द बेस्ट टेस्ट फॉर लोकलाइजेशन? हाँ जी, लोकलाइजेशन के लिए बेस्ट टेस्ट क्या है? एमआरआई करते हो. एमआरआई करोगे, किस चीज की एमआरआई करोगे? कौन सा साइन दिखता है? एड्रिनल्स बेटा, एमआरआई. हाँ ठीक है, तो एमआरआई एब्डोमेन करते हो, और कौन सा साइन दिखता है? लाइट हाउस साइन दिखता है. ठीक है, सॉरी, लाइट बल्ब साइन दिखता है. ठीक है, लाइट बल्ब साइन आपको दिखेगा. लाइट बल्ब साइन इज गोइंग टू बी देयर. सो बायोप्सी, नो वी डोंट डू बायोप्सी इन दिस केस. ठीक है, और बेस्ट टेस्ट फॉर मेटास्टेसिस क्या होता है? डोटा पेट करते हैं बेटा. एक्स्ट्रा एड्रिनल फेओक्रोमोसाइटोमा देखने के लिए क्या करते हैं? हाँ जी, क्या करते हो आप लोग? अच्छा, मेट्स के लिए नहीं, सॉरी, मेट्स के लिए वी विल डू देखो दिमाग से स्लिप हो गया. एक्स्ट्रा एड्रिनल फेओक्रोमोसाइटोमा के लिए वी गो फॉर डोटा पेट स्कैन, एंड मेटास्टेसिस के लिए क्या करते हैं? सो बेस्ट टेस्ट फॉर मेटास्टेसिस इज गोइंग टू बी MIBG स्कैन. वेरी गुड, MIBG. एंड मोस्ट कॉमन साइट फॉर एक्स्ट्रा ये एड्रिनल क्या हो जाती है? मोस्ट कॉमन साइट इज गोइंग टू बी ऑर्गन ऑफ जूकर कैंडल. ठीक है, ऑर्गन ऑफ जूकर कैंडल जो है वो मोस्ट कॉमन साइट हो जाता है. ठीक है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट? तो पहले अल्फा ब्लॉकर देते हैं, फिर बीटा ब्लॉकर देते हैं, फिर सर्जरी करते हैं. ठीक है, पहले अल्फा ब्लॉकर्स देते हैं बेटा. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पहले क्या दोगे? अल्फा ब्लॉकर्स, देन बीटा ब्लॉकर्स, देन सर्जरी. एंड रूल ऑफ 10. तो 10 में क्या है?
only 10% are going to be extraadrenal, only 10% are going to be benign, 10% are going to be in children, only 10% are associated with no hypertension, 10% are associated with normal blood pressure, 10% are only going to be bilateral, only 10% are going to be malignant. ठीक है, only 10% are going to be malignant. ठीक है, तो अच्छी चीज क्या है कि मतलब देखो, ध्यान से देखोगे ना तो ये अच्छा ट्यूमर है, ये ज्यादा बच्चों में नहीं जाता, ठीक है, ये बच्चों में नहीं जाता, एक्स्ट्राएड्रेनल नहीं जाता, मैलिग्नेंट नहीं जाता, बाइलैटरल नहीं जाता, ठीक है। बस एक याद रखना कि बीपी की प्रॉब्लम जो है ना इसमें बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है बच्चे। ये फेओक्रोमोसाइटोमा जो है हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। चलो, अब एक चीज मैंने आपको एक कंपैरिजन टेबल पढ़ानी है, ये वैसे तो मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन की वजह से हम लोग इसको एंडोक्राइन में पढ़ते हैं, और इसी के लिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बच्चा लिख रहा है सर कितना टाइम, सो देखो ये कंपैरिजन टेबल, अभी एंडोक्राइन हमारा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, इसके बाद हमारे पास दो बड़े सिस्टम्स हैं, हिमेटोलॉजी है एंड रेस्पिरेटरी है। सो आई थिंक कंपैरिजन टेबल, सो कंपैरिजन टेबल क्या है, देखो एक होता है रिकेट्स ऑस्टियोमलेशिया, ध्यान से समझना है इस बात को, एक होता है रिकेट्स ऑस्टियोमलेशिया और एक होता है प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, एक होता है सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, एंड एक होता है हाइपर कैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी, ठीक है, हाइपर कैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी। सो ये अब इन सब में हमें क्या समझना है कि वी हैव टू लुक आउट फॉर द लेवल्स ऑफ कैल्शियम, वी हैव टू लुक आउट फॉर द लेवल ऑफ पैराथायरॉयड, वी हैव टू चेक फॉर द लेवल्स ऑफ phosphates as well, ठीक है, we have to look out for the levels of phosphates as well as one more that is called as alkaline phosphate, that is ALP. So understand, तो रिकेट्स हो या ऑस्टियोमलेशिया हो, दोनों ही केस में आपको पता होना चाहिए कि विटामिन डी इज लेस। So if the levels of vitamin D are less, of course the levels of calcium is less, of course the level of phosphate is less, ठीक है, calcium is less, phosphate is less, ठीक है, but because the calcium level is less, the parathyroid levels are going to increase and of course ALP is going to increase because the bone is still to be formed, ठीक है। So ALP क्या होता है, bone formation में help करता है, ठीक है, bone formation में help करता है, ठीक है। अब अगर प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, सॉरी हाइपरथायरॉयडिज्म है, ठीक है, सो ओके लेट मी राइट डाउन फुल, नहीं तो आप लोग को फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म यदि है, ठीक है, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट पीटीएच एडिनोमा और समथिंग, ठीक है, पीटीएच एडिनोमा है अगर मान लो, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऑफ कोर्स योर पैराथायरॉयड लेवल्स आर गोइंग टू बी इंक्रीज सो मच दैट लीड्स टू इंक्रीज कैल्शियम, बट फॉस्फेट्स के ऊपर में इसका उल्टा रोल आता है। सो दिस इज द होल पॉइंट व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस टेबल, that calcium and phosphates are going to move in the same direction if it is vitamin D, but if it is parathyroid the things are going to be different, okay, the things are going to be different. But what about secondary hyperthyroidism? So let's understand why does even secondary hyperparathyroidism occur. So secondary hyperparathyroidism can occur, like for example, if a person is suffering from chronic kidney disease, okay, if the patient is suffering from chronic kidney disease, what is going to happen, the vitamin D levels are going to decrease, okay, the vitamin D levels are going to decrease, and if the vitamin D levels are going to decrease, please understand your parathyroid levels are going to increase. This we have seen in the first table itself, like if the vitamin D is decreased, then of course the parathyroid is increased, so that is called as secondary hyper. But please understand the main pathology is in vitamin D. So because sorry, the main feature now will be of the parathyroid and not the vitamin D, ठीक है। अब ये सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो गया है, तो इस केस में क्या होगा बेटा, ऑफ कोर्स हाइपर पैराथायरॉयड को हम लोग ध्यान में रखेंगे, क्या कि दिस इज गोइंग टू डिक्रीज, ठीक है, सॉरी व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ, हाँ प्लीज अंडरस्टैंड, बड़े ध्यान से समझना, सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के अंदर में ऑफ कोर्स योर vitamin D is less. So vitamin D is less, so what is going to happen, because your vitamin D is less, the calcium is going to decrease, but because your parathyroid is more, the phosphates are going to be, yes, phosphates are going to be more, ठीक है। ओ सर ये कैसे जस्टिफाइड है, ये कैसे जस्टिफाइड है, देखो जब भी हमारे पास में किडनी डिजीज होता है, ध्यान रखना इस बात को, जब भी हमारे पास में किडनी डिजीज होता है, सो phosphates are not excreted, so phosphates are not excreted, that's why they are going to be increased, they are going to be increased, whereas calcium is going to be decreased and parathyroid is going to be increased. Whereas if there is hypercalcemia of malignancy, of course calcium will be high, and because the calcium is high, first thing
Second thing, your parathyroid hormone is going to be decreased, and because it is getting decreased, what you have to understand that your क्या बोलते हैं, what you have to understand is that calcium is going to increase and the phosphates are going to decrease. Okay, the phosphates are going to be decreased, but hypercalcemia has nothing to do with bone formation, so ALP is normal, whereas in all other cases this is going to be increased, this is going to be increased. ठीक है, चलो. So now coming on to the management part of your DKA and HHS. ठीक है, so DKA and HHS. So I hope that you know that what is DKA. This is diabetic ketoacidosis, and HHS is something which is called as hyperglycemic hyperosmolar state. So in both of these cases, what is going to happen, that the ketone, that you know the these both are the complications of your diabetes. ठीक है, so now what is going to happen, तो क्या करना है हम लोगों को, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आईवी फ्लूइड लगाते हैं. ठीक है, सो आईवी फ्लूइड्स हम लोग लगाएंगे और उसमें हम लोग क्या देते हैं, 0.9% sodium chloride. 0.9% NaCl is something which we start on, and then we will add dextrose also. Why dextrose? Because of course, if your serum glucose level, okay, if your serum glucose levels are decreasing like less than 200, okay, if they are decreasing less than 200 mg per deciliter, then we can add what, we can add the dextrose as well. ठीक है, then insulin. So first of all you have to do the fluid correction, then you will come on to insulin. Okay, first of all you will do the fluid correction and then you will go on to the insulin. So IV insulin we have to give. Okay, so insulin is something which is given. Okay, and then we will give what, potassium. Okay, so then we will give what, we will give the potassium. So now comes to potassium. So potassium, please remember, if the serum potassium levels, okay, if the serum potassium levels is like less than 5.7 milliequivalents, then in this case milliequivalents per liter, then in this case we have to give potassium also, and in the end we can give bicarbonates as well. Okay, bicarbonate as well. Okay, bicarbonates can be considered. Okay, so just focus on these things, F, then I, then P. So if you can just observe, this is the alphabetical order. तो पहले हम लोग F से fluids collect करते हैं, then I insulin, and then P potassium is something which we correct after that. ठीक है, समझ में आ गया? That's great. So now coming on to the next part, and the next part is going to be the different. Okay, this is your question. Kusumal's breathing is seen in. हाँ जी, बताओ. कुसुमल्स ब्रीदिंग इनमें से किस में दिखता है? दिस इज योर क्वेश्चन. सो फर्स्ट जल्दी से मुझे बताओ, सो दैट आई कैन डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, कुसुमल्स ब्रीदिंग किस में दिखती है, जल्दी से मुझे बताओ, एंड देन आई हैव मेड ब्यूटिफुल ट्रिक्स फॉर यू ऑल. ठीक है, जस्ट लुक इन द क्वेश्चन. इफ दे राइट इट इज कुसुमल्स ब्रीदिंग इज क्लासिकली एसोसिएटेड विद, सी से स्टार्ट हो रहा है, सी वाला आंसर है, दैट इज कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस. कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस. बट अगर वो पूछते हैं इंडिकेटिव ऑफ, तो इंडिकेटिव ऑफ में आंसर आता है बेटा रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी. ठीक है, तो आंसर क्या आता है बेटा, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी. ठीक है, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी. तो ये आपका कुसुमल्स ब्रीदिंग है बेटा, इसको आपको जरूर याद रखना है. ठीक है, कमिंग ऑन टू द थायराइड कैंसर. ठीक है, कमिंग ऑन टू व्हाट, कमिंग ऑन टू योर थायराइड कैंसर का पार्ट. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन. और इसमें भी मेडुलरी कार्सिनोमा जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यदि आपको कोई एक कैंसर पढ़ के जाना है, सो यू कैन रीड द मेडुलरी कार्सिनोमा. सो थायराइड कैंसर, एज यू ऑल नो, देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ थायराइड कैंसर. व्हाट इज देयर? पहला होता है पेपिलरी कार्सिनोमा. पेपिलरी कार्सिनोमा के बाद में क्या आता है, फॉलिक्यूलर कार्सिनोमा. देन यू हैव गॉट मेडुलरी कार्सिनोमा. देन यू हैव गॉट एनाप्लास्टिक. ठीक है, एनाप्लास्टिक. ओके, थोड़ा उल्टा लिख देता हूँ, एनाप्लास्टिक cancer, and then you have got medullary cancer. Okay, so just remember this anaplastic is something which is the bad prognosis one, whereas papillary one is the good prognosis one. So जो जिसका भी prognosis good होता है वही most common भी होता है, and since it is a bad prognosis one, so it's having the least commonly occurring होता है ये. ठीक है, least common है ये. गुड इंपॉर्टेंट थिंग्स आर बिकॉज इट इज हैविंग अ बैड प्रोग्नोसिस. तो एक चीज हम याद कर सकते हैं, दैट इट इज सीन इन एल्डर पॉपुलेशन. इट इज सीन इन व्हाट, इट इज सीन इन द एल्डर पॉपुलेशन. एंड P for papillary, P for Parv. So my age is between 20 to 40 years, so you can easily remember. ठीक है, so this is something which you can remember from this. Okay, so now coming on to the genes. So remember, Parv is just like birth.
So BRAF gene, BRAF gene is something which is associated with papillary carcinoma of thyroid. ठीक है, समझ में आ गया? Yes. Now F is follicle, F is frog. ठीक है, तो कोई फ्रॉक डाल करके ऐसा सोचो कि somebody फ्रॉक डाल करके क्या कर रहा है, डांस कर रहा है, डांस को हिंदी में बोलते हैं रास। तो फ्रॉक डाल करके क्या कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, और डांस को हम लोग क्या बोलते हैं, रास बोलते हैं। सो दिस इज यू कैन रिमेम्बर द जीन। ठीक है, सो अभी मेड्यूलरी, तो मेड्यूलरी, ठीक है। सो मेडुलरी की स्पेलिंग में ही आता है ये आर और ई, ठीक है। हालांकि पेपिलरी भी बन सकता है उससे, तो बट यू कैन रिमेम्बर मेड्युलरी। सो दिस इज गोइंग टू गिव रेट जीन, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी द रेट जीन, ठीक है। सो दिस इज द रेट जीन, समथिंग विच यू हैव टू रिमेम्बर। तो ये हमारे पास में जीन्स है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। कमिंग ऑन टू द रिस्क फैक्टर्स, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कौन सा रिस्क फैक्टर जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है। सो जस्ट रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट थ्री, आई मीन HRT निमोनिक है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। अभी मेरे नाम से हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर किसी ने याद किया तो मैं बहुत मांगूंगा, बट कर लो, कोई बात नहीं, तुम्हें एग्जाम में फायदा होगा। सो H फॉर हशीमोटोज डिजीज, R फॉर रेडिएशन एंड T फॉर थायरोग्लॉसल सिस्ट, ठीक है। T फॉर थायरोग्लॉसल सिस्ट याद करना है, ठीक है। फॉलिकुलर कैंसर की अगर हम लोग बात करेंगे, सो फॉलिकुलर कैंसर इज एसोसिएटेड विद मल्टीनोडुलर गोइटर एज वेल एज आयोडीन डेफिशिएंसी, ओके। तो आयोडीन डेफिशिएंसी है। तो ये फ्रॉक डाल के डांस करने वाली लड़की का नाम क्या है, मिमी, ठीक है। इसका नाम क्या है, इस लड़की का नाम क्या है, मिमी नाम है इसका, मिमी। तो वो मिमी से मल्टीनोडुलर गोइटर एंड आयोडीन डेफिशिएंसी हो जाएगा। कमिंग ऑन टू द मोड ऑफ स्प्रेड, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दैट मोड ऑफ स्प्रेड इन all these four cases is something which you have to understand very 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 importantly। देखो, जिसके भी लास्ट में RY वर्ड आता है, जैसे पेपिलरी, मेड्यूलरी, ओके, पेपिलरी, सो RY, मेड्यूलरी, RY। तो इन दोनों के अंदर में लिम्फ इज द, सो RYLY, ठीक है, RYLY। तो ये आपको जो है ना याद रखना है, RY होता है बेटा, LY होता है, ठीक है। सो ये हमारा एक तरीका है याद रखने का, RYLY। ये दोनों के दोनों किस में आ जाएंगे बच्चे, ये दोनों के दोनों आ जाएंगे लिम्फ के थ्रू स्प्रेड होते हैं, ठीक है। और एनाप्लास्टिक, ठीक है। सो एनाप्लास्टिक, तो देखो एनाप्लास्टिक हो गया और इधर से फॉलिकुलर हो गया। सो फॉलिकुलर, अब ये नाचते नाचते इसके पैरों में, मिमी के पैरों में कांच चुभ गया, ठीक है। कांच चुभता है तो क्या निकलता है बेटा, ब्लड, ठीक है, ब्लड। तो ब्लड निकल रहा था, बेचारी नाचते नाचते गिर गई और इसकी जो बोन्स थी वो भी फ्रैक्चर हो गई, ठीक है, बोन भी फ्रैक्चर हो गई। तो ब्लड जो है बेटा, इट्स द मोड ऑफ स्प्रेड, बट मोस्ट कॉमन साइट फॉर मेटास्टेसिस, मोस्ट कॉमन साइट फॉर मेटास्टेसिस क्या है बेटा, बोन है, ठीक है। तो ये मिमी जो है नाचते नाचते कांच के ऊपर में नाच रही थी और इसकी हड्डी भी जो है वो टूट गई। सो ब्लड हो गया। और अब देखो एनाप्लास्टिक, सो एनाप्लास्टिक हैज दिस, एनाप्लास्टिक, so please remember this L is important, this L1 for your local spread, अब दूसरा L होता है लंग्स के लिए, ठीक है, लोकल स्प्रेड एंड लंग्स, ठीक है। अच्छा, पेपिलरी, पेपिलरी, P एंड L will always come together, so P for पेपिलरी, P यहाँ पे आपने क्या याद रख लेना है, इसको लिवर याद रख लेना है, ठीक है। और ये मेड्यूलरी, यहाँ पर भी क्या याद रख लेना, लिवर। तो ये L और L जो है वो साथ में आते हैं, लिम्फ भी आ गया और इधर से ये लिवर भी आ गया, तो आपने इसको बहुत इजीली जो है वो याद कर लेना है, ठीक है। बोन, और फॉलिक्यूलर में बोन जाती है, ये कैसे याद करोगे, फॉलिक्यूलर फ्रेजाइल, ठीक है। सो फॉलिकुलर भी होता है, फ्रेजाइल भी होता है, तो F और F से आप लोग इजीली जो है इस चीज को याद कर सकते हो। कमिंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हमें मुझसे कोई पूछेगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है, तो यही इसका जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, क्या, ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियस। आई एम सो सॉरी, मेरे को इसमें इमेज ऐड करनी चाहिए थी। ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियस इज समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड, वन थिंग, एंड दूसरा सेमोमा बॉडीज। तो ये दोनों जो है ना वो इसी के लिए हैं, सेमोमा बॉडीज एंड ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियस, ये आपको याद रखना है। एंड मेडुलरी के अंदर में आपको चीज याद रखनी है, अमाइलॉइड स्ट्रोमा। आई एम सो सॉरी, आई वुड हैव एडेड द इमेजेस एंड दीज इमेजेस आर इंपॉर्टेंट आल्सो। तो ये लेक्चर होने के बाद में बेटा एक बार प्लीज मुझे याद करा देना, सो दैट आई विल, मैं क्या करूंगा आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर में वो शेयर कर दूंगा। सो ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियस एंड सेमोमा बॉडीज एंड देन यू हैव गॉट अमाइलॉइड स्ट्रोमा इन द मेडुलरी, ये आपको जरूर 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 याद रखना है, ठीक है। पी से सेमोमा बॉडीज होता है, ठीक है, और ये पी के अंदर में आप लोगों को ऐसे याद कर लो, ऑर्फन एनी आई। सो ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियस हो गया, पी से सेमोमा बॉडीज हो गया, और पी से पेपिलरी कैंसर जो है वो हो जाता है, ठीक है, पेपिलरी कैंसर हो गया। तो ये बेटा आपका कैंसर का चार्ट है, ये
कैंसर का चार्ट आप लोगों ने भूलना नहीं है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कैंसर चार्ट, सो प्लीज डोंट फॉरगेट इट। ठीक है, कमिंग ऑन टू द हेमाटोलॉजी पार्ट नाउ। ठीक है, कमिंग ऑन टू द हेमाटोलॉजी पार्ट नाउ। ठीक है, सो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में देखो दो तरीके के ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, दिस पार्ट इज लिटिल ट्रिकी, दिस पार्ट इज लिटिल चैलेंजिंग, थोड़ा परेशान कर देने वाला पार्ट है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना पूरे अच्छे से अपने आप को, अपने मन को जो है इस पार्ट में लगाओ। दिस इज अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक, थोड़ा सा परेशान कर देने वाला पार्ट है, तो आप लोगों को अपना पूरा फुल अटेंशन जो है यहाँ पे देना पड़ेगा ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के अंदर। ठीक है, सो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में क्या होता है बच्चे, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में दो तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में दो तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, वन इज योर प्लग डिसऑर्डर्स लाइक प्राइमरी प्लग डिसऑर्डर्स, सेकेंडरी प्लग डिसऑर्डर्स, उस तरीके की जो है वो प्रॉब्लम होती है। और दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है प्लेटलेट प्लग डिसऑर्डर्स के बारे में। ठीक है, प्लेटलेट प्लग डिसऑर्डर, तो ये सारी चीजें बहुत तंग करती हैं, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप हो तो स्ट्रेस नहीं है। अरे बच्चों, आप हो तो मुझे स्ट्रेस नहीं है कि मेरे पास ऐसे बच्चे तो हैं जो पढ़ते हैं, है ना। चलो, सो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट वन बाय वन ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। तो पहले हम लोग बात करते हैं दैट ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स आर एक्चुअली ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट इज गोइंग टू बी प्राइमरी प्लग डिसऑर्डर एंड सेकेंडरी and second is going to be secondary plug disorder. ठीक है, so one is going to be primary plug disorder and second is going to be secondary plug disorder. Now primary plug disorder का क्या मतलब होता है? Primary plug disorders means that it is related to platelets. Primary plug disorders means it is related to platelets. ठीक है, एंड प्लीज रिमेंबर P एंड B लुक्स वेरी सिमिलर। आप देख रहे हो P और B एकदम सेम दिखता है। सो प्लेटलेट का प्रॉब्लम होता है, तो इट्स एक्चुअली द प्रॉब्लम इन द ब्लीडिंग टाइम। अंडरस्टैंड, दिस इज द प्रॉब्लम इन द bleeding time. So primary plug disorder, which is a disorder which is related to the platelets, is so P for P से primary plug, P से platelets, and यहाँ पर bleeding time का जो है वो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, किस चीज का प्रॉब्लम होगा यहाँ पे? ब्लीडिंग टाइम का जो है वो प्रॉब्लम होता है। ठीक है, whereas secondary plug disorder is something which has problem in the secondary, so the C is coming, it has problem with the clotting pathway. So clotting pathway बहुत बड़ा pathway है। clotting pathway के अंदर में है ना external pathway, internal pathway, वहां पे वो सारी चीजें आएंगी। external pathway, internal pathway नहीं हो पाएगा, बड़ी problems आ जाएंगी। बड़ी problems आना मतलब जैसे heme arthrosis। ठीक है, हीम आर्थरोसिस, कैन यू अंडरस्टैंड? हीम आर्थरोसिस मतलब you have got blood accumulation in the joints like that, heme arthrosis, बड़ी बात। प्राइमरी प्लग में छोटी बात है, पेटिचिए, ठीक है, परप्यूरा, ये ठीक है कि इन तरीकों की छोटी छोटी बातें हैं। तो अगर वो प्लेटलेट का डिसऑर्डर है, चलिए अब हम लोग प्राइमरी बात करेंगे, प्राइमरी प्लग डिसऑर्डर, एंड इफ प्राइमरी प्लग डिसऑर्डर इज अ प्लेटलेट डिसऑर्डर, सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट सबसे पहले हमें प्लेटलेट में देखना होता है कि इफ द प्लेटलेट काउंट is increased or decreased. So if your platelet count, please understand, if your platelet count is decreased, यहीं से हमारा सारा का सारा जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाता है। Why? Because your platelet count is decreased. Now since your platelet count is decreased, we have to check the immature platelet count. ठीक है, immature platelet count, immature मतलब जो वो फैक्ट्री में माल है कि नहीं वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, so we have to check for immediately, we have to check for immediately of the immature platelet count। ठीक है, we have to check for the immature platelet count. So जब हम immature platelet count देखते हैं, if immature platelet count is less, like less than 6% or something, then this is okay। ठीक है, so यहाँ पर क्या होता है कि I mean this is okay मतलब मेगा कैरियोसाइट्स ही नहीं बन रहे हैं। So this is a megakaryocytic thrombocytopenia। बट इफ इट इज लाइक मोर देन 6% बन रहे हैं फिर भी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, बन रहा है बट फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है वो हमें फिर हम लोग को चेक करना पड़ता है। तो उसको चेक करने में वी हैव सीन लाइक वी हैव गॉट लाइक 3-4 थिंग्स। ठीक है, जहां पर हम लोगों को पता है कि प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है बट किस किस रीजन की वजह से हो रहा है। तो उसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं? थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा। ठीक है, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा, दिस इज वन थिंग। ठीक है, देन सेकंड क्या आ सकता है? इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा, देन क्रॉनिक इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा, देन वन मोर इज यस एक और चीज होता है दैट इज DIC। व्हाट इज DIC? डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर coagulation. If it is a thrombotic thrombocytopenic purpura, what will you see on the smear? Schistocytes। ठीक है, so the smear is going to show you what? Schistocytes। ठीक है,
स्किस्टोसाइट्स हम लोगों को दिखेंगे एंड मोस्टली हम लोग देखते हैं थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा में कि किडनीज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। सो इफ द किडनी इज ऑल्सो डैमेज्ड, ठीक है, इफ द किडनीज आर ऑल्सो डैमेज्ड देन किडनी फेलियर हो गया, डायरिया हो गया, ठीक है, किडनी फेलियर हो गया, डायरिया हो गया, एंड इफ यू आर सीइंग schistocytes, so can you see the presentation is very much similar to hemolytic uremic syndrome, HUS, है ना, वहां पर भी किडनी खराब हो जाती है, डायरिया होता है, schistocytes दिखते हैं। So this is how you can remember thrombotic thrombocytopenic purpura. And what is the treatment? Yes, what is the treatment? So we have to give the plasmapheresis, ठीक है, plasmapheresis is the first line of treatment, and this is something which is more than sufficient for you to remember. Now immune thrombocytopenic purpura, if it is acute, it is secondary to some viral infection, so ये history दिया जाएगा आप लोगों को कि it is happening to some secondary to some viral infections, okay, like that. So what you have to do in acute cases, just wait and watch, and platelets will of course come to normal, जैसे हमने देखा ही है कि डेंगू वायरस के केस में ये होता है। बट इफ इट इज हैपनिंग क्रॉनिकली, so chronic ITP means some autoimmune disease is something which can be expected. So what you have to give in this case, we have to start the steroids, and generally it is seen in what? It is seen in females, ठीक है। और some prolonged illness, okay, understand, some prolonged illness can also be responsible for this. And then we have got DIC now. So in DIC, what is going to happen? Even the clotting time will be increased, okay. So it's a disease of clotting time as well as bleeding time, okay. Clotting time is also going to get increased, so it's a disease of both of them, okay. Now if the platelet count is decreased, okay, these problems can occur, and yes, of course, this can occur. But for example, if the platelet count is normal, now the problem is that platelet count is normal, but still the problem is there. Why the problem is going to be there? Because now the problem is with the adhesion, okay. Now the problem is going to be the adhesion problem, okay. Adhesion problem is going to be there, or I should say not adhesion, but the function of platelet is hampered, okay. Function of platelet is hampered. So what we have to see if the function of the platelet is hampered. So देखो एक कुछ एक चीजें हैं यहाँ पर, ये आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा। तो क्या होता है, अब प्लेटलेट को एग्रीगेट करने के लिए, ठीक है, आई जस्ट राइट इट फॉर यू। सो प्लेटलेट इफ इट वांट्स टू एग्रीगेट, ठीक है, अगर प्लेटलेट को एक दूसरे के साथ जुड़ना है, सो इट रिक्वायर्स एडीपी, इट रिक्वायर्स कोलेजन। So if ADP and collagen are decreased, if both of them are decreased, then we can, हम तब समझ सकते हैं that this is a either because of aspirin problem है या फिर Glanzmann thrombasthenia, Glanzmann thrombasthenia. बट फॉर एग्जाम्पल अगर ये दोनों ठीक हैं बट स्टिल प्रॉब्लम हो रहा है, सो वी हैव टू चेक। तो यहाँ पे हम सस्पेक्ट करते हैं एब्सेंट रिस्टोसेटिन एग्रीगेशन, कुछ नहीं, सीधा रटो इसको, एब्सेंट रिस्टोसेटिन एग्रीगेशन। यदि ऐसा कुछ एब्सेंट आपको दिख रहा है, सो देन वी कैन अंडरस्टैंड आइदर इट इज अ GP1B9 defect, GP1B9 defect is going to be there, that is in the Bernard-Solier disease, okay, Bernard-Solier disease, okay. So देखो B से होता है बड़ा, G से होता है ग्रैंड, दोनों का मतलब सेम है, G से है ग्रैंड, B से है बड़ा। So GP1B9 deficiency is Bernard-Solier disease, but one more is there, that is called as von Willebrand disease because of deficiency of the von Willebrand factor. बट कभी कभी एग्रीगेशन में डिफेक्ट नहीं होता है, द डिफेक्ट इज एसोसिएटेड विद, ध्यान से समझना, द डिफेक्ट इज एसोसिएटेड विद योर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इज अफेक्टेड विद न्यूमोनाइटिस। तो ये अगर है तो फिर हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि नाउ वी आर नॉट डीलिंग, प्लीज अंडरस्टैंड, नाउ वी आर नॉट डीलिंग विद द प्लेटलेट का प्रॉब्लम, ठीक है, अब वेसल में प्रॉब्लम है। If it is associated with like this, so please it is, remember, it is suggestive of vasculitis. It is suggestive of what? Vasculitis. And in order to understand like if it is a vasculitis yes or no, तो फिर हम लोगों को देखना होता है कि इसकी एज क्या है। सो नाउ वैस्कुलाइटिस दोनों में हो सकता है, एडल्ट्स में भी हो सकता है, चिल्ड्रन में भी हो सकता है। सो वैस्कुलाइटिस अगर चिल्ड्रन में हो रहा है तो बहुत इजीली यू कैन रिमेंबर, इट इज हिनोश-नॉलिन परप्यूरा, ठीक है। सो उसमें हिनोश-नॉलिन परप्यूरा में क्या आता है,
अब छोटे बच्चे को क्या सिखाओगे? ए फॉर एप्पल, ठीक है, सो ए फॉर एप्पल इज इंपॉर्टेंट, सो ए फॉर your arthralgia, then A for your abdominal pain is going to be there, ठीक है. But if it is like vasculitis in adults, तो फिर हम लोगों को क्या देखना पड़ता है कि if the problem is in adults, then we have to check, like for example if there is malar rash, कल भी हमने डिस्कस किया था, if it is malar rash then any lupus is the problem, okay. If there is asthma like features then it can be Churg-Strauss syndrome, है ना, एलर्जी और ये सब कल हमने डिस्कस किया था, ठीक है, Churg-Strauss syndrome and everything. Then if it is a saddle nose sort of a history, then it is more likely what? It is more likely Wegener's granulomatosis, ठीक है. But remember Churg-Strauss is P ANCA positive and saddle nose and Wegener's is C ANCA positive. P ANCA positive, C ANCA positive. P ANCA positive, C ANCA positive. Okay, so this is something which you have to remember. ठीक है, function of platelet and platelet count. So this was about the primary plug disorder. Now coming on to the secondary plug disorders. ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा secondary plug disorders के बारे में बात करते हैं. उसमें दो निमोनिक हैं, पहले आप वो दो निमोनिक समझ लो तो वो आपके लिए चीजें easy हो जाएंगी. So you have got something which is called as HAPPI and WEPT wept. ठीक है, so wept का क्या मतलब है कि बच्चा नाराज है, परेशान है, रो रहा है, और हैप्पी का क्या मतलब है कि बच्चा हैप्पी है, ठीक है. सो हैप्पी इज दिस एपी, APTT इज फॉर आई से इंट्रिंसिक पाथवे एंड H फॉर हेपेरिन, ठीक है. whereas wept is PT is prothrombin, E for extrinsic pathway and which is damaged by nothing but warfare, ठीक है. सो ये एक निमोनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, सो प्लीज इसको मत भूलना, ठीक है. तो ये चीज आपको जरूर 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 पता होनी चाहिए, ठीक है. सो ये चीज जो है ना बेटा, ये जरूर पता होना चाहिए, इसको हम लोगों ने नहीं छोड़ना, ठीक है. सो ओके, एंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वेप्ट, वो किसके लिए होता है? वो जनरली 7 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, फैक्टर 5 है, फैक्टर 7 है, इन लोगों के लिए पीटी होता है, ठीक है. और पीटी होता है इन दोनों के लिए, फैक्टर 5 फैक्टर 7 के लिए, ठीक है. एंड फैक्टर 10, हाँ जी यहाँ लिख देता हूँ, चलो फैक्टर 10 जो है वो दोनों के लिए होता है, ठीक है. फैक्टर 10 जो है वो दोनों के लिए, एक्सट्रिंसिक के लिए भी और इंट्रिंसिक के लिए भी. सो अगर वो सेकेंडरी प्लग डिसऑर्डर है, प्लीज ध्यान से समझ लो, अगर वो एक सेकेंडरी प्लग डिसऑर्डर आप लोगों को लग रहा है, so first of all we have to check for PT, that is prothrombin time. So if the prothrombin time is only increased, so if only PT is increased, then we have to understand like either it will be a, हाँ जी 5 और 7, तो याद रखो कि वो या तो 5 होगा या 7 होगा. So most likely क्या होता है? Most likely it is factor 5, ठीक है, factor 7. And if you know 2, 7, 9, 10 is something which is vitamin K dependent, so that's why इसकी deficiency भी हो सकती है या फिर vitamin K की deficiency भी हो सकती है. So we have to give vitamin K in this patient as well as fresh frozen plasma as well. Next we see about only APTT. So if only APTT is increased, then we have to check. अगर only APTT, तो जहां पर भी A word आता है तो children तो आएंगे, क्योंकि बच्चे क्या सीखते हैं, क्या सीखते हैं? ABCD. तो चाइल्ड में भी हो सकता है, एडल्ट में भी हो सकता है. यदि चाइल्ड में आप सस्पेक्ट कर रहे हो, देन वी हैव टू चेक कि अगर वो गर्ल चाइल्ड है, ठीक है, तो फिर हमें पता है कि उसके अंदर में वॉन विलीब्रांड डिजीज हो सकता है, हीमोफीलिया सी हो सकता है, ठीक है, वॉन विलीब्रांड डिजीज भी हो सकता है, हीमोफीलिया सी भी हो सकता है, ठीक है. बट अगर वो एक लड़का है तो लड़के के अंदर में हीमोफीलिया ए भी हो सकता है, क्रिसमस डिजीज भी हो सकता है एंड हीमोफीलिया सी भी हो सकता है, ठीक है. तो ये तीनों चीजें जो है वो हो सकती हैं. सो हीमोफीलिया सी, हीमोफीलिया ए, सो हीमोफीलिया ए इज फैक्टर 8, क्रिसमस डिजीज फैक्टर 9, हीमोफीलिया सी इज फैक्टर 11, ठीक है. और ये चीज जो है आप लोगों को समझनी पड़ेगी. बट अगर वो मान लो एडल्ट में हो रहा है, तो फिर एडल्ट्स के अंदर में अगर हो रहा है तो व्हाट वी हैव टू सी, वी हैव टू सी इफ देयर इज थ्रोम्बोसिस और नॉट, ठीक है. एडल्ट्स में हम लोग देखते हैं थ्रोम्बोसिस है या नहीं है. सो अगर थ्रोम्बोसिस है, ठीक है, अगर थ्रोम्बोसिस है एडल्ट्स के केस के अंदर में, देन वी हैव टू चेक कि आइदर इट कैन बी फैक्टर 12 डेफिशिएंसी, ठीक है, जो कि बहुत कॉमन है, या फिर अगर वो फीमेल है और उसको सपोज करो
रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है, ठीक है, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है अगर ऐसी फीमेल के अंदर में, देन एप्ला सिंड्रोम जो है हो सकता है। दोनों के अंदर में हम लोगों को क्या देना पड़ेगा, वी हैव टू सप्लाई हेपेरिन, ठीक है, वी हैव टू सप्लाई हेपेरिन। बट देन वन मोर थिंग, इफ इट इज बोथ नॉर्मल, अगर दोनों ही नॉर्मल है, पीटीबी और एपीटीटीबी, देन व्हाट कैन बी द केस, इट कैन बी फैक्टर 13 डेफिशिएंसी, ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरीके से याद करते थे, हाँ, तो हम लोग इसको कैसे याद कर सकते थे कि देखो भाई, पीटी भी नॉर्मल है, एपीटीटी भी नॉर्मल है, दोनों नॉर्मल है, तो दिक्कत क्या है, ठीक है। सो फैक्टर 13 डेफिशिएंसी कैन बी देयर। अब मान लो बोथ आर इंक्रीज्ड, देन, तो अगर दोनों इंक्रीज आपको लग रहे हैं, तो एक चीज जो हमें समझ में आनी चाहिए वो क्या है, वो है थ्रोम्बिन टाइम, ठीक है, थ्रोम्बिन टाइम। सो वी हैव टू चेक फॉर व्हाट, थ्रोम्बिन टाइम। तो देखो, अगर थ्रोम्बिन टाइम नॉर्मल है, सो इट इज गोइंग टू बी फैक्टर 10 डेफिशिएंसी। बट वहीं अगर आपका थ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज्ड है, ठीक है, तो फिर हम लोगों को देखना पड़ता है, क्योंकि थ्रोम्बिन टाइम इज ऑफ द related to the platelet count as well. So if the platelet count is low, that means now platelet count is also low and clotting factor में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो DIC होगा, ठीक है। प्लेटलेट काउंट भी कम है, क्लॉटिंग फैक्टर में भी प्रॉब्लम है, इसीलिए तो ये एपीटीटी और पीटी भी इंक्रीज है, तो सब कुछ ही इंक्रीज है, और प्लेटलेट काउंट भी कम है, तो DIC हो जाता है, ठीक है। सारे टाइम्स इंक्रीज हो गए क्योंकि वी डोंट हैव क्लॉटिंग फैक्टर, DIC के अंदर में क्लॉटिंग फैक्टर भी कम हो जाता है, सो ऑल टाइम्स आर गोइंग टू इंक्रीज एंड प्लेटलेट्स भी जो है वो कम हो जाती हैं। दिस इज DIC। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट थिंग, कि अगर प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है फिर भी थ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज है, so that is because of afibrinogenemia, okay, afibrinogenemia, okay, afibrinogenemia, ठीक है। तो ये चार्ट, आई नो ये चार्ट देखने में बहुत हैवी लगते हैं, बट बिलीव मी, देयर इज नथिंग, नो गुड वे टू रिमेम्बर दीज चार्ट्स रादर देन जस्ट लुकिंग एट बार 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 बार, ठीक है। Coming on to multiple myeloma, so you have got a criteria that is called as Crab slum criteria. Okay, Crab slum criteria. So what is C? C for increased calcium. Okay, so calcium increased. Okay, yes. What is, फटाफट बताओ, what is A? What is R? जल्दी जल्दी जल्दी. Yes, what is R? Renal insufficiency. हाँ जी. What is A? A for your anemia. Very good. What is B? Bone. ठीक है. So presence of bone lesions. So this is crab. ठीक है. What is slum then? S for 60. So nearly 60%. So 60% clonal plasma cells. ठीक है. 60% plasma cells in the bone marrow. 60% plasma cells in the bone marrow is going to be there. Then what is L and I? So it's a light chain ratio. ठीक है. Light chain. ऐसे याद रख लो. Free light chain ratio is 100. ठीक है. Free light chain ratio is going to be 100. And what is M? M is MRI with more than equal to one focal lesion in the brain. ठीक है. Focal lesion in the brain, this is MRI. ठीक है. Focal lesion in the brain, that is called as what? That is called as MRI. ठीक है. So what are you going to see on imaging? हाँ, चलो जल्दी अब बताओ. अभी इतनी देर से जो सब लोग आंसर लिखे जा रहे हो, अब मुझे बताओ जल्दी. What you will see? Lateral X-ray cranium और lateral skull X-ray. हाँ जी. What you will see? बताओ. Punched out lytic lesion. Raindrop sign. Very good, Abdullah Sheikh. Raindrop sign. Very good, beta. Raindrop sign. ठीक है. Punched out lytic lesion and the raindrop sign is going to be there. Very good. What you will see in the smear? हाँ जी. Smear में क्या दिखेगा बेटा? Rolleaux formation. हाँ जी. The stagging of RBC. बिल्कुल सही बात है. और बताओ जल्दी से. बच्चों, एम स्पाइक्स तो दिखेगा बेटा, वो तो चलो ठीक है. मोर देन 3 grams ऑफ एम प्रोटीन विल बी देयर. ठीक है, ये आपको पता होता है. ठीक है. क्रैब दिखेगा, 10% वो दिखेंगी, एम प्रोटीन स्पाइक्स दिखेंगी. ओके, बट आपको स्मीयर में क्या दिखेगा?
Smear में one will be your intranuclear bodies and other is going to be your intracytoplasmic bodies. समझो आप इस बात को. One is going to be intranuclear bodies, one is going to be intranuclear bodies, one is intracytoplasmic bodies. Can you name the bodies? Intracytoplasmic is called Russell's body. Russell's body is intracytoplasmic, whereas intranuclear body is Dutcher body. It is Dutcher body. ठीक है. सो न्यूक्लियस के अंदर होता है डचर बॉडी. ठीक है. सो जैसे हम बोलते हैं ना यार क्या एंडी खाना बनाया है ना, बोलते हैं ना ऐसे क्या एंडी खाना बनाया मतलब बेस्ट बनाया. सो एंडी मतलब एन फॉर न्यूक्लियर, डी फॉर डचर बॉडीज एंड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक बॉडीज आर रुसेल्स बॉडीज. ठीक है. एंटी साइटोप्लाज्मिक आर रुसेल्स बॉडीज एंड एंटी न्यूक्लियर इज द डचर बॉडी. ठीक है, समझ में आ गया. चलो कमिंग ऑन टू द, हाँ मॉट सेल्स भी इसी में ही दिखते हैं, वो बात भी ठीक है, मॉट सेल्स भी जो है वो इसी में ही दिखते हैं. I'll post the picture, don't worry. ठीक है. Coming on to myeloproliferative diseases. So myeloproliferative diseases आपको क्या याद रखना है? So we have got 3 myeloproliferative diseases. One is called as polycythemia vera. Okay, polycythemia vera. Then essential thrombocytosis, essential thrombocytosis. And then the third important one is CML, if you can remember, and one is myelofibrosis as well. Myelofibrosis as well. So what you have to understand, RBC, as the name suggests, only in polycythemia it is going to increase. Rest in everyone it is going to get decreased. Why? Because myeloproliferative means, myelo means bone marrow. Okay, bone marrow. And remember, proliferative means the cells, the count of cells are going to increase. Okay, the cells count is increasing. So it's a myeloproliferative. That means there is no space inside the bone marrow. बस पॉलीसाइथेमिया में आरबीसी बढ़ता है, बाकी तो हर जगह आरबीसी कम हो जाता है. Why? Because there is no space for the manufacturing of these cells. There is no space for manufacturing of these cells. So what about WBCs? So WBCs is also going to increase in this. बाकी सबके अंदर में this is going to be decreased. What about platelet then? हाँ जी, what about platelet? So please understand, प्लेटलेट पॉलीसाइथीमिया में तो इंक्रीज होगा ही, बट थ्रोम्बोसाइटोसिस तो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा. इनफैक्ट सीएमएल में भी प्लेटलेट इंक्रीज हो जाता है. माइलोफाइब्रोसिस में इट्स गोइंग टू बी डिक्रीज्ड. सो हाउ टू डिफरेंशिएट? सो दैट्स व्हाई वी डू JAK2 mutation. So we check for the JAK2 mutation that is going to be there in, that is not going to be there in CML because यहाँ पर BCR ABL जीन म्यूटेशन होती है. बाकी इन तीनों जगहों पे you are going to get this. ठीक है, बाकी तीनों जगहों पे you are going to get the JAK2 mutation. JAK2 mutation. Coming on to a mnemonic of Marfan's, I know this deserves a special place as a genetic topic, but genetic में और ज्यादा कुछ है नहीं मेडिसिन से. सो इसीलिए मैं आप लोगों को बस मार्फिन्स के बारे में बता रहा हूँ. सो एम से, बिकॉज आई हैव गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल निमोनिक, एम से यू हैव टू रिमेंबर इट इज माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स. पूछते हैं ना कि व्हाट यू आर गोइंग टू सी एज अ कार्डियक मैनिफेस्टेशन, सो इट इज माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स एंड ऑफ कोर्स यू विल हैव एन्यूरिज्म ऑफ एयोर्टा, एयोर्टिक एन्यूरिज्म. ठीक है. देन अब आईज की मैनिफेस्टेशन, तो एस से होता है सबलक्सेशन ऑफ द लेंस. ठीक है, सबलक्सेशन ऑफ लेंस. एंड व्हाट इज दिस आर? आर से होता है रेटिनल डिटैचमेंट, क्योंकि वो इंसान इतना बड़ा है कि रेटिना इज नॉट एबल टू कवर द एंटायर ऑफ द ग्लोब. ठीक है, सो रेटिनल डिटैचमेंट इज गोइंग टू बी देयर. सो व्हाट इज द डिफेक्ट? यस, जीन डिफेक्ट इन मार्फन्स इज फिब्रिलिन जीन. ठीक है, इट इज गोइंग टू बी फिब्रिलिन जीन डिफेक्ट. ठीक है, फिब्रिलिन जीन, FBN gene mutation is going to be there. Fibrillin gene is going to be there. What about A? There will be arachnodactyly. ठीक है, there will be what? There will be arachnodactyly. What is N? Negative nitroproside test. ठीक है, negative nitroproside test. Each line of this mnemonic is very very important, so please don't forget this. And ये subluxation कैसा है? So Marfan is starting from M. So the subluxation of the lens is upward and outward subluxation. Upward and outward subluxation is seen in the Marfan, whereas you have got homocystinuria. Homocystinuria, and in homocystinuria you will have inward and downward subluxation of the lens. Inward and downward subluxation of the lens. ठीक है, inward and downward subluxation of the lens. So this is about the Marfan syndrome. Coming on to the next one, this is chronic myeloid leukemia.
Okay, so chronic myeloid leukemia, you know, everybody knows, not only me, everybody says, sir, BCR ABL. Okay, so BCR ABL gene mutation is going to be there. What is B? B stands for there is going to be basophilia, and this is the only thing, this is the most important thing. जब भी उनको CML के बारे में पूछना होता है, they always give you this hint of, they always going to give you this one, this hint that is called as basophilia. ठीक है, they are going to give you this hint that is basophilia. What is C now? तो C क्या होता है? C is actually chromosome number 922 translocation. 922 translocation is going to be there. ठीक है, then coming on to R. So R क्या है? reduced alkaline phosphatase level, reduced ALP. तो ये भी पूछते हैं वो लोग, आपको ALP का values दे देते हैं, so आप CML जो है वो सस्पेक्ट कर सकते हो. Then what is ABL? A for your blast crisis. Okay, so we say that in the accelerated phase it is going to show blast crisis. Okay, blast crisis. See, some terms might sound you tricky, like blast crisis and everything, तो उसके लिए proper time निकालेंगे कभी, we will discuss entire medicine also, but अभी के लिए just remember this, and this is something which is enough for you. What is another B? This is bone marrow is going to show hypercellularity. So bone marrow is going to show what? Hypercellularity. What is L? L is leukocytosis and left shift. Okay, leukocytosis is going to be there, plus there is going to be left shift is going to be there. So ये BCR ABL जो अगर आप याद कर लोगे, so then that is going to be very good for you. So okay, coming on to question time. ठीक है, now be ready, get yourself ready. I will ask you a lot of questions now, because I know पैसिव लर्निंग से ज्यादा एक्टिव लर्निंग जो है वो ज्यादा टाइम तक आप लोगों को याद रहती है. सो आई एम गोइंग टू राइट सम 6-7 डिजीजेस एंड देन यू विल टेल which type of amyloid is high in these cases. ठीक है, type of amyloid which is high in these cases. Okay, first, multiple myeloma. Second, hemodialysis associated. Alzheimer disease. Multiple myeloma is AL. Hemodialysis associated is A beta 2. Alzheimer is going to be A beta. ठीक है, A beta Alzheimer. हाँ जी. Medullary carcinoma of thyroid. Quickly tell me. Medullary cancer of thyroid. A cal. तो ये जरूर याद रखना है आपने. देखो, एल्जाइमर ओल्ड एज में होता है. ठीक है, ओल्ड एज में एक बेटा ही अपने पास रखता है बूढ़े इंसान को, दोनों बेटे नहीं रख सकते. हीमोडायलिसिस के टाइम पे दोनों बेटे रख लेते हैं, बीटा 2. ठीक है, सो 2 बेटा मतलब हीमोडायलिसिस, 1 बेटा मतलब एल्जाइमर. ठीक है, मल्टीपल माइलोमा इज AL, मेडुलरी कार्सिनोमा इज A cal. हाँ जी, कैल्सिटोनिन, दैट्स गुड. कमिंग ऑन टू मैनेजमेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन. जस्ट वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि इसमें हम लोग क्या देते हैं? टीनोफोवर. ठीक है, एंड एबाकावीर. ओके, देन लैमिव्यूडीन. ठीक है, सो ये जो ड्रग्स हैं ये हम लोग देते हैं, एंड इंटरफेरॉन अल्फा ऑल्सो. सो ये सारी ड्रग्स जो हैं हम लोग देते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. और ये कब देते हैं? इफ द हेपेटाइटिस बी वायरस DNA इज मोर देन 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml. ठीक है, कमिंग ऑन टू सिकल सेल एनीमिया. व्हाट इज द ट्रीटमेंट? ठीक है, इसमें बार बार ट्रीटमेंट पूछा जाता है. स्लाइड दिखाते हैं सिकल सेल की और देन दे आस्क यू द ट्रीटमेंट. सो प्लीज रिमेंबर दैट यू हैव गॉट ग्लूटामिक एसिड, बिकॉज ग्लूटामिक एसिड की ही कमी होती है. देन हाइड्रोक्सीयूरिया. ठीक है, हाइड्रोक्सीयूरिया. ओके, एंड देन वॉक्सीलोटॉर और क्रिजानलीजुमैब. इसमें से सारे भूल जाओगे तो भी चलेगा, 2 मत भूलना, ग्लूटामिक एसिड एंड हाइड्रोक्सीयूरिया. तो हाइड्रोक्सीयूरिया इज समथिंग व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो ये आपने जो है वो नहीं भूलना है. ठीक है, कमिंग ऑन टू कार्सिनोइड ट्यूमर नाउ. सो कार्सिनोइड ट्यूमर में क्या क्या पूछा जाता है वो भी एक निमोनिक से मैं आपको बता देता हूँ. चलिए, सो CARCINOID, कार्सिनोइड. सो सी क्या है बेटे? कार्सिनोइड में यू विल हैव क्यूटेनियस फ्लशिंग. ठीक है, पूरा का पूरा क्या दिखेगा आपको? रेडनेस दिखेगा.
ए से अस्थमा और वीजिंग कैन बी देयर। आर से राइट साइडेड ऑफ हार्ट लीजन्स होते हैं, ठीक है, राइट साइडेड हार्ट लीजन्स होते हैं। देन सी से क्या दिखेगा आप लोगों को बेटा, क्रैम्पिंग दिखता है, ठीक है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स के साथ में रिमेंबर डायरिया। सो व्हाई, बिकॉज कार्सिनोइड सिंड्रोम, देखो पूरा कार्सिनोइड मुझे सिर्फ इसी एक लाइन की वजह से सिखाना पड़ रहा है, बिकॉज कार्सिनोइड में क्या होता है, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ सेरोटोनिन। सो नाम से ही आपको पता लग रहा है, द वन विच इज गोइंग टू इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर गट। तो क्रैम्प्स एंड डायरिया ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एक ये चीज पता होनी चाहिए बेटा, एक क्यूटेनियस फ्लशिंग पता होना चाहिए। ये दोनों चीजें तो बहुत ज्यादा वो लोग पूछते हैं। आई से क्या होता है, आई से इंक्रीज, ये जो मैंने आपको बताया, इंक्रीज लेवल ऑफ सेरोटोनिन, ठीक है, इंक्रीज लेवल ऑफ सेरोटोनिन इज गोइंग टू बी देयर। हेलो SRK 907, देखो कितनी अच्छी बात है, खुद शाहरुख खान जी भी आए हैं ना मेरी लेक्चर को पढ़ने के लिए, ठीक है। एंड एन से क्या है बच्चे, नियासिन डेफिशिएंसी, ठीक है, नियासिन डेफिशिएंसी इज गोइंग टू बी देयर। ये भी एक MCQ है जो कि वो लोग ज्यादातर पूछते हैं, नियासिन डेफिशिएंसी। इट इज अ ओरिजिन, तो ओरिजिन क्या है बेटा, ऑफ कोर्स इट्स अ न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, ठीक है, ये बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया, बट यू शुड नो दैट इट्स अ न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर दैट इज गोइंग टू बी देयर, ठीक है। आई और डी को आप लोग छोड़ सकते हो, डी एंड आई एक्चुअली मिला करके यू कैन रिमेंबर इट इज डिस्टेंट मेटास्टेसिस आर आल्सो गोइंग टू बी कॉमन। बट तीन चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है कि कम क्या है, नियासिन, ज्यादा क्या है, सेरोटोनिन, जिसकी वजह से क्या होता है हम लोग इसमें डायरिया होता है, ठीक है। दूसरा और क्या हो सकता है, क्यूटेनियस फ्लशिंग हो सकती है। सो ये जो चीजें हैं ना बच्चे, ये दो तीन चीजें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। कमिंग ऑन टू डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, एक्चुअली डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हम लोग CVS में करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, एक बार यहीं पे देख लो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। सो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, मैं वो आपको समझा देता हूँ। देखो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में योर वेंट्रिकल इज गोइंग टू बी डायलेटेड, ठीक है, अंडरस्टैंड, वेंट्रिकल इज गोइंग टू बी डायलेटेड, ठीक है, वेंट्रिकल इज गोइंग टू बी डायलेटेड। नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी इज, सबसे पहली चीज तो जो बार बार लोग पूछते हैं वो ये है कि व्हाट इज द इन्फेक्शियस कॉज, ठीक है। सो इफ दे आस्क यू व्हाट इज द इन्फेक्शियस कॉज ऑफ dilated cardiomyopathy, so you should know that Chagas disease is responsible for doing the dilated cardiomyopathy, ठीक है। other causes में, other causes also you should remember, ठीक है, what are the other causes, so hemochromatosis, ठीक है, hemochromatosis, ठीक है, hemochromatosis is something that is also responsible for this. In fact, doxorubicin toxicity is also responsible for this, ठीक है, doxorubicin toxicity is also responsible for this, ठीक है। So how will so what will be the investigation which we will do, so investigation we have to carry out echo, ठीक है, echocardiography, because it is going to show you decrease in the ejection fraction, ठीक है, and one more thing is the your ventricular dilatation, तो दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है, that is going to be there, ठीक है। So what is the treatment, so treatment क्या है, so because it is dilated, ठीक है, dilated है बहुत ज्यादा, सो हम लोग क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स दे देते हैं, ठीक है, ताकि आराम से बहुत सारा ब्लड ले करके मतलब हार्ट के ऊपर उतना प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। सो इट्स वेरी सिंपल, रिमेंबर A for you can give your ACE inhibitors, then D for you can give your diuretics, and then of course sodium restriction should be there, ठीक है। So all these things you have to remember, and yes, ऐसा क्वेश्चन में लिखते हैं ये लोग, all heart chambers are dilated, ठीक है, all heart chambers are dilated, इस तरीके से लिखते हैं। So this is all about your hematology. Also coming on to the last part of today's class, last part discussion, that is the respiratory thing now, ठीक है, respiratory thing now। तो respiratory में मैं कम पढ़ाऊंगा, ज्यादा पूछूंगा, ठीक है। So I hope you all are ready, हाँ जी, I hope you all are ready। चलो respiratory system से पहले I have got some questions for you, let me just discuss those questions। हाँ जी, चलो let's go for the questions round now, let's go for the MCQ round now। चलो, this is the first question in front of you, quickly tell me the answer। read करेंगे question को फटाफट and quickly tell me the answer। So a female patient complains of chest pain, a female patient complains of chest pain while waking up in the morning, pain is more in the winter, so pain किस में बढ़ गया है, winters में बढ़ गया है। which of the following best describes the patient, yes, which of the following best describes the patient,
So these are your FMGE PYQs only. It is B. This is acetylcholine induced coronary vasoconstriction. Acetylcholine induced coronary vasoconstriction. So what happens when see, it's very simple to understand. जब आप उठ रहे हो सुबह, ठीक है, you're waking up in the morning. So what is going to happen? ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, पेन इज मोर इन द विंटर मंथ्स. सो देखो, one thing which we have to understand कि if somehow acetylcholine is increased, understand this, if somehow acetylcholine is increased, that is responsible for causing the vasoconstriction. That's absolutely true. How acetylcholine can increase? If we break the acetylcholine esterase enzyme. So if we break the acetylcholine esterase enzyme, your acetylcholine levels are going to increase, and since your acetylcholine levels are going to increase, that causes coronary vasoconstriction. So believe me, this is really important. It causes coronary vasoconstriction. Okay. Now why? So we have discussed now, when we were discussing myasthenia, I told you that we will give what? We will give ice pack. So ice pack is going to break acetylcholine esterase, and if the acetylcholine esterase is broken down, this leads to what? This leads to this leads to increase in acetylcholine, and that causes increase in vasoconstriction. So acetylcholine induced coronary vasoconstriction. Now this is extremely important. This is, ठीक है, ये बहुत ही important है. और आप लोगों का एक होमवर्क है, ठीक है, this you will tell me. Yes, this is your homework. Quickly you will tell me what is basalt Zerisk reflex. ठीक है, what is basalt Zerisk reflex? I know Dr. Shriteja sir has already taken your physiology, and then I want you to answer this question. Coming on to this, patient presents with, so this is question number 2. So patient presents with contralateral face, arm and leg weakness. NCCT shows intracranial hemorrhage. What is the location of this bleed? So your leg, arm, contralateral face. So for example, this side is gone, so contralateral face is gone, contralateral arm is gone. Quickly tell me. Yes, contralateral arms is gone. ठीक है, contralateral face is gone, contralateral arm is gone, and contralateral legs are also gone. This is the basal ganglia issue. ठीक है, this problem is where? This is in the basal ganglia. Now why in the basal ganglia? Because contralateral side है, ठीक है, contralateral side है. So which tract? Corticospinal tract, passing from basal ganglia. ठीक है, basal ganglia itself. ठीक है, so basically it passes from the internal capsule, but I think some recall error or something. So that's why. Chal. Coming on to this one. Post-operative patients develop sudden severe calf pain. Post-op, severe calf pain. Post-op. क्या रहता है post-op में? DVT, deep vein thrombosis, severe calf pain. Yes, DVT, diagnosis. What is going to be the best investigations? Best investigation is duplex USG. 70-year-old man presents with low backache, ठीक है, lower backache and progressive pallor. So progressive pallor भी है, lower backache भी है, ठीक है. So remember, lower backache is there, that means bone is involved. Progressive pallor is there, that means anemia is going to be there. So KFT is also deranged. So KFT is deranged, that means renal abnormality can also be seen. LFT is normal level of albumin, but gamma globulins, remember, gamma globulins are disproportionately increased. X-ray shows multiple lytic lesion. Hanji, cell of origin of the diagnosis. Hanji, cell of origin. Cell of origin is B, plasma cell, because my students have read it from me that there is a criteria which is called as CRAB criteria, and the gamma globulins are also increased. It's multiple myeloma, so it's a plasma cell myeloma. Chalo. Which of the following is correct about Wolff-Parkinson-White syndrome? Yes, Wolff-Parkinson-White syndrome. So what is Wolff-Parkinson-White syndrome? B, broad QRS interval, that broad QRS बच्चे. So you have got, देखो ध्यान से समझो, Wolff-Parkinson-White क्या होता है? There is a bundle which is abnormally connecting the atria through the ventricles. ठीक है, abnormally which is connecting the AV node to the ventricles, abnormal connection. So although, ठीक है, so what is going to happen? The ventricles are going to get
सो अगर आप करंट वेंट्रिकल्स में जाने की बात करो तो पहले क्या होता था, पहले हमारे पास में ऐसे जाता था करंट एवी नोड से सीधा बंडल ऑफ एस एंड परकिंजी से इस तरीके से जाया करता था, बट नाउ इट इज नॉट गोइंग, इट इज गोइंग लाइक फ्रॉम अनदर पाथवे इन द बंडल ऑफ केंट. So ventricles will take more time to depolarize. ठीक है, ventricles will take more time to depolarize, and still, and since they are taking more time to depolarize, there is a broad QRS complex. Very good. Coming on to this elderly patient. हाँ जी बच्चे, elderly patient coming to you with focal seizures. Focal seizures. CT shows multiple ring enhancing granulomas. हाँ जी, multiple ring enhancing granulomas. Multiple ring enhancing granulomas is suggestive of, beta, you are suspecting neurocysticercosis. Okay, neurocysticercosis you are suspecting, and in that case they are just wanting to ask you कि क्या करोगे. So anti helminthic treatment is something that we are supposed to start. No steroids. बच्चे क्या करोगे steroids देके. देखो कभी कभी FMG के questions जो होते हैं ना वो बहुत simple होते हैं, बच्चे अपना extra दिमाग use करते हैं. In fact, one question which I did in my NEET PG wrong was, उन्होंने पूछा था, pediatrics का question ही था वो, कि what will be the treatment of your febrile seizures in emergency. तो आई थॉट यार दे आर आस्किंग फॉर इमरजेंसी, तो मैंने देखा कि उसमें एक ही ड्रग थी जिसका नाम आईवी दे रखा था, मतलब इंट्रावीनस, तो मुझे लगा इफ इट्स एन इमरजेंसी आई शुड गिव आईवी ड्रग ना, सो आई टेक दैट. बट बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि यार इट वाज वेरी सिंपल, दे आस्क्ड जस्ट द यू नो फेब्राइल सीजर, आई वुड हैव स्ट्रेट अवे गॉन फॉर द वॉरियर रेक्टल डायजेपम. तो ऐसा हो जाता है. ठीक है, ओके, सो दे आर आस्किंग नॉट टू बी गिवन, तो नॉट टू बी गिवन इमीडिएटली. देखो स्टेरॉइड्स हैव टू बी गिवन इमीडिएटली, anti-edema treatment has to be given immediately, seizure control has to be done immediately, but anti-helminthic immediately देके फायदा नहीं है. Coming on to next question, which of the following test is used for short-term diabetic control? इसमें कुछ नहीं करना, इसमें आपको सिर्फ लर्न करना कि short-term diabetic control के लिए we go for serum fructosamine. ठीक है, serum fructosamine. ठीक है, वेरी सिंपल थिंग्स, नथिंग टू वरी अबाउट. सीरम फ्रक्टोसामिन, बस इतनी एक चीज है वो आप लोगों को याद रखनी है. ठीक है, गुड. कमिंग ऑन टू पेशेंट हैज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स ब्रॉट टू द इमरजेंसी विद ब्रेडिकार्डिया. सो हार्ट रेट इज डिक्रीज्ड, ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज्ड, GCS इज लेस देन 8. ठीक है, तो ये कुशिंग्स ट्रायड भी बन गया. और आपको एक चीज जो पता होनी चाहिए वो ये भी है कि इफ द GCS is less than 8, then we have to give a ET tube. So secure airway is the answer. Securing airway is the answer. Coming on to this question now, quickly tell me. So the dose of altiplase is 0.9 mg per kg. तो ऐसा क्वेश्चन मैंने जान करके डाला था just in order to tell you that these type of questions have also been asked in your FMGE. So the answer roughly becomes 8. बट डोंट वरी, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते, और अगर एक आध क्वेश्चन ऐसा पूछ भी रहे हैं सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर मेंट टू बी, छोड़ दो. ठीक है, आर मेंट टू बी फॉरगिवन, फॉरगॉटन. ठीक है, आगे देखो, अब ये भी पूछा गया था. ठीक है, कि कितना अमाउंट जो है वो देना होता है. सो अमाउंट ऑफ ग्लूकोज यूज्ड फॉर टेस्टिंग व्हाइल डायग्नोसिंग डायबिटीज मेलाइटिस. ठीक है, तो कितना होता है, दैट्स अप्रोक्सीमेटली 75 ग्राम. ठीक है, 75 ग्राम. Okay, 75 gram. Coming on to this now. Yes, quickly tell me. Answer. 30-year-old man. 30-year-old man presents with repeated myoclonic jerks and dementia. Which is the most probable etiology? Okay. So 30-year-old man, repeated myoclonic jerks and dementia. Which is the most probable etiology? So it's the Creutzfeldt-Jakob disease. So this is something which you can remember from here only. It's the Creutzfeldt-Jakob disease. Okay, it's a prion disease. So if you are suspecting a myoclonic jerk, ठीक है, with dementia, so always think of Creutzfeldt-Jakob disease. Okay, always think for Creutzfeldt-Jakob disease. Beta vascular dementia they'll not give like this. Vascular dementia के अंदर में they will give some history of stroke or something like that. ठीक है, Huntington's chorea is not like this. ठीक है, so Creutzfeldt-Jakob disease. ठीक है, A smoker had developed blood tinged sputum during cough. ये अभी हम लोग रेस्पिरेटरी में डिस्कस करेंगे. ठीक है, ब्लड टिंज्ड स्पूटम है. हाँ जी, तो ब्लड टिंज्ड स्पूटम है, उसके बाद में चेस्ट एक्सरे इज नॉर्मल. नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करोगे? सो विथ अ ब्लड टिंज्ड स्पूटम, सिटी स्कैन ऑफ चेस्ट. ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीजर, इफ चेस्ट एक्सरे इज नॉर्मल वी हैव टू गो फॉर द CT स्कैन. ठीक है, सो ऐसे ही करते हैं हम लोग. पहले एक्सरे पे, पहले इमेजिंग वाले टेस्ट
करो. Then we go on to the like bronchoscopy and stuff, and then we can go to sputum test. ठीक है. चलो next HIV. हाँ जी, जल्दी जल्दी फटाफट बताओ. HIV patient with CD4 count less than 100 and sputum shows acid fast organism. So acid fast organism आते ही Mycobacterium avium. Coming on to this, which is correct about cryptic TB? What is cryptic TB? Hidden TB. Cryptic TB, hidden TB. Cryptic TB और hidden TB. Just remember like that only. Hidden TB मतलब क्या होता है? Cryptic TB, hidden TB, also called as miliary TB. B. Negative skin tuberculin test plus negative chest X-ray. Negative chest X-ray. हाँ जी. Okay. The patient is showing these hand movements. Which of the following conditions would this be seen? हाँ जी, बताओ. अगर पेशेंट को ये दिख रहा है तो ये कौन सी कंडीशन में दिखेगा? जल्दी बताइए. This is not anxiety neurosis. This is not thyrotoxicosis. Very good. Hemiballismus. चलो बुरे बच्चे. This is not hemiballismus. This is seen in hypercarbia. This is seen in hypercarbia. इस तरीके की flinching movement of the hand. It is in. This is hemiballismus. चलो. Coming on to what is the most common cause of death in diabetes? Yes, what is the most common cause of death in diabetic ketoacidosis? B. गलत बता रहे हो बच्चे. Dehydration is the most common cause of death in diabetic ketoacidosis. So we used to remember like this: death, diabetic ketoacidosis. ठीक है, death, diabetic ketoacidosis is D, dehydration. ठीक है, so please remember this. This is the most common cause. ठीक है, this is the most common cause. Investigation of choice for a patient who has dysphagia more for solids. So dysphagia more for solids suggestive of a tumor. Okay, and cachexia. Cachexia is of course weight loss. So weight loss is something that is of course यहाँ से तो पता ही लग रहा है कि ये ट्यूमर ही है. ठीक है, तो क्या करोगे? What will be the investigation? This is more of a surgery question. हाँ जी, what will you do? UGIE, upper gastrointestinal endoscopy. Good beta. Yes, coming on to this, ये movement है. Scissoring gait occurs because of increased firing of what? A 37-year-old woman presented with recurrent episodes of pain and pressure sensation behind the left eye. So the female is having pain, the female is having pressure sensation behind the left eye. The orbit pain was associated with intermittent proptosis also. Okay, so intermittent proptosis was also something which was seen. The symptoms and signs were increased on exercise. So on exercise it was increased, and on Valsalva also. So Valsalva means if you were increasing the intrathoracic pressure, okay, so intrathoracic pressure, if it is getting increased, then we are getting this. And please remember that it is increasing in exercise. So whenever the cardiac output is increased, this is happening. So एक बात तो पक्की है that it has to have something related to blood. ठीक है, related to blood. So related to blood, that means orbital varices. So in a patient with electrical burns, so now if a patient is suffering from electrical burns and vitals are stable, yes, red color urine is observed. Red color urine is observed. What is the most likely finding? क्या मिलेगा आपको इसमें? Increased CPK levels, creatinine phosphokinase level will be increased. Yes beta, yes, good, because the kidneys are going to get affected and very much evident with the red colored urine. So there will be increased CPK levels which will be seen. Okay, so this is the end of discussion of your questions, and now let us quickly finish it up with our respiratory system also. So let's try and finish it up our respiratory system as well. Chalo, obstructive versus restrictive disease. Okay, so FEV1 by FVC ratio. FEV1 by FVC ratio. It is going to be normal. चलो बताओ नॉर्मल किस में होती है एंड डिक्रीज्ड किस में होगी? नॉर्मल किस में होता है एंड डिक्रीज किस में होगा? ऑफ कोर्स इट्स 0.7, बट इफ इट इज डिक्रीज्ड, if it is an obstructive disease, so fraction of ejection volume in 1 second is decreased. Okay, so if it is low, then only it is obstructive, but if it is normal, so either the patient will be normal or it can be in restrictive. ठीक है, decreased in नहीं बेटा, डिक्रीज्ड इन रिस्ट्रिक्टिव नहीं होता है बच्चे. रिस्ट्रिक्टिव में इट इज गोइंग टू बी नॉर्मल. यस, ओके. फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी FVC is going to be less than 80, that I can understand, but ratio is going to be decreased in case of obstructive. That has to be decreased in obstructive. What are the different causes?
So please remember, if it is an obstructive cause, the two diagnoses can be asthma and COPD. But COPD is something that can be reversed. Sorry, that cannot be reversed. Okay. So remember, there is, if you give bronchodilator, okay, if you give bronchodilator to the patient, हाँ बच्चे मुझे confirm है. So if you give bronchodilators, asthma can be reversed, but COPD cannot be reversed. Understand? They cannot be reversed. ठीक है? So you give SABA, है ना? You give SABA in asthma, but you don't give SABA in COPD because this is not going to. So bronchodilators can improve. So bronchodilator reversibility is seen in asthma, whereas it is not seen in case of COPD. Okay, it is not seen in COPD. Whereas now coming on to restrictive disease. So restrictive is something that is restricting the outflow. Okay, so outflow is getting restricted. Okay, outflow is getting restricted. So if the outflow is getting restricted, beta, so two things which we have to understand: either there is some extrinsic restriction, or there can be some intrinsic restriction. So if there is an extrinsic restriction, so it can be because of fibrosis, it can be because of interstitial lung disease, it can be because of occupational lung disease. But extrinsic restriction means what? That can be because of kyphoscoliosis. That means your vertebrae is something, kyphoscoliosis is something that is going to, or your neuromuscular disorders which are not allowing to the diaphragm and the other muscles to expand properly. Okay, expand properly. Good beta. Coming on to this question now, acute shortness of breath बहुत इंपॉर्टेंट है. acute shortness of breath है, hematoptysis है, chest pain है, hypotension है, history of female on OC pills है, diagnosis बताएंगे. acute shortness of breath, first of all this is an acute episode. hematoptysis हो रहा है, chest pain हो रहा है. chest pain क्यों होता है? Because if less amount of blood supply is there, ठीक है, so of course there will be less oxygen, increase amount of lactic acid, and that is responsible for causing chest pain. Okay, and there is hypotension also, the BP is also falling. Okay, BP is also falling, and हिस्ट्री ऑफ फीमेल ऑन ओसीपीज. बेटा एक चीज है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है, दैट इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोसिस. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? थ्रोम्बोसिस. एंड ये इसीलिए मैंने आपको दिया है दैट दिस थ्रोम्बस कैन डिसलॉज टू फॉर्म एन एम्बोलस, एंड द डायग्नोसिस इज गोइंग टू बी पल्मोनरी एम्बोलिज्म. Pulmonary embolism, and that's why less amount of blood is reaching to the chest muscles and increase in lactic acid, and chest pain is going to be there. Okay, ठीक है, pulmonary edema नहीं बेटा, pulmonary embolism. Now next important part is pulmonary embolism क्या क्या कर सकता है. So देखो pulmonary embolism के अंदर में क्या चीज हो सकती है? We have to check about the blood, we have to check about the blood pressure, and we have to check about the function of the right ventricle. ठीक है, function of right ventricle, as well as you have to check about the blood pressure. ठीक है, blood pressure देखते हैं, right ventricle का हम लोग function देखते हैं. ठीक है, just quickly give 1 second and I'll make this table for you. So देखो blood pressure, यदि ध्यान से समझना, अगर blood pressure normal है, right ventricle भी normal है, then this is nothing but a mild, this is a mild pulmonary embolism. वहीं पर अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है बेटा वो नॉर्मल है, बट आरवी जो है वो डिसफंक्शन है, राइट वेंट्रिकल जो है वो डिसफंक्शन है, सो दिस इज नॉट माइल्ड, दिस इज समथिंग बच्चे, दिस इज सबमैसिव. ओके, सबमैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है. और फिर हम लोग बात करते हैं कि अगर राइट वेंट्रिकल डिसफंक्शन है और बीपी इतना डिक्रीज हो गया है कि शॉक जैसी कंडीशंस आ गए हैं, then we call it as massive pulmonary embolism. Now why it is important to classify them? It is because we have to start the therapies now. So in mild we give nothing but AC, that is anticoagulant, but in submassive we give what? We go with the anticoagulation, but we have to do thrombolysis also. Why thrombolysis? Because it is responsible for causing right ventricular dysfunction. Okay, dysfunction. But here यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे आपको स्टेबलाइज करना है पेशेंट को, बिकॉज उसके वाइटल खराब हो रहे हैं. गिव एंटीकोएगुलेंट्स, डू thrombolysis, but one more thing is
please do surgical correction of embolus also. Surgical correction of embolus, because if you not do this, the patient का हालत नहीं सुधरने वाला. So this is something, this is how you are supposed to remember all these things. हाँ, ये एक थोड़ी इम्पोर्टेंट एक्सरे है. ये एक इम्पोर्टेंट एक्सरे से ज्यादा आई शुड से इम्पोर्टेंट रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है. दिस इज नॉट एक्सरे एक्चुअली, एक सीटी चेस्ट है. तो सीटी चेस्ट में आपको देखना है कि राइट साइड के ऊपर में वी कैन सी द डाई, बट ऑन लेफ्ट साइड देयर इज नो डाई, नो डाई. एंड दिस इज द पल्मोनरी वेसल एंड देयर इज अ फिलिंग डिफेक्ट, कि यहाँ पर ब्लड जा ही नहीं रहा है, यानी कि इसके आगे एम्बुलस है. सो इफ, प्लीज अंडरस्टैंड, so if you have filling defect in pulmonary artery, please understand, filling defect in pulmonary artery is suggestive of what? Is suggestive of pulmonary embolism. It's suggestive of what beta? Pulmonary embolism. So ये सारी चीजें जो है आप लोगों को पता होना चाहिए. Coming on to the pleural effusion, and there is a very important criteria for pleural effusion that is called as Light's criteria. ठीक है, Light's criteria. So what is the approach to pleural effusion? What is the approach to pleural effusion? So please understand, we use a criteria that is called as Light's criteria. ठीक है, we use a criteria which is called as which criteria? Light's criteria. So Light's criteria is important in order to decide whether this infusion is transudative infusion or whether this effusion is an exudative effusion. Whether this effusion is a transudative effusion or is an exudative. Transudative का क्या मतलब होता है? मतलब there will be no proteins. There will be no proteins. तो no proteins. No proteins कब कब होता है? No proteins हो जैसे nephrotic syndrome है ना. नेफ्रोटिक सिंड्रोम में सारे के सारे जो है प्रोटीन बाहर चले जाते हैं. जैसे कि लिवर खराब है, हेपेटिक हाइड्रोथोरैक्स. हेपेटिक हाइड्रोथोरैक्स, तो लिवर खराब है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स बनेगा ही कुछ नहीं, तो हेपेटिक हाइड्रोथोरैक्स हो गया. ठीक है, अदरवाइज कार्डियक ऑल्सो. ठीक है, कार्डियक फेलियर, इसमें भी नहीं मिलेगा आपको कुछ भी. ठीक है, इसमें भी आप लोगों को कोई भी प्रोटीन नहीं मिलेगा. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट्रांसयूरेटिव हो जाएगा, ट्रांसयूरेटिव हो जाएगा. ठीक है, सो ट्रांसयूरेटिव में हम लोग को एक चीज और क्या याद रखनी है? नो प्रोटीन. सो प्रोटीन विल बी लेस देन 0.5, लेस देन 0.5, whereas exudative में it is more than 0.5. इसी तरीके से LDH जो होता है लेस देन 0.6 is transudative, more than 0.6 is going to be exudative. ठीक है, then it's going to be what? That's going to be exudative. तो अभी हम लोग को क्या करना है? एक्सुडेटिव के अंदर में कुछ कुछ हिंट्स मिलते हैं, तो वो हिंट्स जो है वो हम लोगों को पहचानने हैं. तो वो मैं आपको हिंट्स दूंगा, आप उसको पहचानेंगे. ठीक है, कुछ कुछ हिंट्स हैं, लेट्स अंडरस्टैंड एक एक करके. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ दे गिव यू lymphocytes, understand, if they give you the lymphocyte count is high and the ADA level is more than 40, the interferon gamma is more than 140. Now what will be your diagnosis? बताओ क्या diagnosis होगा आपका? If there is low glucose pleural effusion, then what can be your diagnosis? हाँ जी, तब क्या diagnosis होगा? High amylase है तो क्या diagnosis होगा? ठीक है, हाई लिपिड है तो क्या डायग्नोसिस होगा? सबने बहुत कुछ लिखा है, करेक्ट आंसर पे भी पहुंचो. एडीए मोर देन 40 इंटरफेरन, दिस इज ट्यूबरक्यूलोसिस. दिस इज व्हाट? दिस इज ट्यूबरक्यूलोसिस. लो ग्लूकोज है तो वो किसमें हमें लो ग्लूकोज मिलता है? एम्पाइमा. ठीक है, एम्पाइमा हैज लो ग्लूकोज. मेलिग्नेंसी हैज लो ग्लूकोज. ठीक है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हैज लो ग्लूकोज. हाई अमाइलेज, ये तो सबको पता होता है, क्या? पैनक्रियाटाइटिस. ठीक है, पैनक्रियाटाइटिस. देन व्हाट एल्स? व्हाट एल्स इज गोइंग टू बी देयर? Esophageal rupture can be there. Yes. Next is high lipid. So high lipid किसमें होता है? Chylothorax. ठीक है, it is seen in what? It is seen in chylothorax. ठीक है, so ये सारी चीजें जो है आप लोगों को पता होनी चाहिए. ठीक है, coming on to empyema. क्या होता है empyema? It is not emphysema, it is empyema. Or is it emphysema? No, it is empyema. क्योंकि empyema is the pus ना, so pus has got bacteria and bacteria are going to eat all the glucose, so glucose is going to be low. Okay, glucose is going to be low. ठीक है, चलो निमोनिया. नाउ निमोनिया का एक ट्रायड है. ठीक है, निमोनिया इज हैविंग अ ट्रायड. बताओ, फीवर, हाँ जी, फीवर, कफ एंड वन मोर इज SOB. What is SOB?
एसओबी क्या है? अरे आऊंगा आऊंगा, उस पे भी आऊंगा, तुम्हारी क्लब 65 पे भी। डिस्निया और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वेरी गुड। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और डिस्निया। चलो, अब आपको पता है कौन कौन से निमोनिया होते हैं? कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, ठीक है। देन और कौन सा होता है? नोजोकोमियल निमोनिया, ठीक है, नोजोकोमल निमोनिया एंड कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, दैट मीन्स outside the outside the hospital it is happening, okay. So community acquired pneumonia can be typical and atypical. Typical means टिपिकल फीचर्स हैं, कफ, डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। एटिपिकल मतलब आंख, नाक, कान, गला, टांग वांग कुछ कुछ हो रहा है, ठीक है। सो फटाफट बताओ, हु इज द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म? हाँ जी, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इन टिपिकल इज, यस, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इन टिपिकल इज, एंड एटिपिकल में भी बताना है आपको। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, वेरी गुड बेटा, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, तभी तो इसका नाम निमोनी पड़ा था, ठीक है। एंड एटिपिकल, वेरी गुड डॉक्टर सयाद, सैयद सब्जान, शबजन, सॉरी यार, ठीक है, वेरी गुड। एटिपिकल इज माइकोप्लाज्मा, वेरी गुड। देन यू हैव गॉट नोजोकोमियल निमोनिया। सो नोजोकोमियल में दो होते हैं, एचएपी एंड वीएपी। सो व्हाट इज एचएपी? हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, that is going to occur after 48 hours of hospitalization. And what is VAP? Ventilator associated pneumonia, that is going to occur 48 hours to 72 hours के बीच में। So more time is being taken, तो अल्फाबेटिकली पहले H आता है 2 दिन में, V आता है 3 दिन में, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, इसमें भी बताओ, हॉस्पिटल में क्या लगता है कौन होगा मोस्ट कॉमन कल्प्रिट? यस, मोस्ट कॉमन कॉज इन और वीएपी में भी अर्ली वीएपी एंड लेट वीएपी। हॉस्पिटल में कौन होगा बताइए जल्दी से, हॉस्पिटल में मोस्ट कॉमन कौन होगा? स्टाफ होता है, बट studies have shown that gram negative bacilli are in fact more commonly seen as compared to staph. And ventilator associated pneumonia early of course is going to be streptococcus pneumoniae, but late is not streptococcus pneumoniae, it is the pseudomonas। pseudomonas देखो नाम से ही पता लग रहा है, सूडो मतलब झूठ बोलने वाला, तो जो झूठ बोलेगा वो लेट आएगा, है ना, जो लेट आता है वो झूठ बोलता है कि सर मैं लेट इसलिए हो गया क्योंकि। so pseudo is associated with the late ventilator associated pneumonia, ठीक है, late ventilator associated pneumonia। So let me just quickly tell you about the criteria। हाँ जी, कौन सा क्राइटेरिया है इसका, जल्दी जल्दी बताओ, वो तो आप सबको पता है। हाँ जी, कौन सा क्राइटेरिया है इसका? वो तो बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बताते हैं मुझे। CURB 65, कब 65? चलो मैं नीचे से लिखता हूँ, एज मोर देन इक्वल टू 65, ठीक है, ब्लड प्रेशर लेस देन 90/60, ठीक है, व्हाट इज आर? आर इज रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 30। तो देखो, इसको याद रखो, ये आर थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, सो आर बिकॉज वो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, सो इट्स 30, 30 के बाद 60 होता है, 60 के बाद 90 होता है। तो इस तरीके से आपको वैल्यूज भी याद हो जाएंगी। यू क्या है? यूरिया। सो यूरिया यू हैव टू रिमेम्बर मोर देन 7 मिली मोल पर लीटर, ठीक है, ओके, फाइन। एंड सी से कंफ्यूजन, ओके। तो अब इसमें हम लोगों को पता क्या होना चाहिए कि इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3 to 5। सो इफ इट इज 3 to 5, 3 letter ICU। इफ इट इज 2, so 2 TWO2, so okay, 2 hospital, ठीक है, whereas 0 and 1 both are going to be staying at home, ठीक है, 0 and 1 are going to be staying at home। so important चीज हम लोगों को पता ये होनी चाहिए कि if score is 1, ये भी एक recent modification है, तो I will write it in this box कि if, ये important है एक, कि if the age of the patient is more than 65 and score is equal to 1, ठीक है, then also we have to consider them into hospital, ओके। सो ये एक चीज आपको पता करनी है, याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो बेटा, ये बताओ जल्दी से, व्हाट इज दिस? हाँ जी, व्हाट इज दिस? ओके, आई गिव यू द हिस्ट्री एंड आई वांट यू टू आंसर। I'll give you the history, but I want you to answer this. So, if history of fever with red rusty sputum,
विद दिस, व्हाट इज दिस? ये न्यूमोथोरैक्स नहीं है, ये क्या बातें करते हो बेटा? मैं निमोनिया पढ़ा रहा हूँ ना, कंसोलिडेशन है, लोबार निमोनिया। सो निमोनिया को कैसे देखते हैं बेटा? इफ यू हैव कंसोलिडेशन, देखो पूरा का पूरा एक्सरे आपका ब्लैक होना चाहिए था क्योंकि सब में एयर है, लेकिन ये वाइट है, इसका मतलब यहाँ पे इन्फेक्शन है जिसको हम लोग निमोनिया बोलते हैं। सो इट्स फीवर प्लस रेड रस्टी स्पुटम प्लस लोबार निमोनिया। तो वो क्या होता है? व्हाट इज द आंसर? आंसर इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। मोस्ट कॉमन चीज बताओ बेटा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। सो व्हाट विल बी द ड्रग? क्या दोगे? व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट? यस, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी? देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले आंसर देगा। हाँ जी, ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। एजिथ्रोमाइसिन। बेटा बीटा लेक्टम्स, ठीक है। वी गिव व्हाट? वी गिव बीटा लेक्टम्स। फिर वो बीटा लेक्टम्स में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। बीटा लेक्टम्स इज समथिंग व्हिच वी गिव, नॉट सेफ्ट्राइक्सोन। चलो, अब आ गई तुम्हारी। तो शीला इतनी जवान है कि करंट मारती है, ठीक है। सो सी से करंट होता है, बी से बल्जिंग फिशर साइन होता है, बल्जिंग फिशर। So if there is bulging fissure sign and current jelly, तब you can remember Klebsiella, ठीक है। So Klebsiella is going to be, कब लिखना है हमने Klebsiella? Klebsiella if there is bulging fissure sign, there is a red current jelly sputum and there is fever, then answer is Klebsiella. And the treatment of Klebsiella is going to be very simple. The treatment is going to be A and B because C से हमारा current jelly sputum था। तो A क्या है? अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। B क्या है? बीटा लैक्टम, ठीक है। बी से बीटा लैक्टम, सी से तो हमारी करंट जेली स्पूटम था ही, ठीक है। समझ में आ गया? गुड। चलो, अब कुछ एक चीजें तुमसे पूछ लेता हूँ, ठीक है। कुछ एक चीजें तुमसे पूछ लेता हूँ। सो लेट मी जस्ट आस्क यू, अब आएंगे एटिपिकल निमोनियाज के ऊपर में, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एटिपिकल निमोनिया, और मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा, आप मुझे उसका आंसर बताओगे, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एटिपिकल निमोनिया, ठीक है। मैं आपको हिस्ट्री ऑफ क्रूज शिप ट्रैवलर, हिस्ट्री ऑफ क्रूज शिप ट्रैवलर प्लस डायरिया प्लस निमोनिया। अब बताओ कौन है ये? बताओ। हाँ, दिस इज वॉकिंग निमोनिया। हाँ जी, एजेंट बताइए। दिस इज वॉकिंग निमोनिया, एजेंट बताइए। लीजियोनेला, वेरी गुड। तो सीधा याद करेंगे लीजियोनेला। सो लीजियोनेला नल्ला है, काम धंधा कुछ है नहीं, सारा दिन फिरता रहता है, सारा दिन फिरता रहता है, फिरता रहता है मतलब वॉकिंग निमोनिया, लीजियोनेला। सो व्हाट विल बी द, यस व्हाट विल बी द, क्या करोगे फिर? ये फिरता रहता है तो फिरता, सो FIRTA, है ना। सो वो FQ से फ्लोरोक्विनोलॉन्स एंड AZT से एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को? दिस वाज द फर्स्ट केस। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। फीवर है, फीवर के साथ साथ में उसको ड्राई कफ है, ड्राई कफ के साथ साथ में उसको हीमोलिटिक अनीमिया है। अब बताओ जल्दी से, बोलो अब, जल्दी जल्दी। ड्राई कफ एंड हीमोलिटिक अनीमिया, अब बताओ। वेरी गुड निरंजन दत्ता, दिस इज माइकोप्लाज्मा, दिस इज माइकोप्लाज्मा, 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 ठीक है। माइकोप्लाज्मा। सो फीवर प्लस ड्राई कफ प्लस हीमोलिटिक अनीमिया। सो हीमोलिटिक अनीमिया इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि ये M वर्ड आ रहा है, ये A वर्ड आ रहा है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा में, ठीक है। सो ये माइकोप्लाज्मा, सो प्लाज्मा, प्लाज्मा कब निकलेगा बाहर? प्लाज्मा तब निकलेगा जब ब्लड वेसल रप्चर करेगी। सो ब्लड वेसल रप्चर करती है तो प्लाज्मा निकलता है। सो माइकोप्लाज्मा इज रप्चर, रप्चर मीन्स हीमोलिटिक अनीमिया। सो व्हाट यू विल डू फॉर द ट्रीटमेंट, सेम हो जाता है, ठीक है। सो सेम फ्लोरोक्विनोलॉन प्लस एजिथ्रोमाइसिन, यही आपको यहाँ पर भी देना होता है एज अ ट्रीटमेंट। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अगला क्या है? ट्रक ड्राइवर। ये तो इजी है। ट्रक ड्राइवर, फीवर, GMS पॉजिटिव, ये तो मैंने कल भी पूछा था आपसे, ये आज ही पूछा है शायद। पॉजिटिव ब्रोंको एल्वेलर लेवाज, क्लामाइडोफिला नहीं बेटा,
सिंपल न्यूमोसिस्टिस जेरोवेकाए। और मैंने बताया भी था आप लोगों को कि न्यूमोसिस्टिस जेरोवेकाए दो चीजें देंगे, जीमणे के लिए देंगे। जीमणा, जीमणा मतलब जीमसा गमोरी मिथानामाइन सिल्वर स्टेन, ठीक है। दो चीजें देंगे मतलब को, दीदी और जीजू साथ में आएंगे, को ट्राइमोक्साजोल, ठीक है। और प्यार की पुंगी बजा के पिंग पोंग बॉल अपीयरेंस, पिंग पोंग बॉल अपीयरेंस, ये सारा मैंने बताया था। चलो नेक्स्ट बताओ। If there is a travel history, there is fever, shortness of breath and anosmia. हाँ जी, इसका क्या है? वेरी गुड, CD4 काउंट लेस देन 200, गुड। तो एनोस्मिया है बेटा, ये पुराना क्वेश्चन है थोड़ा सा, बट याद कर लो, कोविड के टाइम में आया था, सार्स कोव 2। This is a lung abscess. Yes, let me just write down the history also for this. This is a lung abscess that has been shown. So what is my question in this? So lung abscess, हाँ। तो इसमें आपका हिस्ट्री क्या है? So for example, they'll give you a history like this: a alcoholic patient, ठीक है, alcoholic patient with purulent, foul smelling, alcoholic patient, purulent, foul smelling sputum, ठीक है। सो व्हाई अल्कोहलिक? बिकॉज अल्कोहलिक्स एस्पिरेट वेरी मच, ठीक है, एस्पिरेट करते हैं, तो वो एस्पिरेट करके फ्लोरा जो है वो लंग्स में चला जाएगा, वहां लंग एब्सेस कॉज करेगा। सो माय क्वेश्चन टू यू आफ्टर सीइंग दिस इज, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ लंग एब्सेस? ओके, आई विल गिव यू द एजेंट्स आल्सो। सो एजेंट्स आर एक्चुअली ओरल एनारोब्स, ठीक है, ओरल एनारोब, क्योंकि वो मुंह से ही जा रहा है ना फ्लोरा। हाँ, सो नाउ यू टेल मी व्हाट इज द ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट क्या होगा? क्लिंडामाइसिन, ओके, क्लिंडामाइसिन। सो डी एंड ए, इन्हीं दोनों वर्ड्स पे फोकस करो, यू विल गेट टू नो। सो डी से क्या है? डी से है डर्टी, ए से क्या है? एब्सेस, सो डर्टी एब्सेस, दिस इज हाउ यू कैन remember clindamycin, okay, clindamycin. So stable asthma, फटाफट tell me for the treatment, what is controller, what is reliever? First question is controller, second question is reliever. So controller medication is corticosteroid. Very good. Inhaled corticosteroid. Inhaled corticosteroid is something which we give as the controller medication. What about reliever? Again, we will give low dose inhaled corticosteroid, but we prefer formoterol. Okay, we prefer what? Formoterol. Okay. So why do we prefer formoterol? Because formoterol is going to target both. Target what? Target bronchodilation also. Bronchodilation also. Plus it is going to take care of inflammation as well. Okay, take care of inflammation also. So that's why we give formoterol. Whereas in controller medication, if I just tell you, so we give, in fact, salbutam, I mean, your SABA will also work. Okay, sorry. Extremely sorry. Inhaled corticosteroid also in controller. So my question, or sometimes examiner asks you, why don't we give SABA only in reliever? Because SABA is going to take care of bronchoconstriction. It has got bronchodilator property, but it does not have the anti-inflammatory property. Okay, it does not have the anti-inflammatory property. So this is something which we have to take care. Okay, coming on to this question now. So whatever you can see in this, whatever you can see in this is called as honeycombing. Okay, so can you see this is just like honeycombs? Huh? So this is called as honeycombing. Okay, so this is called as honeycombing. So first of all, on while watching the X-ray itself, you should be able to answer, okay, this is honeycombing, and honeycombing is seen in what? It is seen in your what? UIP or IPF. Okay, UIP or IPF. Okay, UIP or IPF. So what will be the clinical presentation in this? So honeycombing is the important thing. So बूढ़ा, ठीक है, I always teach students like this, बूढ़ा, ठीक है, बूढ़ा क्या करता है? मक्खी पकड़ने जाता है, सॉरी बूढ़ा शहद इकट्ठा करने जाता है, तो शहद इज हनी, हनी कुम्बिंग। बूढ़ा मीन्स एल्डरली, ओके, एल्डरली मेल, ठीक है, जाता है, पर हाथ में क्या होता है? एल्डरली मेल्स की आदत है स्मोकिंग की, ठीक है, स्मोकिंग की, दारू पीने की। दारू पीने के लिए कहाँ जाते हैं? क्लब में जाते हैं, क्लबिंग, ओके, क्लबिंग। यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया बेटा, यूआईपी मीन्स यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया। सो बूढ़ा मेल स्मोकिंग करता है, क्लब में जाता है, क्लबिंग, ठीक है। और बूढ़ा है तो उसके हाथ क्या करेंगे? हाथ कांपेंगे। हाथ क्या करेंगे? हाथ तो कांपेंगे, ठीक है। सो हाथ कांपेंगे, कांपेंगे मतलब क्रेप्स,
Okay, कांपेंगे is just like to remember creps. It's not the हाथ कांपना, but creps उसको दिखेगा. This is the way you can remember very easily. So please remember what you will see. Honeycombing, ठीक है, that is seen bilaterally. That is seen in the lower zone. Okay, lower zone of में आपको दिखता है, ठीक है. You will have bronchiectasis also. Significant traction bronchiectasis as well. ठीक है, traction bronchiectasis as well that you will be seeing. तो जस्ट इसको आपने याद रखना है. क्या? बी से बायलैटरल, बी से ब्रोंकिक्टेसिस एंड बी से बिलो. ठीक है, बी से बिलो यानी कि लोअर जोन इज गोइंग टू गेट involved. So this was a question which was asked in your FMGE. What is the treatment? So treatment, please remember, perfenidone. Perfenidone. ठीक है, perfenidone is the treatment. Okay, and nindetanib. 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 Perfenidone, nindetanib, and lung transplant. And what you can do is lung transplant. So remember this: perfenidone, nindetanib, and lung transplant. Lung transplant. Okay, coming on to the next part now. ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इनमें से एक क्वेश्चन आना, ये चार्ट आएगा, एंड देन कैंसर, आई मीन ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेस एंड कैंसर, both of them are equally important, very very important. So asbestosis, silicosis, and of course coal worker pneumoconiosis. Very important, all the three: asbestosis, silicosis, and coal worker pneumoconiosis. So asbestosis, you have to remember, in asbestosis what you're going to have, you will have pleural plaque, you will have pleural effusion, and asbestosis has a word base. So base is base means what? It is going to involve lower zone. So there is a lower zone fibrosis, okay, this is important. Okay, and now most important part: what is the most common and what is the most specific cancer associated? हाँ जी, चलो बताओ. Most common, most specific is, very good, most common is adenocarcinoma and most specific is mesothelioma. So remember, meso has got this s, so this is specific. Mesothelioma, this is specific, and most common is adenocarcinoma. Okay, adenocarcinoma is something which is most specific, I mean most common. Very good, very good. Now silicosis is silly. Okay, so it is not lower zone, it is upper zone fibrosis. Upper zone nodules are going to be there. Okay, and silicosis is most commonly seen with the TB. Okay, tuberculosis. So remember, PQRST, S and T come very close in alphabets. So just remember, it is associated with the TB. Okay, TB. And one more important thing which you have to understand: silicosis. Remember, so upper zone is involved. Okay, so this is the upper zone. Okay, upper zone involvement. Next is this. So what is this? Yes, what is this? This is bilateral hilar lymph node enlargement. Hilar lymph node enlargement with eggshell calcification. With eggshell calcification. This is most important. Very very important. Okay, bilateral hilar lymph node enlargement with eggshell calcification. Okay, this is very important. Very 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 important. Coming on to coal worker pneumoconiosis. Okay, so just remember, it is like if pneumoconiosis is associated with RA, then this is called as Kaplan syndrome. If it is associated with RA, it is called as what? It is called as Kaplan syndrome. Okay, it is called as which syndrome? It is called as Kaplan syndrome. Kaplan syndrome. Yes, stone mason history. Okay, stone mason history. So S and S is important: silicosis and stone mason. ठीक है, समझ में आ गया? Great. Coming on to the next part now. Okay, coming on to the next part. Okay, so what is this? This is progressive fibrosis. Can you see? Progressive massive fibrosis. Progressive massive fibrosis. There's a lot of fibrosis. So ideally it should be black because here is air, here it's air, but it is turning out to be white because it is progressive massive fibrosis. Progressive massive fibrosis. Good. Seen in silicosis.
ठीक है, silicosis. Coming on to OSA. So what is the triad of OSA? So you will have, yes, OSA में क्या मिलता है आपको? OSA में you will have apnea, ठीक है, breathlessness is going to be there, ठीक है, then obesity, hypercapnia. तो ये सारी हिस्ट्री जो है वो हमें दिखती है, ठीक है. सो रिमेंबर दिस इज एपनिया, ओबेसिटी, हाइपरकैप्निया. Okay, and if obstructive sleep apnea is associated with hypercapnia, we label it as what? We label it as obesity hypoventilation syndrome. Obesity hypoventilation syndrome. Okay, obesity hypoventilation syndrome. ठीक है, obesity hypoventilation syndrome. Coming on to the lung cancers now. So lung cancers, three type of lung cancers are there: adenocarcinoma, then squamous cell carcinoma, हाँ जी, adenocarcinoma, squamous cell carcinoma, and then you have got small cell cancer. Okay, small cell cancer of lung. So remember, adenocarcinoma, as the name suggests, it is adenocarcinoma. So adenocarcinoma is something that is to go to periphery, so it is going to go to the periphery locations. Okay, this is most common type. So even if they ask you in most common type in young, male, female, non-smoker, asbestosis, but remember, no smoking. Okay, smoking should not come here. स्मोकिंग नहीं आना चाहिए यहाँ पे. क्लबिंग, ओके, ठीक है, तो याद रखना, एडिनोकार्सिनोमा शुड नॉट हैव स्मोकिंग. क्लबिंग इज ओके, क्लबिंग इज गोइंग टू बी देयर. ओके, सो इट इज एसोसिएटेड विद माइग्रेटरी, याद रखो, इट इज एसोसिएटेड विद माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस और ट्रोशियस सिंड्रोम. माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एंड ट्रोशियस सिंड्रोम. Troche syndrome. Okay, migratory thrombophlebitis and Troche syndrome is going to be there. Okay, so just remember what is important. So it is in periphery. It is the most common type. Okay, most common type. It will have clubbing. It will not have smoking. Okay, so just remember this. Mnemonic is CAPS. Okay, mnemonic is CAPS. So what is CAPS? C for there will be clubbing. C for it is commonest. A for it is adenocarcinoma. P for it is in periphery. S for smoking should not be. Smoking should not be there. Okay, right. And one more important thing is that it is going to involve. Okay, so M caps becomes the mnemonic, or M caps or T caps, you can remember like that. Okay, or nothing, just caps also will work. As for skin manifestations, so skin has got vessels, and vessels and skin is together involved. So thrombophlebitis, migratory thrombophlebitis, that's the mnemonic. Squamous, so squamous can be written like this, squamous. Okay, squamous cell cancer. Okay, squamous. Okay, so squamous you can remember like this. So C for what? C for central. C for it is associated with cigarette smoking. C for it is associated with cavity formation. C for it is associated with calcium increase, hypercalcemia. Okay, like that you can remember. Small cell cancer, just remember LCH. Okay, these three are actually important. So what is LCH? So LCH for small cell cancer. Okay, rather leave it like ऐसे लिखो इसको. Okay, I'll teach you. Don't worry. So first of all, ये भी central है, ठीक है, ये भी central है. It is also going to have association with cigarette smoking, ठीक है. And remember, S for SVC obstruction is there in this. Okay, S for SVC obstruction is there in this. Then S for SIADH, syndrome of inappropriate ADH release, is going to be there. Okay, and then calcitonin is released. So because calcitonin is increased, so there is going to be hypocalcemia that is going to occur. So this is important and you have to understand. And one more thing is there is secretion of ACTH as well. ठीक है, ACTH का भी जो है ना इसमें secretion जो है वो होता है. So this is how you can remember. ठीक है, so S for SIADH, C for calcitonin, and ACTH. Okay, and of course SVC obstruction as well. So just remember, small
cell cancer, SM. So S तो ये आ ही गया, SVC obstruction, SIADH, SMALL. So A for ACTH. ठीक है, cell cancer is CC, so C for calcitonin. So this is how you can remember the mnemonic for small cell cancer. ठीक है, for small cell cancer. So this is the photograph of Trocheus syndrome जो मैं आपको बता रहा था, migratory thrombophlebitis, migratory thrombophlebitis. Coming on to Pancoast tumor. So Pancoast tumor, you have to understand that Pancoast tumor is the lung apex tumor. ठीक है, it is the tumor of the lung apex, and since it's the tumor of lung apex, we have to understand that it is because of involvement of C8, T1 and T2. Okay, and that's why it is going to show pain along the, okay, it is going to show pain along the ulnar distribution. Okay, pain along the ulnar distribution. Okay, pain along the ulnar distribution is going to be there. Okay, and remember, it has got a mnemonic called as protein meal of Horner syndrome. Okay, Horner syndrome has a mnemonic of protein meal that is going to have ptosis, meiosis, enophthalmos, anhydrosis. Should not be lack of thalamus, it is loss of ciliospinal reflex. Loss of ciliospinal reflex. So इसी तरीके से, now if it is a respiratory alkalosis, we have to understand that pH will increase and PCO2 will decrease. Okay, and if it is a metabolical acidosis and pH is decreasing, PCO2 is also going to decrease. And if it is a metabolical alkalosis, if pH is increasing, the PCO2 has to increase. Okay, and compensatory, yes, this is like this, you can remember. This is decrease in HCO3, because in metabolic conditions, the primary change, the primary defect is with the bicarbonate, whereas yes, so I should write like this कि PCO2, हाँ, तो PCO2 आप देखते हो, if it is a respiratory case, then, and if it is a metabolical you are expecting, then of course the primary defect is going to be in HCO3 negative. Okay, so in primary respiratory disorders, change is pH with respect to CO2 in and HCO3 negative in opposite direction. ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? So यहाँ पर देखो, ये PCO2 बढ़ रहा है तो HCO3 negative भी जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बाइकार्बोनेट्स जो है वो इंक्रीज होने लगते हैं. सो दिस इज एक्चुअली अ कॉम्पनसेटरी चेंज. ठीक है, दिस इज एक्चुअली अ कॉम्पनसेटरी चेंज, because if PCO2 will increase, there will be a lot of acidosis, so there is a compensatory increase in the HCO3 negative. So can you see, this is also increasing, this is also increasing, but pH is decreasing, so this is opposite, and opposite is always respiratory. ठीक है, similarly अगर मेरे को ये टेबल कंप्लीट करना हो, so this is how I have to write, and here the pH is going to be the PCO2 is going to be decreased. Okay, so this is how you have to understand that. ठीक है, ये चीजें जो है बच्चे आपको पता होनी चाहिए. And let me just tell you about the normal. So normal pH is 7.35 to 7.45. ठीक है, PaCO2 is approximately 35 to 40, and then PaO2, although this is not important, but 80 to 100 mm of Hg, and then you have got your HCO3 negative values approximately 22 to 26 milli equivalents. ठीक है, so this is how you are supposed to remember. Okay, इस तरीके से आपको ये only two things, bronchiectasis and fat embolism, and then we will be done. So bronchiectasis, please remember that there are different causes, so we have to understand the hint and then give the answer. Like for example, if there is a bilateral upper lobe bronchiectasis, bilateral upper lobe bronchiectasis, okay, or we can have a unilateral upper lobe bronchiectasis. So if it is a bilateral upper lobe bronchiectasis, answer is going to be cystic fibrosis. But if it is a unilateral upper lobe bronchiectasis, the answer is going to be tuberculosis. Okay, so TB, okay, TB is going to be there, right? So what else? Yes, what else can be there? So there can be middle lobe bronchiectasis also. So on the basis of which lobe is involved, so middle lobe can be there in case of non mycobacterial, okay, non tubercular mycobacteria. If it is involved non tubercular mycobacteria, they are going to involve what? They are going to involve middle lobe. And in fact, in the Curta Jenner syndrome also, okay, Curta Jenner syndrome also, it is going to have
this kind of bronchiectasis which is going to be. Lower lobe bronchiectasis is generally seen with the aspiration, because aspiration due to gravity it settles down in the lower lobe. Okay, aspiration like that. Okay, right? So this is something which you have to understand, remember. Okay, and bronchiectasis is important, so just don't forget this. Okay, so fat embolism, the last part. So the triad of symptoms, please don't forget, this is important. So one is going to be petechial rashes which are going to be there. Then there can be dyspnea, there can be tachypnea, that will be there is in the fat embolism. And then of course some neurological manifestations will also be seen. Some neurological manifestations will also be seen in case of fat embolism. Okay, yes, and of course there will be history of trauma to bones or trauma to long bones. ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए. देखो, हिस्ट्री ऑफ बेड रिडन पेशेंट, हाँ जी, हिस्ट्री ऑफ बेड रिडन पेशेंट अगर है तो फिर वो आपके पास में ज्यादातर पल्मोनरी एम्बोलिज्म के पास में जाता है. ठीक है, हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी है तो फिर आपके पास में वो एमनियोटिक एम्बोलिज्म के इसमें जाता है. ठीक है, समझ में आ रहा है? सो ये चीजें जो है आप लोगों को समझ में आनी चाहिए. ठीक है, सो दिस इज इट एंड हेयर आई विल एंड अप माय क्लास ऑफ मेडिसिन. आई जस्ट होप, ऑफ कोर्स बेड रिडन पेशेंट डीवीटी भी होगा, बिल्कुल सही बात है. So I'll end up my class